सर बोला ना. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हा अगोदर असं काच करतोय आता मी. करून ठेवतो म्हणजे कसं होतंय. ठीक आहे ठीक आहे चालतं. मी आता जवळजवळ सगळ्यांनाच करून टाकतोय कव्हर. ओके.
हॅलो. येतोय सर आवाज? येतोय ना? हो 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 सर जॉईन झालेत ना सर? प्रिन्सिपल सर? हो प्रिन्सिपल सर जॉईन झालेत, सावंत सर जॉईन झालेत, ओके रिसोर्स पर्सन जॉईन झालेत, ओके. कीनोट स्पीकर? कीनोट स्पीकर पण जॉईन आहेत मॅडम. ओके. आता सावंत साहेब आणि आपले जॉईंट डायरेक्टर साहेब डॉक्टर चेतना पाटील मॅम ह्या सेशनला महत्वाचे आहेत. मॅडम पण जॉईन झाल्यात. प्रिन्सिपल सर आहेतच. ओके ओके सर. ओके. सरकार मॅडम पण आहेत ना आपल्यासोबत? 43 लोक जॉईन झाले. सुरू करायला हरकत नाही. 5 मिनिटात सुरू करा. हॅलो. येस सर, येस सर. हो हो साहेब, हो साहेब. गुड मॉर्निंग साहेब. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू एव्हरीबडी. 5 मिनिटात सुरू करा. येस सर, थँक्यू. हो सर, हो सर. थँक्यू सो मच फॉर बिईंग विथ अस सर. सुरू करायला पाहिजे.
हॅलो हॅलो, आवाज येतोय का सर? येस सर, येस. जगताप सर जॉईन होणार आहेत का सर? काय कशामुळे वेळ लागते? सोनूने सर मे नो अबाउट दिस. सोनूने हॅलो, आवाज येतोय का? येस येस. हो येतोय सर. आपण सुरू करूया. सर जॉईन होतील किंवा काही कामात असेल तर नंतर जॉईन होतील थोड्या उशिरा. ओके सर, ओके. हॅलो सर, आपण स्टार्ट करूया. मी सरांशी कॉन्टॅक्ट करते. ओके मॅम. हा, वी कॅन स्टार्ट. म्हणजे जसं वेळ मिळेल तसं सर जॉईन होतील. आपण प्रोसीड करूयात. ओके 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 ओके. आता बनसोडे सर. नाव घेतलं की चेतना मॅडम म्हटलं ना सुरू करा, सुरू करा. गुड मॉर्निंग सर. हॅलो, गुड मॉर्निंग सर. काय चेतना सुरू करायचं ना? हो सर, आपण स्टार्ट करूयात. चला सुरू करा. बनसोडे सर, प्लीज स्टार्ट. Yes, sir. There was a network issue from my side, therefore I was disconnected for a while. Sonen sir, shall we start? हो, सुरू करूया आपण. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. A very good morning, one and all present here from different parts of India. At the very outset, before starting this program of National E-Conference, may I request all the dignitaries, participants, over to Vishal, sir. Actually, sir, your voice is not getting us. Yes, sir. Now, Yes. am I audible? Yes, you are audible. Please repeat once. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. At the very outset, I request all the dignitaries, participants, and my dear colleagues present over here on this virtual platform to stand up for the national anthem. Over to Professor Vishal, sir. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. जय. Thank you very much for the national anthem. A very good morning, one and all. Once again, the president of the institution, that is Sanjeevan Gramin Vaidikya Samajik Sahayata Pratishthan Onde, Honorable Vijay Patil Sahib, the Joint Director Higher Education, Konkan Region, Panvel, Honorable Dr. Sanjay Jagtap sir, the former Pro-Vice Chancellor of University of Mumbai and the former Chancellor of Jaipur University, Rajasthan, Honorable Dr. A.D. Sawant sir, all the research persons, Honorable Dr. Sunita M. Sarkar, who is the keynote speaker of this National E-Conference, Honorable Professor Dr. Ajay Wagmare from Telangana State, Honorable Dr. Chandrakant Chavan from Solapur, Honorable Dr. Sandesh Wag sir from University of Mumbai, Honorable Dr. Savita Taide from Mumbai, Dr. Priya Mittal ma'am from Mumbai, Dr. Salvin Paul from Sikkim University, Gangtok, and the principal of our college, Honorable Dr. Vinod Sonune sir, the vice principal and the director of our institution, Honorable Dr. Chetna Patil ma'am, and all the dear participants and my dear colleagues. I, on behalf of the institution, college, and organizing department of history, department of political science, women development cell of our college, and IPSC, I welcome you from heart of hearts to the one-day national e-conference on the topic, the relevance of feministic movement in 21st century, jointly organized by on the occasion of International Women's Day by the departments. As I told you earlier, that Department of History, Political Science, Women Development Cell, and Internal Quality Assurance Cell of our college. So I welcome you all on behalf of all these organizing committees and departments. Dear friends, at the very outset, it is our duty and privilege to welcome you all. And therefore, may I call upon Professor Vishal sir to play the song, welcome song on this occasion. We are also paying a great homage to Savitribai Phule, who is the first Indian lady teacher whose contribution has resulted that a number of women are working in different sectors and different fields nowadays. So I request Professor Vishal. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन
सर Now, may I request the principal of our college, Honorable Vinod Sonal, sir, to deliver his welcome speech on the subject. Over to Dr. Sonal, sir. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल. माननीय मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, प्रमुख वक्ता और मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार. इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर और आज क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले उनकी पुण्यतिथि के लिए मैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को अभिवादन करता हूं. आज के राष्ट्रीय परिषद में आपकी उपस्थिति हमारे महाविद्यालय के लिए बेहद गौरवपूर्ण और सम्मानजनक है. आप सभी ने अपना अमूल्य समय देके इस मौके को संपूर्ण कर दिया है. इस राष्ट्रीय परिषद में मुझे आप सभी का स्वागत करने का मौका दिया गया है. आज इस महाविद्यालय की प्रगति से पूरा जिला परिचित है. यहाँ की शिक्षा संबंधित गतिविधियां, साथ ही साथ पढ़ाई के माहौल को देखकर अभिवादक बेहद खुश हो जाते हैं. आप अपनी बातों में मैं आगे बढ़ते हुए आपको यह बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय परिषद में हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय श्रीमान विजय पाटिल साहब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे. हृदय की गहराई से मैं महाविद्यालय में आपका स्वागत करता हूं. हमारे दूसरे अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय जगताप, विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन पधारे हैं. आप जैसी जमीनी और लोकप्रिय अधिकारी की उपस्थिति हमारा महाविद्यालय धन्य हो गया है. आपका भी हृदय की गहराई से मैं स्वागत करता हूं. डॉक्टर अरुण सावंत सर, जो मशहूर वैज्ञानिक और पूर्व कुलगुरु जयपुर विश्वविद्यालय, आपके मार्गदर्शन से हमारे महाविद्यालय की उन्नति हो रही है. सर, आपका भी हृदय की गहराई से मैं स्वागत करता हूं. आज के राष्ट्रीय परिषद में प्रतिभावान प्रमुख वक्ता प्रोफेसर सुनीता सरकार, जो पश्चिम बंगाल से उपस्थित है, प्रोफेसर अजय वाघमारे सर, जो तेलंगाना स्टेट से यहाँ पे उपस्थित है, और डॉक्टर चंद्रकांत चौहान सर, जो महाराष्ट्र से है, और सेलून पॉल सर, जो सिक्किम यूनिवर्सिटी से आए, उनका भी मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं. सेशन के चेयरपर्सन के रूप में डॉक्टर सविता ताड़े, जो एसएनडीटी कॉलेज से यहाँ पे हमारे महाविद्यालय में उपस्थित है ऑनलाइन प्रोग्राम में, डॉक्टर संदेश वाघ, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जो उनका ही मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, और डॉक्टर प्रिया मित्तल मैडम, जो मुंबई से है, उनका भी मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं. इस राष्ट्रीय परिषद में सभी सहभागी विद्वान, प्रतिभावादी प्राध्यापक एवं छात्रों का मैं स्वागत करता हूं. मैं आप सभी विद्वान अतिथि एवं छात्रों को महाविद्यालय का अल्प परिचय देने का प्रयास करता हूं. संस्था के अध्यक्ष माननीय विजय पाटिल साहब ने सामाजिक जिम्मेदारी समझकर वर्ष 2002 में विक्रमगढ़ जैसे आदिवासी तालुका में, जहां पर उच्च शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी,
प्रतिकूल स्थिति में कला, वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय शुरू किया है। इस महाविद्यालय ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और सफलतापूर्वक प्रस्थापित करने में माननीय विजय पाटिल साहब का अभूतपूर्व योगदान है। महाविद्यालय प्रशासन, अध्यापन, छात्र एवं महाविद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया है। कठोर संघर्ष, प्रयास और मेहनत के बल पर आज हमारा महाविद्यालय इस क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट महाविद्यालयों में से एक बन गया है। हमारे छात्र पदवी प्राप्त करने के बाद समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। ये महाविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस वर्ष एमएससी केमिस्ट्री शिक्षा शुरू करके प्रगति की ओर एक और कदम महाविद्यालय ने बढ़ाया है। आप सभी से हम उम्मीद करेंगे कि आप अंत तक हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे। धन्यवाद। Yes. Balsote sir. Thank you very much, sir, for the welcome speech on this occasion. It is rightly said by G.D. Anderson. Feminism isn't about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way the world pursues that strength. And coordinator of this conference, Honorable Dr. Pandagale sir, to deliver his introductory speech. Dr. Basweshwar Pandagale will highlight on the aims and objective of the conference. Over to Dr. Pandagale sir. Thank you, sir. Good morning to all. Honorable dignitaries on the dais. I am here for my introductory speech on the occasion of this conference about the relevance of feminism in 21st century. Last 2 years were the most difficult years, may be in our known period of life. This situation was, of course, due to the dangerous pandemic. This pandemic compelled us to rethink about the concept of life. With new and never known dimensions, there are many most COVID challenges which we have to face, but at the same time, new horizons of capabilities of ours are getting familiar to us. There are many. One of them is the virtual platform. We are getting to express ourselves. This new concept of e-conference is, of course, the outcome of this, which has faded the limitations of distance and places and connected us with just a link. The relevance of the feministic movement in the 21st century. This is our one-day national conference, which is organized by Department of History, Political Science, Women Development Cell, and IQAC of Arts, Commerce, and Science College, Pune. Feminism is the most discussed, but it to be needed to be implemented more issue from last few decades. Every concept gets new dimensions according to the stage of time, so it is applicable in case of feminism also. Though we entered in 21st century and almost reached to its quarter at this point, the movement of feminism reached to its after post-feminism situation. At this point, it is needed to be more introspective about its relevance, because though the journey of feminism, which started in last century, yet not that much succeed to reach its destination of equilibrium. So we tried arrange the conference to make all of us more introspective about the need of and implementation
The response to our call was definitely huge. Various writers from all over India sent their papers to this conference. The number of papers reached almost 90. The response of our colleagues, friends, researchers, professors, teachers, and even students is so massive and more than our expectations. The response itself is the answer for the need of feminism. To be discussed and research the collection of the papers in our research journal book will be a treasure for the study of feminism from every dimension. In this conference, we will be the part of historic sessions which will be delivered by eminent resource personalities in their respected fields, because as Acharya Vinoba Bhave said that the world will implement tomorrow what the thinkers see and express today. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, may I request the president of of the institution as well as the inaugurator of this national e-conference, Honorable Vijay Patil Sahib, who has opened avenue of higher education in this remote and inaccessible outside. महिला दिनाच्या निमित्ताने दिनांक 10 मार्च 2022 रोजी राष्ट्रीय परिषदेमध्ये सहभागी सर्व मान्यवरांचे व संशोधकांचे मी संस्थेच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. या महाविद्यालयाने एका वेगळ्या विषयावर ही परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेमध्ये होणारे विचारमंथन विशेषतः समाजोपयोगी ठरेल अशी मी आशा व्यक्त करतो. अशा पद्धतीने परिषद आदिवासी दुर्गम भागात आयोजित होत असल्याचा मनस्वी आनंद वाटतो. असे उपक्रम होणे ही काळाची गरज आहे. याच्या यशस्वीतेसाठी मी शुभेच्छा देतोय. Thank you, sir. Now, may I request the director of the institution, the vice principal of our college, and the convener of this national conference, Honorable Dr. Chetna Patil ma'am, to share her views on this occasion. Dr. Chetna Patil ma'am will highlight on the role of the institution played so far in this tribal area. Over to Dr. Chetna Patil ma'am. Thank you, sir. Welcome. So am I audible? Yes, ma'am. Thank you. Good morning, all. Respected Honorable Shri Vijay Patil, sir, Honorable Joint Director of Konkan Division, Dr. Sanjay Jagtap, sir, Honorable Dr. A.D. Sawant, sir, Principal Dr. V.S. Sonawane, sir, all the delegates, participants, and all my dear students. First of all, I'd like to welcome each and all of you for today's National E-Conference on that is the relevance of the feministic movement in 21st century. Before moving to our today's National E-Conference, I'd like to give a short brief about our institution. Our institution, Sanjeevan Gramin Vaidikiya and Samajik Sahayata Pratishthan, established Arts, Commerce and Science College in the year 2002 for social and educational reformation of the tribal populace in the extreme remote and inaccessible area of Vikramgarh of Palghar district. To provide higher education to the students.
We started our institution with undergraduate courses, and now we have post-graduation course like MSc for our students. We have also introduced Open University, Yashwantrao Mukti Chavan Mukta Vidyapit, and various certified courses to develop skill in our students. We started our institution with near about 100 students, and now we have near about 750 students, and we are proud to say that most of our students are in government sector, private sector, and are employed. Our students are also net set qualified PhD holders, and some are pursuing higher education. Moving to the today's e-conference, I'd like to say that this idea clicked us for taking such an innovative topic is the role of women and her development during recent years. We all see that women empowerment is women's sense of self-worth, her ability to determine their own choices and their right to influence social changes for themselves and others. But according to me, women have ability because if she can carry a baby for 9 months in her womb, despite all the trouble, she can do only anything. We have seen her role in the pandemic situation as she was playing a role of mother, a housemaid, and also working 24/7 during her office hours also. There's a lot of things to speak on this topic, but I like to say that feminism isn't about making women strong. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives her strength. Once again, I like to welcome everyone for this conference, and I'm thankful for giving me an opportunity to express my view for today's conference. I'd like to welcome each and everyone for this conference from institution and from WDC, from History Department. Thank you. Thank you, sir. Over to you, Bansuri. Thank you very much, ma'am, for highlighting on the role played by the institution so far since 2002 through. May I request the guest of honor of today's National Conference, the former Vice Chancellor of Jaipur University, Rajasthan, and former Pro Vice Chancellor of University of Mumbai, Honorable Dr. A.D. Sawant Sahib, whose guidance and whose guidelines are always with us in the development of our institution. So I may request Dr. Sawant Sahib to address us on this occasion. Over to Dr. A.D. Sawant Sahib. Thank you, Dr. Gaikwad. Thank you, sir. Thank you. At the outset, Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. We are hearing you. Okay. So at the outset, I congratulate the organizers for choosing such important issue for an international or national webinar happening into the most remote area of not only state but of the University of Mumbai. It was a vision of Sri Vijay Patil, the agrarian leader of the area, having assessed the situations of the most tribal area, deprived of so many things, and took the initiative to start this institution. We all must appreciate his vision. The distinguished dignitaries to this conference, and more important is the organizing committee, and I personally thank all the delegates in virtual mode, and keynote speaker
Professor Sunita Sarkar, and all those who have contributed papers to this conference. I like the theme or the topic of the conference, the relevance of the feministic movement in 21st century. I shall not give a long speech, but I shall speak few things because I need to go for other conference or meeting, which will trigger something in the minds of the staff and students in the college. Delegates will give their views, but the organizers and the college have to make a vision out of the views. And so implement, it is not education alone, but it is a holistic development of the tribal populations, of which women have to play a very important role. Though it is not a material society in this tribal zone like Northeast, it's a patriarch system, but still women have to play that role and take the responsibility of the house. I do find all the people coming from that area, the households, responsibilities mainly shouldered by the woman of the house. I find male members, heads of the family, most of them are irresponsible for upkeeping and bringing up the family, the women development, the child education, and child health. This is not only this area, but most of the areas in India are suffering from this sort of a curse. And so if we talk of the feminist movement, many stalwarts, great social workers, currently Mrs. Patwardhan is working, but Anutai Wag took the mission of doing something for tribal people and mostly the women looking at the plight. She spent her entire life, but not transformation to the expected level has not happened. In India as a whole, if you see this plight of women, lakhs of women, they die during pregnancy. And quite a few, I don't have statistics of the present, but they have the stillborn babies. Government introduced so many good schemes, but our officers are not dedicated to the missions and objectives of the government, and they do a lot of pilferations of the materials or the support given by the government. So missions are not accomplished. See, in a city like Mumbai, the plight of women in a slum area could be understood by Mrunal Gore. Let's not go for the history and historians what they said, but say Mrunal Gore, Paniwali Bai. It was a mission, feministic nature. She became a great social worker and her associates. And Paniwali Bai means who is responsibility of a woman of the house to get a pani, water for the family. And because of her mission, most of the areas in Mumbai slums, they could start getting good amount of water and a clean and good potable water. Awabai Wadia from Mumbai started the mission of health of the women. And you know how strong that organization has been working, the legacy is being followed. Mother Teresa, the Nobel Prize winner, Nobel laureate. Focus was on the women's flight, you know. So friends, it is the movement, but not a very significant movement has started in this country by the men, which should be the driven for the welfare of the women in this country.
thanks to the government of Maharashtra policy on overall free education, the girl child, has made some difference. But the responsibility of that education lies on the people who have been responsible in managing the education. If that focus is lost, I don't think no matter what policy and other things are. Hello, Dr. Sonavane? Yes, sir. Yes, sir. There was a call, so I thought some problem. I am audible, no? Yes, sir. You are audible, sir. Okay. So, it was no matter what the policies I was saying, but it was a Maharshi Dondo Keshav Karve who started the women's education and the special university. See, the vision and the philosophy, girl child would not go to the school and forget about going to the college because it was more important. It was more important for girls' education in the sense he established separate university for the reason that the girl child is shy of going to the colleges, or the parents would not allow the child to go to the college particularly because there was no concept of co-education, and so for a social stigma or anything, they would not allow girls to go to college. You know that Mumbai University is a live example, started in 1857. But it will be shock and surprise to you, the first women graduate came out almost after 1932, when already Curie and others, female scientists, Nobel laureate winners in the worldwide, they had achieved a significance, but there was no graduation from 1957 to 1932. The first woman graduate came from the Mumbai University. So no wonder Karveji started the SNDT University. That vision has to be appreciated. And it was all across the country. Anywhere SNDT Women University can start the college. But our intruders, student administrators, state-wise, they are looking at the institution in different sense. They don't want the SNDT University to open their colleges in other states. Many have almost restricted that entry and not allowing the entry, the new colleges. Now, where is the movement? Why nobody came forward to establish the mission of the SNDT University? Why not Government of India and all the state follow the guidelines of this great legacy of the MD Karve? Anyway, there are many such examples I can say. I'm not going to the international movement. What best movement is, I would say, Savitribai is and Jyotiba. And why go for Nelson Mandela and Winnie Mandela for their movement and their work? Now I come to focus on the local issues. You might take around an excursion when you have physical presence and visit the houses of the Adivasis and see the plight of women there. Say the nutrition, rather malnutrition. The minimum requirements and that of water is a life. Water is a life. It is the provision of water, and then comes a potable water, clean water, free from contaminations. No, you will not. Find out anybody who has a mission from a college or NGO or a volunteer to go from village to village and find out whether all the welfare schemes for women, the girl child, Savitribai Datta Yojana, is being implemented in that village and deprived family. You will find young, talented girls sitting in the house
doing a house chore. They go to graze the cattles and support the parents. There is no movement I see after Anuta Yuag and maybe a few now who can drive these girls to the schools and the colleges. A special initiatives for betterment of their education, supplementary course and colleges, or their progression in the educations, and carve out something from your purse and establish the funds for a women's education and scholarship. In Marathi we say, मुलगी शिकली म्हणजे घर शिकलं, आई शिकली म्हणजे घर शिकलं. But this is not happening, you know. So not only it is the tribals or the poor people, most of the families around there, and they unfortunately think, unlike Chetna and her father, he thought of her giving a graduation, post-graduation, a PhD. Now it is her duty to emulate the mission and vision of her father and see that 10 years later on, some girl student of this college, not some, but few, will go for a doctoral program in the universities at better places, in institutions of economics and finance. They are pushed for a medical education, somebody a doctor and some doctor like you in education. We look at the plights of the, so inspiration comes from, you have undergone that process. You know the suffering. And so create those enthusiastic and triggered mind, ignited minds, what APJ doctor was saying, former president of India. So you create ignited minds among the women who will look into all these issues and create a mission. After 2002 till 20 years, incubation time is over now. You have to take a next flight. And so create a mission. All the speakers will be talking something or the other, the innovative experiments and experiences. Please note down those and create an abstract format to build up the mission for women's education, a better education, and further the women's scholarship. I don't want this 12th and SSC, HSC, and BSCs and MSCs, you know, these are formal. I call up to MSc the formal education. The education starts beyond that. Look at the global issues, global visions, global missions, you know. So you are educated when you are a postgraduate, I would say. And then the mission starts, you know. And so create those minds. So hope everybody will learn from this conference, take advantage of the scholars speaking at this, and prepare your agenda. And then I think the purpose of this conference hope to have fulfilled, and will create the minds in the welfare of this area for generations to come. Thank you very much. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much, sir, for your सर आवाज येत नाही. बनसोडे सर. I am through. You can proceed. Yes, sir. Sure. Yeah, I think. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Definitely, the way you said will make sure that we'll proceed that way, because we have your guidance each and every time
I'm thankful for this, and I'm thankful that despite Am I audible? Yeah, yes, busy yes. schedule, you have given your time for this Thank you, and conference. allow me to leave the conference because I have another meeting. Thank you very much, sir. All the Yeah, best. thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. बंसुरे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Hello, Bansode sir, are you there? Hello. बनसोडे सर आवाज येत नाही तुमचा. Gaikwad sir, joined with audio, please. Then the audio will be clear. Otherwise, no. माईक मध्ये फक्त तुमचा व्हिडिओ दाखवतोय, माईक दाखवत नाहीये. हो. हा, please unmute. Gaikwad sir, please unmute. करायची म्हणजे ते माझं बंद करू नका. Bansode sir, Please unmute sir yourself. please unmute yourself. Hello. आता चालू आहे. Gaikwad sir, Bansode sir. मोबाईल निघाला सर. Bansode sir, माईक चालू आहे तुमचा, आवाज येतोय. व्हिडिओ बंद करा, म्हणजे तुमच्या बँडविड्थचा प्रॉब्लेम येणार. व्हिडिओ बंद करा प्लीज. सर, हा, तुमचा आवाज येतोय सर. हा, माझे सरांना इश्यू आहे का? नाही, तुम्हाला इश्यू आहे ना. हा, हा, आणि काय करा, व्हिडिओ बंद करा, म्हणजे बँडविड्थला प्रॉब्लेम येणार. व्हिडिओ बंद करून बोलला तरी चालेल. नो व्हिडिओ, आय विल स्टॉप माय व्हिडिओ. हा, माले सर इंट्रोड्यूस दिलेत ना. ओके सर, आणखी सुरू झालं नाही, तुमच्यात काय हे झालं नाही ना. हा, माले सर. Yes sir, I'm there. Yes sir, yes sir. Please introduce the. Okay sir, okay. Thank you. Yes sir, thank you sir. Good morning one and all. It gives me an immense pleasure to introduce today's guest speaker, Srimati Sunita M. Sarkar Madam. She is an assistant professor in Department of Political Science at Sabang Rajnikanta Mahavidyalaya, Luthania, West Bengal. She has done her MA and MPhil in Political Science from University of Calcutta. She has submitted her doctoral thesis on food movements in West Bengal at University of Calcutta. For last 11 years, she is teaching political science at undergraduate level in Sabang Rajnikanta Mahavidyalaya, and she is guest lecturer in the Department of Political Science, West Bengal State University from 2019. Her publications include
the issues of illegal immigration and Assam's complicated twist with NRC, human rights of the migrant workers in India, निम्न वर्ग इतिहास कारकर परिवर्तित अभिमुख in Bengal, and many more. She is a life member of West Bengal Political Science Association, also member of National Library, Calcutta. She is a member of advisory board of a magazine called Alor Sandhane, and many more. She has very huge biodata, but I have taken very short here. Thank you, Bansuri sir. Over to you. Am I audible, sir? Yes, ma'am. Thank you, all of us present here. First of all, I would like to thank the dignitaries, Honorable Sri V.G. Patil sir, Honorable Dr. Sanjay Jagtap sir, Honorable A.D. Sawant sir, Honorable Dr. Chetna Patil madam, and Honorable Principal Sir of ACS College, Onde, Dr. Vinod Sonavane sir. And of course, the organizing committee of the ACS College, who has given me this wonderful opportunity to present my paper here. And the theme of the conference, or today's e-conference or seminar, is the feministic movement, the relevance of feministic movement in 21st century, which in itself is a vast area. And movement is the area which interests me the most. So I have taken this opportunity and I have chosen a very small area, the movement, the feministic movement, rather I would call it women's movement in India, as the theme of this paper. And without wasting more time, I'd start sharing. Kindly bear with me. Okay. So this is the title of my paper, The Changing Face of Feministic Movement in India. And thanks to organizers. This is the themes how I would like to present my paper in this way. In section 1, there will be thematic issues. And in section 2, we'll move on to feminist movement in India. In section 3, we will continue with the women's movement. And in section 4, I would like to discuss the repertoire feminist movement from the very beginning till date. And this is on what is feminism? What is feminism? Since I say this is a vast area. An Oxford English Dictionary defined feminism as the advocacy of the rights of the women based on the theory of equality of the sexes. And now we know this definition is falling short because the scope of feminism over the years has expanded beyond imagination. And the world is gendered, as we know, hierarchy of sexes prevails, and masculine is considered to be the superior part of the world, and feminine, our everyday world, and feminine is the inferior part of that hierarchy. And feminism is a wide range of political, ideological, and social movements that share, since, as I told you, my interest is in movements. And to be there on movements, I need to do some sort of groundwork, and that is why I'm here to tell what is feminism. This is rather the starting point. And a goal to define, to establish, and to achieve. These are really bookish, we all know these are very bookish, but still we have to discuss it. As define and establish and achieve political, economic, personal, and social equality of sexes. And feminism is not about men and women, but it is about understanding and
the way it is about the structure. No, we are living within a structure. Maybe that is political, that is social, that is economic. The structure that produces the division, and it has inserted into the patriarchies that differed accordingly to time and space. The concept of patriarchy has changed over the years. And the concept of exploitation and the suffering of women has also changed. The notion has changed. As we will discuss in our next section, we will see that how over the years, the notion of suffering of women and women rights over the years, they have changed. And a feminist is one who recognizes the multiple structural inequalities, which is basically gender-based. And feminist struggle is the struggle. It's a political struggle in its own right. And if we want to discuss about feminist struggles, feminist movement, we need to go through this feminist methodology. And methodology is something, it is a set of rules. Since we are talking about feminism and we are not talking about this mundane world, the world as it is visible to us, we are talking about feminism, and we are taking the issues of women, which is not being there as the matter of knowledge. It is not something which has been given. It has not been given there. And the plight of women, it is not there. So we need to conceptualize, and to conceptualize the plight, the suffering of women, the cause why they are suffering, the cause why their voice is being, why they are shouting, or why they're protesting. We need to know, and we need and in some places we need to decipher, because in most of the cases, women do not speak. They do not speak. It is their body language, it is their silent suffering. So we have to make a sort of inquiry into, and how to inquire. We need a tool. So this is what feminist methodology gives us. And each methodology links a particular ontology. It's a very important thing. Ontology is something, it is ideas about social reality, how they are. And there is epistemology, how the knowledge is being produced, the knowledge about gender, how to look at the feminists, how to look at the women and their demands, their suffering, their lives, etc. How to produce valid knowledge of their social reality. So I have here given a sort of description about what feminist methodology actually is. And feminists, they actually deny the authoritative moral and political position, the knowledge which produce knowledge about women, the patriarchal knowledge. But the thing is, feminist methodology is a vast thing. There are so many things, because it is basically dependent on how the women experience her world. So from every woman have their own experiences. So it is not easy to generalize. So feminist methodology is always vulnerable, because you cannot make a concrete theory out of it. It is always like, floating, sporadic, very scattered. And we have to collect them. We have to, if required, we need to bind them together. And we have to sort of erect a
theory, if we can call it a theory. So there is no single methodology called feminist methodology, but rather a sets of methods and methodology we use to sort of gather knowledge about feminist experiences. And next on to what is feminist standpoint. It is very important because there is no prior knowledge about feminism or the plight of the women or the suffering or what are the exploitation they are facing. Apparently, we said that they're fine. They're facing no exploitation at all at home, at society. They have given the honor of mother, the child bearer, the rearer, the caregiver of a family. She's fine with all this. But that is not the true knowledge. So feminists need to take a standpoint to decipher all these, there is this veil. So they need to take a standpoint. And a feminist standpoint explore relations between knowledge and power. That is foremost important. Knowledge and power. If we do not talk about power, we're actually missing the feminist agenda. If we do not talk about the knowledge about women's own sufferings, their own experiences of everyday life, we are actually missing the point. And the feminist standpoint is grounded in the women's experience. As I told you, emotions are important. The embodiment, as she suffers silently. So there are psychological problems, and there is instances in history of women's movement. If you go there, I don't want to actually go in depth, but the embodiment of pain, the hysteria, the psychological disorder women have faced in history and still facing. And this is related to her emotions. And the emotions, there is no theory about emotions. Science do not, the sciences rather, do not recognize it. So embodiment also, the bodily experiences of women also to be taken care of. And this is also to note that there is diversity in women's experiences. The experience of a woman who is living in a first world country and who is living in a developing country is altogether different. And there are so many other things, the intersection of so many categories are there. We have to keep that in mind also. And knowledge from a feminist standpoint is always partial. Feminists, they do not claim that they know the whole thing. And we know that in case of methods, methodologies, and epistemology, there is this preeminence of science. And the science is basically based on the production of knowledge, which is actually gender-based. And the gender here is very much, the knowledge is phallocentric, actually patriarchal. And the women, they're trying to establish sort of a alternative to the patriarchal political setup. That may sound very, very bizarre. What that would be abnormal, but that is not. It is counted to be political activities in its own right. So next we move on to the, am I speaking so fast? You can tell me if I'm telling so fast, going so fast. No, ma'am. It's reasonable. Okay, sir. Thank you. And this is first wave feminism. I'm making it a bit short. I'm not going into the details as it is visible on the screen. And
fast wave feminism, and feminism is something, which developed in the 19th century, early 19th century, and it was developed in the concept, it was developed in the Western countries, in United States, in Europe. And the first wave feminism, the concern of the feminist was the access to the political arena, like franchisee, and equal opportunities for women in workplace, like wages. That was the main concern, and their techniques were the lobbying and campaigns. If we look at the history of US, we will get plenty of example for that. And this next, moving on to the second wave feminism, the second wave is rather complicated. In the 1960s and 70s, in post-war Western welfare societies, that is to be kept in mind. And 1968-69, as we know, the year of turmoil, public manifestation of new left radicalism in America, in USA, Burma burning movements of 1968-69, and also it was in this period, it was actually characterized by the vicious attack of other women. One section of women attacking other section of women. White women attacking women of color. That was the theme. And the primary site of the struggle was the female body itself. How to get rid of her own body that has limited her potentialities. And from 1980s to 1990s, a crucial differentiation in second wave. Actually, the second wave was trying to build some sort of a universal theory of feminism. And in 80s and 90s, there came a huge opposition to that effort of these Western feminists. Actually, Gayatri Chakrabarti Spivak, she has written on the avant-garde position of the French feminists. She has actually criticized their position. And the women's concept of women's empowerment and differential rights, women of color, third world feminism, or the post-colonial feminism, that actually came into the discussion. That took the center stage, and there was actually this avant-garde position that was actually denied. The Western, the position of the Western feminists, they're the most opportunate. They are the most advanced in thinking, in doing, in writing feminism. That was actually denied. And that was that second wave, the later part of the second wave, actually it was marked by the difference. And there is we can say that there is another part of feminism, which is the radical feminism, which actually introduced another angle to feminism by using neo-Marxism and psychoanalysis. That is why this radical feminism in second wave is so important. As we see, you can see that Juliet Michel and The Subjection of Women and Shulamit Firestone, The Dialectics of Sex, two renowned books of that time. And next on to third wave, it started from mid-1990s. And the women are no more bogged down with their bodily expressions and sexism, etc. And they were more assertive about capability, the strength, and they're claiming themselves as active social agents. That was important. And this new feminism is characterized by the local, national, and transnational activism. And in areas such as violence against women, trafficking, body surgery,
self-mutilation, and overall pornification of the media. It started. And fourth wave feminism, that is what we are experiencing right now, is characterized by the pluralism and intersectionality, more indecisiveness, more heterogeneity, and more complexity as well. So as we can see, there is no one feminism, rather there are feminisms. Liberal feminism, Marxist socialist feminism, radical feminism, Black, lesbian, ecofeminism, first phase of women's movement. That is a colonial period. And with very surprisingly, Maharashtra and West Bengal share some sort of similar background in that case. You have Jyotirao Phule and his wife Savitribai Phule in Maharashtra, the reformer Dalit couple. And you have Hindu reformer Raja Ram Mohan Ray and Ishwar Chandra Vidyasagar in West Bengal. So they have done their part. They're the pioneers. And then came the women's organization. They have to be there because there was this need to organize women, to take women out of their own comfort zone from homes, from managing homes. So in 1910-11, in West Bengal, Sarala Devi Chaudhurani, she formed Bharat Stree Mahamandal. And the aim was to make women aware, make them aware politically. And in 1917, All India associations, Women's Indian Association. In 25, we have this National Council for Women in India, and All India Women Conference came in 1926. And as these associations grow in number, the women both at local and at the national level, they were more and more, they were getting aware about the issues like education, suffrage, property rights of the women. And as we know, Gandhiji also, he was very fond of making women politically active in his own way, as he considered the spinning, wearing khadi, teaching and serving. This was the important activities of women. And he actually created a niche for women in the nationalist movement. Hitherto, it was not present in nationalist movement. From 1920s, Gandhiji, through his own techniques, he actually introduced it, and National Congress adopted it. He adopted the point. And again, there was these two important leaders in case of women organizing women's. One is, and again from Bengal, Sarojini Dutt and Sarojini Naidu. Sarojini Dutt was rather organizer who actually went on the path of non-political organization. And as we know, Sarojini Naidu is quite a non-figure in Indian politics. She actually took the political path to organize women. And in the 40s, we see that along with this nationalist movement led by Indian National Congress, there came the role of left parties, rather party CPI, Communist Party of India. The left politics actually was gaining ground in India. And in cities like Bombay, now Mumbai, and in Calcutta, trade union movements were visible because these cities are, at that time also in colonial period, quite industrialized. So there were these workers and
they have their own trade unions, and the left parties or the left party, it was backing the trade union movements. From 1920 to 30s, women workers in Bombay organized a series of strikes. And from 40s, Indian women, they started to participate in communist socialist movement, and their role has been much celebrated. Their role, they participated in Tebaga and Telangana movement. That role has been celebrated. And now on to organized movement. What is the difference between organized women's movement and non-organized or unorganized women's movement? When we discuss about movements, there is not really a huge difference between organized movement and an unorganized movement, because organized movements have also parts which is not organized, and unorganized movements have also parts which is very organized. So there is a certain kind of intermingling. And if we see that Indian constitution from the very beginning, it accepted, it has given the right of equality to both men and women. And there were several other acts to which the right to equality was accepted by the Indian state. As you can see here, the Hindu Marriage Act, the Succession Act, the Adaptation Act. And from 60s, we see a new feminism appeared in the Western countries, and the influence was on Indian feminists also. And 70s, we saw a new spurge in feminist movement. Radical left parties came up and took the initiative to organize the women from all strata of Indian society. And here also, Maharashtra and West Bengal have similar experiences. Rather, Maharashtra is more advanced in that case. And from the 60s, early 60s, in West Bengal, this political awareness was growing, because of these left parties. Formerly, it was CPIM in the first phase. Then come the split in 1964, and then came CPIM. First, it was CPI, Communist Party of India. Then it was in 64 CPIM in West Bengal, and it just continued for 34 years. That was the beginning, and West Bengal also experienced some sort of left radicalism in form of Naxalbari movement. And there is also some Maoist centers and movement in Maharashtra also. And there are more similarities between these two cities. Why I have chosen them, Calcutta and Bombay. I have taken this, the source is a book from Raka Ray. She has done her survey in cities of Bombay and Calcutta. I have taken from her. And also the socioeconomic factors that are important in case of Calcutta and Bombay, they are also very similar with some differences. We'll discuss about that. Let us take up the similarities of Calcutta and Bombay. Both have a colonial past, as I told you, and key sites of British colonial rule. Calcutta was at that time, Calcutta was the capital in colonial period of British Empire for a long period of time, over 200 years or so.
And it was quite, as I told you, that it was also very industrialized, like Bombay. And British influence made a quite social life, educated social part in Kolkata as well as in Bombay. And the two cities have their own history of active participation in political life throughout the 19th century and 20th century. What were the issues of women's movement in these two cities? Here comes the difference. And why that big, even after these so many similarities, there is so many similarities, and even after the similar background, political, economical background, the issues considered important for women's movement was different in Calcutta than that was in Bombay. So Calcutta, the issues of women's movements were basically literacy, employment, wage discrimination, water supply, electricity, and participation of women in general democratic struggle. That were the issues. And in Bombay, issues were violence against women, sexual harassment, safe contraception, and sex determination and abortion. Ban on sex determination and abortion. These are called the strategic gender interests, whereas the issues Calcutta was dealing with, or the feminist movement in Calcutta were dealing with, it was actually issues not really related to women interest, not strategically gender interests. And so Calcutta was missing out, while Bombay made it. Bombay made it with the international trend of second wave of feministic movement, and Calcutta missed it. Why Calcutta missed it? After sharing these so many similarities, it has taken from a snap taken from Rakar's book. I have given it in the suggested readings later on at the end of the slides. The issues important to women in Calcutta and Bombay. As you can see, employment and poverty. Calcutta's response was 75.9%. Bombay's response was 34.5%. Violence against women, Calcutta at 10%. Bombay 65%. So that is the question. Bombay, the people, the women living in Bombay, they actually felt the women agenda. They have this feeling, and they were coming with the age, and Calcutta was lacking behind. So, considering the demographic picture of Calcutta and Bombay, similar ratio of women per 1,000 men. Calcutta 829, Bombay 827, very similar, very close. So about mean marriage age, household size, female college graduates, and infant mortality rate, very close. So there is not much differences between Bombay and Calcutta, and so much differences in issues taken as feminist issues, taken up for organizing a movement. And this is the workforce. The social fabric of Bombay and Calcutta. In that also, they were pretty close, no? But there was a difference. That was caste system was less stringent in Calcutta, and there was plenty scope for upward mobility, whereas there are Adivashi and Dalit assertions in Maharashtra. And Adivashi and Dalit assertions, they have more regulatory and sexual norms, but they were less assimilated in Hinduism. That was a problem. In Calcutta, the women's movement was basically, and
predominantly was led by Poshchimbongo Ganotantrik Mohila Samiti, the Democratic Women's Cell of West Bengal. And it was a women wing of this ruling CPIM. How did it come to prominence, this PBGMS, Poshchimbongo Ganotantrik Mohila Samiti? The CPIM supported the organization, so they have this support of a hegemonic ruling party in West Bengal. And they favored, CPI favored this Ganotantrik Mohila Samiti with funds. This CPIM gave them this opportunity to access Ganashakti, their newspaper, circulated in most cases freely. And they had a membership in 1990s in West Bengal for about 2 million. And irony is that only 3 to 4% were actually active. And West Bengal at that time, we had also had a women's group called Suchetana, but Suchetana did not actually, figure out that much in feministic movement or women's movement in West Bengal. And this is their program nowadays. They're doing these things nowadays. So you can see that how it's lost its focus. And the organization of women's movement in Bombay, very importantly, Bombay had a very political field which was very dispersed and contested. Why was that dispersed and contested? Because unlike West Bengal, Bombay at the time, when everywhere elsewhere, even in West Bengal, Congress was losing political ground. In Maharashtra, Congress was very much there, and so did CPI. It was there. And in West Bengal, in 1997, CPIM came to power, and they were vehemently criticizing Indian National Congress and CPI. So that was another cause. And we have here Bombay, a very dispersed, very contested social movement sector and full of scopes to explore for feministic movements. Bombay's social fabric. Bombay has a handful of Marwari, Parsi, Gujarati, and North Indian businessmen and Maharashtrian politicians ruling Bombay. And in case of society also, the control, economic control was in the hands of non-Maharashtrians. In social case, there was middle class Marathis. And in Bombay, along with these political parties, there came Shiv Sena, which was not banned at the time. So it continued its political operations. And in Bombay, there was no hegemonic power to guide women's movement. Unlike Kolkata, there was CPIM to guide the women's movement, but in Bombay, there was not. And in Bombay developed Stream Mukti Mantra, Sampark Samiti. And as I told earlier, Forum Against Sex Determination and Sex Preselection. And there was also a group called Ekta. And nowadays we have plenty of many other autonomous groups in Bombay. And what lesson we have learned from this experience? We have learned from the experience of Calcutta and Bombay that in Calcutta it was not easy to initiate an all women issue driven movement, whereas in Bombay we have that scope because there was no hegemonic political party. Moving on to the next, it is the example of an unorganized movement, the Chipko experience. Chipko experience
basically it belongs to the eco-feminist segment of feminism, where they actually talk about the close relationship between women and ecology. And in India, we see that in Garhwal sector, the Indian Forest Act has always been very problematic to the local people. And as the new National Forest Act, it was passed in 1952, it was also very problematic, because the new policy, it was actually favoring the high yielding species, which was useful for industrial purposes. And the local people, they were more dependent on oak and vimal, trees like oak and vimal for fodder, fuel, fiber, firewood, and they were dependent on the jungle for grass, seeds, very much various flowers and medicinal plants. And all at a sudden, this act, they actually denied them the right to jungle or the forest. But in Garhwal, from 1945, Miraben, the follower of Gandhiji, he was actually running a Gandhi in Sarvodaya project. And there was this consciousness about this environmental preservation, how to preserve their environment, because we know that hill people are very much dependent on their environment, because heavy rainfall is there, landslides are there. And Chipko movement surfaced through this Dasholi Gram Swaraj Sangh, a cooperative that was set up by a Gandhian leader, local Gandhian leader named Chandi Prasad Bhatt. And that DGSS, it was giving employment to the local people. And it was basically dependent on the local forestry for raw materials. And in a fine morning, they were denied by the government, actually denied them the access to raw material, which was required for the DGSS factory, which was producing resin and turpentine and processing lisa, the sap of the cheer pine. They were denied, but the forest department gave it to someone else who were producing sports goods, some other company. They were producing sports goods, and from there the movement, the people were actually very much disappointed with the government, and Chandi Prasad Bhatt took the scope incident, and he organized the movement. He organized the people. And in 1973, April 24th, the Chipko movement officially started. And the movement, the vigor of the movement, it actually attracted the attention of veteran Gandhiist Sundarlal Bahuguna, who was living in that place. And he eventually spread the message of Chipko from village to village of Garhwal sector. And initially it was a great success. But this Chipko movement, it has two phases, One, that is the movement organized by the local leaders, which they were male leaders, and the movement run at the grassroots level by the women. And this is the incident I'm talking about, started at Reni. Chandi Prasad Bhatt, on the day of felling in 1975, the incident took place in 1975. Chandi Prasad Bhatt was not there, and they were about to start, the local people, they were about to start a movement. And as the Chandi Prasad Bhatt could not reach the place, the local women, and especially under the leadership of Gauri Devi, they organized and prevented the fellings of forest department. Later, they saved the forest in Advani, Saleh, Loital, and Malgadi.
And along with Chandi Prasad Bhat and Sundarlal Bahuguna, Chipko movement have women leaders who got least media attention, like Miraben, Sarlaben, Bimlaben, Hima Devi, Gauri Devi, and Ganga Devi, Bachni Devi, Itwari Devi, and Charnun Devi, and many others. So what we have learned from these movements, Bombay has showed the way how non-affiliated groups can actually operate in a more open space, less constrained by hegemonic structure. And Kolkata, a very hegemonic structure and little scope for purely gender-based feminist movement. And in case of Chipko, again, two layers we need to talk about. Basically, based on Gandhian principle of non-violence, Sarvodaya constructive works, and Padayatras, walking from one place to another, one village to another, they spread the message of the movement. The participants of Chipko movement. That is how they spread the spirit, the message of the movement. And the movement was appropriated by the state. How the movement was appropriated by the state. Again, I would like to say the movement was appropriated at the upper level. The upper level of the movement, of Chipko movement, it was appropriated, which was organized by the male leaders. But at the grassroots level, the state could not reach it. And how the state appropriated? The state appropriated the movement by three techniques. Here I have a slide for that. Techniques of appropriation, the false projection. There was this Uttarakhand Sangharsh Bahini in Nainital, alternative action group. They were not actually against the government rule, but they were demanding for the rights to use forest products for employment, to generate employment. And Sundarlal Bahuguna was actually in favor of preserving the environment at any cost. So, rise of alternative action groups, the false projection method. And there was this safety valves. Again, a method used by state to appropriate movements. The supporters and the leaders of Chipko movement, they have been drawn into the government committees, and piecemeal concessions was given to the movement. Then came the smoke screen. In 1979, Uttar Pradesh government eventually banned all the green fellings. Taking a, 360 degree or 180 degree, don't know, and stop the all green fellings, curtailing the people's right to forest produce. So that was the scenario. But still, Chipko is a very kind of a good experience for Indian feminist movement, or someone may call it ecofeminist also as well. But it has been a very good experience for us because it has shown a very different way of organizing local people, grassroots movement, and the techniques, the repertoire they use, the repertoire developed during the movement, it was very, very own to the people. It was not something that was imposed on the people. It was generated, very spontaneously, and it was not imposed. So that is the beauty of feminist movement. And as of now, we are living in an age of cyber feminism that is called the fourth wave feminism, of age of social media,
And feminists, they have appropriated the internet culture. They're using social media hugely. Not most of them, as there is a digital divide since India is still a developing country. But movements like Nirvaya movements and Me Too movements, it has cropped up. This is a picture of I got from internet. The students, they are actually protesting against the release of the juvenile delinquent of Nirvaya case. And every development has a flip side. Maybe this cyber feminism is also have some flip side. It has created a space for online sexual harassment. They have created some, as I earlier told you, that women, they suffer silently. So the impact is on their psychological health. They do not speak in most cases. They do not speak. And there is this rise in the domestic violence. And this internet has created the continuation of assault beyond physical space. Not here, the concept of renowned French sociologist Pierre Bourdieu is very important. He was talking about violence which was not visible. So we are experiencing violence, women, we are experiencing violence which is not visible and which is more potent to make permanent damage. And Nirvaya case has generated some sort of euphoria among the netizens and the new age citizens of India. But it was not that successful. As we can see, there is this statistics, National Crime Records Bureau of 2018, 34,000 of rapes were reported, 85% of which led to charges, 25% convictions. So here is the picture, you can see. And moving on to conclusion, the last part of my presentation, as I was talking about, what are the repertoires of contention in feminist movement? We cannot have, as women do not have similar experiences, they cannot afford this same repertoire for organizing a movement. The repertoire of contention needs to be different. And Charles Steele, a specialist in contentious politics, he has defined repertoire of contention as the ways that people act together in pursuit of shared interest. The shared interest of women in India. There is so much differences. How to make a single repertoire of contention, and repertoire needs to be grounded in people's experience, in histories, shared memories. So I was giving so much importance to this Chipko movement and giving so much importance to the feminist movement that developed in Bombay and Maharashtra. A memory of contention is very important because conventions of contention are part of a society's public culture. It is very important. A society's public culture, how to deal with contention, how feminists think about collective action in India. They're so fragmented. And the
they're talking in groups. And what happened in Kolkata is certainly misnomerous. It cannot be called a feministic movement. It was overshadowed by the party programs of CPIM. So with this, I come to the end and thank you all for your patience hearing. And now I invite your questions if you have any. Yes, thank you so much, ma'am. Dear participants, if you have any questions to ask to Sarkar ma'am, okay, okay, ma'am. I think there is no question from the side of ma'am for joining with us on this virtual platform on the occasion of this important and seminal topic, that is a feministic moment in the 21st century. I think it is very befitting a keynote speech to the topic. I personally feel so. You have given information about different waves of feminism, different phases of feminism, and from the beginning to the end up to this time. And that is why we are very grateful to you all for giving such a wonderful presentation on this platform. Thank you so much, ma'am. Now, dear participants, after this keynote speak, running out of time by 1 hour. May I request my colleague, Honorable Dr. Gaikwad sir, to propose a vote of thanks on this occasion of this. Thank you very much, sir. May I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you very much. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय परिषद में मैं सभी शोधार्थियों का और सबका स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ पे आभार प्रकट करने के लिए खड़ा हूं। इस सत्र के उद्घाटक माननीय श्री बीजी पाटिल साहब, जिन्होंने इस परिषद को हमें शुभकामनाएं दी, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस परिषद में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अरुण सावंत सर जी, माजी कुलगुरु जयपुर विद्यापीठ राजस्थान एवं प्रकुलगुरु मुंबई विश्वविद्यालय, मैं सर का भी बहुत आभारी हूं कि वो यहाँ हमारे साथ उपस्थित हुए और हमें मार्गदर्शन किया। इस सत्र के जो बीज भाषक है, जिन्होंने बहुत ही गहराई से और विस्तार से फेमिनिज्म के बारे में हमारे सामने रखा है, वो आदरणीय प्राध्यापक सुनीता एम सरकार मैम, सहायक प्राध्यापक राज्य शास्त्र विभाग, साबंग साजनिकांता महाविद्यालय लुतुनिया, वेस्ट बंगाल से जो हमारे बीच उपस्थित है, मैं मैम का भी बहुत शुक्रगुजार अदा करता हूं। हमारे संस्था के संचालिका एवं उप प्रधानाचार्य डॉक्टर चेतना पाटिल मैडम जी, वह भी हमारे साथ इस सत्र में उपलब्ध है। उन्होंने भी हमें यहाँ अनुमोदित किया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद जी सोनवने, जिनके मार्गदर्शन से हम ये राष्ट्रीय परिषद आयोजित कर रहे हैं, सर यहाँ उपस्थित है। मैं सर का भी तहे दिल से यहाँ शुक्रिया अदा करता हूं। इस सत्र में डॉक्टर बीबी पांडागले, प्रोफेसर नामदेव महाले और जो सुबह से इस सत्र का सूत्र संचालन कर रहे हैं, वो प्रोफेसर भीमराव बंसोडे सर, मैं आप सभी का यहाँ
शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ जो जुड़े हुए शोधार्थी है, विद्यार्थीगण है और जो मान्यवर है, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यह सत्र यहाँ पे अध्यक्ष के इससे मैं यह सत्र समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू Bansote sir. Propose for the thanks over here. Dear participants, soon after this, let me call the Hello, Bansode sir. BS Bansode sir, you are not audible. I think Bansode sir was left. We had, I think, net problem. Gaikwad sir. BS Gaikwad sir. सर, यस सर। बंसोड़ सर आपके साथ हैं? जी नहीं सर, अभी तो सर का नेट आ गया था तो वो चले हैं। अभी मैं उनको कॉल करता हूँ। गोडसे सर, गोडसे सर। यस यस सर। हाँ सर का परिचय दे दो तब तक सर। ओके 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 सर। Professor Ajay Wakmare sir is with us. Okay okay. Yes yes. गोडसे सर बनसोडे सर जॉइन झालेले आहेत आय थिंक मला. Hello. I'm going to start. Yes, sir. I'm going to start. Okay, I'm audible. Yes sir. Yes yes sir. Yes sir. You're audible. Okay. You're audible sir. Welcome to all. Our first session is introductory session is over. Hello. Bansuri sir, I'm audible. Yes sir, yes you are audible. Okay okay. Welcome to all. We have completed one introductory. Hello sir. 1 minute sir. 1 minute. 1 minute. Okay okay. Yeah yes sir. Yes sir. Dear participant, once again, I welcome you all on this platform for the plenary session 1 on behalf of the organizing committee of this national and renowned personalities in the session 1. Telangana State, Professor Ajay Wakmare, and in this session, we have chairperson, Dr. Savita Kanchiram Tait, the SCB College of Commerce. So, at the very beginning of this session, may I request Professor Godse sir, the head of the Department of Marathi, to introduce the resource person of this session. Over to Godse sir. Okay, thank you, Bansuri sir. Welcome to all dignitaries and participants. We have completed successfully our inauguratory session, and we are now in plenary sessions. In these sessions, our resource person is Professor Ajay Wakmare,
He is working in assistant professor of Hindi in Government Degree College, Nirmal in Telangana state. He has completed his post-graduation in Hindi from Osmania University. He has also completed MPhil from Maulana Azad National University, Hyderabad, and he's recently submitted a PhD thesis in Osmania University, Hyderabad. He has published several research papers in national and international journals. He has also published many articles in newspaper. Presently, his work is going on related to translation from Telugu to Hindi. This type of renowned personalities among with us. I am requesting to Professor Ajay Wagmare sir to join this session. Professor Ajay Wagmare sir. ओके सर, मुझे Thank you very सुनाई much, दे रहा है sir. आपको सर? Here, sir, Hello. sunai de rahe hai, sir. Very clearly. Just a minute, sir. We have chairperson of this session, Dr. Savita K. Taide ma'am. I would like to introduce her in a very short manner. Her biodata resume is very vast. Nevertheless, I will over here. Today we have as the chairperson of this session one, that is Dr. Savita Kashiram Taide ma'am, who is assistant professor of Hindi from SNDT College of Art, SCB College of Commerce. The education is MA, MPhil, PhD, and Diploma of Translation, and worked as a resource person in many conferences, published many research papers in international and national. Recipient of Journalist Association Award, Best Educator Award given by IIU Delhi, Atal Bihari Kavya Samman Award, Best Teacher Award, and Nari Shakti Award by Antarashtriya Mahila Manch. Madam has delivered 2 lectures in Japan on religious topic, and she has published 2 books so far. And this kind of a dynamic sir and Dr. Savita Taide ma'am we have in this session. So may I now request Professor Ajay Wagmare sir to take over this virtual dais for the session. Over to Wagmare sir. Okay. Thank you, sir. Bhimrao sir, Yes, sir, Bhimrao yes. Bansode sir. Thank you very much. Arts, Commerce, Science College, Onde, तालुका विक्रमगढ़, डिस्ट्रिक्ट पालघर. इस कॉलेज के संस्थापक VN पाटिल सर, इस कॉलेज के प्रिंसिपल विनोद सोनवने सर, और आज के इस संगोष्ठी के कोऑर्डिनेटर बीबी पानघले सर, और उसी प्रकार इस सत्र की अध्यक्षा डॉक्टर सविता के ताइडे मैडम, और इस सत्र के सूत्र संचालक SN गोडसे सर. आपका सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और इस संगोष्ठी के लिए मुझे आमंत्रित करना यह मेरे लिए एक गौरव प्रधान प्रतिष्ठान है. सबसे पहले तो मैं आज का जो विषय है हिंदी साहित्य, मेरा जो विषय है हिंदी साहित्य में नारी विमर्श, तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ. पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, IPSC डिपार्टमेंट और वुमेन्स डेवलपमेंट सेल जो ये विषय चुना गया है, क्योंकि इस विषय की आवश्यकता हमें आज से ही नहीं, कम से कम 100 साल से ये आवश्यकता हमें पड़ी है कि हमारे देश में, हमारे समाज में नारी की क्या स्थिति है, हम नारी के प्रति क्या सोचते हैं, उसकी कितनी सहायता करते हैं, ये सभी बातें इसमें आते हैं. तो आज के इस विषय में साहित्य और हिंदी साहित्य और स्त्री विमर्श.
साहित्य तो समाज का प्रतिबिंब होता है, यह हमें सबको मालूम है। साहित्य सिर्फ लिखा जाता है, वो लेखन के द्वारा हो या मौखिक के द्वारा हो। लेकिन स्त्री विमर्श, इसमें दो शब्द है, स्त्री और विमर्श। तो विमर्श का मतलब क्या है? साहित्य में विमर्श की क्या जरूरत आती है, ये इसके ऊपर सबसे पहले हमें विचार करना पड़ेगा। क्योंकि विमर्श का अर्थ ये होता है, जो साहित्य लिखा जाता है उस साहित्य के ऊपर बहस होनी चाहिए, और बहस ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से एक सार्थकता बाहर आए, एक मध्यम एक बात सामने आए। तो यही विमर्श होता है। साहित्य तो समाज में जो भी लिखा जाता है उसके होता है, उसके ऊपर लिखा जाता है। लेकिन विमर्श जो है, जो बातें लिखी गई है वो समाज के लिए कितने उसकी सहायता, समाज में कितनी सहायता करती है, समाज के लिए उसकी जरूरत है या नहीं है, ये बातें हमें स्त्री विमर्श में मिलती है। और सबसे पहले तो मैं एक श्लोक, संस्कृत का श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अगर श्लोक हम जहां भी सुनते हैं तो हमें एक पता चलता है कि हमारे देश में नारी को कितना महत्व दिया गया है, और देना भी चाहिए। क्योंकि किसी भी स्त्री के बिना किसी भी परिवार अधूरा होता है, वैसे ही समाज अधूरा होता है, वैसे ही संसार भी अधूरा है। लेकिन हम इस श्लोक के द्वारा जब जानते हैं कि एक स्त्री को हम देवता का रूप दिया गया है, उसको देवता के भांति हमें मानना जरूरी है। लेकिन जब हम समाज की गहराइयों में जब जाते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से इसका विश्लेषण जब करते हैं, तो नारी की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है। हम ऊपर से तो उसका गौरव करते हैं, उसको पूजते हैं, लेकिन उसकी गहराई में उसको एक निचली स्थान के ऊपर, हाशिए के स्थान के ऊपर हम रखते हैं। तो ही आज ये विषय है, नारी विमर्श हो या स्त्री विमर्श हो, हाशिए के स्वर हो, ये शब्द जो है ये पर्यायवाची शब्द है। तो हमें इसमें देखना है कि हम साहित्य में, हिंदी साहित्य का जो शुरुआती दौर है, हम आदिकाल से मानते हैं। आदिकाल हो या भक्ति काल हो, रीतिकाल हो या आधुनिक काल, इस काल में नारी की परिस्थिति क्या थी, हिंदी साहित्य के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं प्राचीन भारतीय वाङ्मय से लेकर आज तक स्त्री विमर्श किसी न किसी रूप में विचारणीय रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक, यानी जितना भी दौर था, उस दौर में हम नारी के प्रति विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन अगर नारी की जो परिस्थिति हो, एक अंश या दो अंश में ही उसमें परिवर्तन आया है, लेकिन जितना परिवर्तन आना चाहिए था उतना परिवर्तन आज भी इस समाज में नहीं आया है। और इसके कारण बहुत से है, इसको एक कारण में हम नहीं देख सकते हैं। इसके कारण धर्म हो या परंपरा हो, इसमें सबसे पहले ये कारण आते हैं। स्त्री विमर्श के अंतर्गत स्त्री की पूरी बनावट, उसके जातीय संस्कार तथा जीवन से उसका संपर्क बिंदु सब कुछ आ जाता है। यानी कि विमर्श में नारी की हर एक बात जो आती है, उसके स्वतंत्र के लिए, उसके अस्मिता के लिए हम क्या कर सकते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम। दुनिया का अगर कोई नियम है तो आकर्षण है। जब एक स्त्री एक पुरुष जब आकर्षित हो जाते हैं तो एक बंधनों में बंध जाते हैं। लेकिन वह बंधन व्यक्ति की या स्त्री की समझ से ही टिक पाता है, ये हमें सबको मालूम है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम है, जिसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रभावित होकर एक साथ जीवन जीते हैं तथा बंधनों में बंध जाते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर अनेक ऐसे प्रश्न हैं, दुविधाएं होती है, जिनका हल ढूंढना संभव नहीं हो पाता है। हम अगर स्त्री की गरिमा की जब बात करते हैं तो उसकी गरिमा, अस्मिता के ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि उसकी प्रगति कहाँ तक हुई है, उसको स्वातंत्र कहाँ तक मिला है। तो
जहां तक साहित्य में नारी विमर्श की बात है तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हमारे देश में जो नारीवादी आंदोलन आरंभ हुआ, उन आंदोलनों से भारतीय साहित्य काफी प्रभावित हुआ। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमारे देश में, हमारे साहित्य में नारी के ऊपर विचार किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि यूरोप और अमेरिका की जिस नारीवाद विचारधारा का प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है, वह पाश्चात्य देशों से ही आया है। तो ये जो आंदोलन है पाश्चात्य नारीवादी आंदोलन से ही हमारे देश में इसका जन्म हुआ है। यह स्वीकार करने के बावजूद कहा जा सकता है कि स्त्री विमर्श कभी तो संसार की समस्त स्त्रियों द्वारा समस्त पुरुषों का विरोध करने वाले विचारधारा के रूप में माना जाता है। तो आमतौर पर हम क्या मानते हैं कि स्त्री विमर्श जो है ये एक पुरुष का विरोध है, यही यहाँ तक ही हमने इसे जाना है। लेकिन स्त्रियों के हक, स्त्री की स्वतंत्रता, उसके सामाजिक बदलाव या आर्थिक स्वतंत्रता, इसके ऊपर भी हमें विचार करना जरूरी है। हम एक और ही विचार नहीं कर सकते, उसके गहराइयों में जाना आवश्यक है। सामने आया तो अभी यह स्त्री के उन्मुक्त सेक्स की वकालत करता है, नहीं तो ये तो पुरुष का विरोध करती है, नहीं तो उसके सेक्स की वकालत के बारे में साहित्य जाना जाता है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श हिंदी साहित्य का एक ज्वलंत प्रश्न है जो देश की आधी जनसंख्या से संबंधित है। तो आज देश की आधी जनसंख्या स्त्री है, तो आधे तो अधिकार उसे होने ही चाहिए, लेकिन उसके अधिकारों को कहाँ तक हमने देखा है ये हम सभी जानते हैं। तो इसके ऊपर एक उक्ति मैं कहना चाहूंगा, संसार समाज सारा जहां घोर हरे नारी का, सब हरे यूं सोचे तुच्छ समझ के चाहे यही, ना बने श्री कृष्ण कोई, बने सब कौरव दुर्योधन, अज्ञात अबला समझ समझ के खिलवाड़ करे सारी सृष्टि। हे नारी तुम क्या जानो, नारी किस पदार्थ का नाम है, इसमें क्या बस बस करती है, इनका आंतरिक रूप क्या है, तुमने बस इतना जाना, पुरुष मेरा ईश्वर खुदा है, कर्तव्य सीखा सेवा गुलामी, दमन की तू पुजारी। तो इस उक्ति से ये पता चलता है कि नारी जो है परंपराओं से बाहर नहीं आ पा रही है। तो जहां तक नारी का जो विषय है उसे विचार करना होगा कि उसके हकों के लिए उसे क्या करना होगा। वह परिवार में हो या पुरुष की दासी बनकर हो, उसे ये बंधन तोड़ना पड़ेगा। जब तक वो बंधन, गुलामी का बंधन तोड़ नहीं पाएगी तब तक उसे स्वतंत्र नहीं मिलेगा। उसका कहना है कि, नारी का कहना है कि उसे स्वतंत्र मिल पाएगा, लेकिन कितने वर्षों से हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र आपको नहीं मिलेगा, आपको उसे छीनना पड़ेगा। यही इस उक्ति का अर्थ है। स्त्रियों की वेदना ही स्त्री विमर्श की जन्मदायी है। यह वेदना साहित्य की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की स्त्रियों की वेदना है। अगर कोई भी साहित्य में अगर जब हम पढ़ाई करते तो वह जो वेदना है इस संसार के हर एक स्त्री की वेदना है। आमतौर पर कुछ इसके जो हक है कहीं भी पश्चिमी देशों में उसको हक ज्यादा मिले, जैसे एशियन कंट्रीज में इसके हक बहुत कम तौर पर हम देखते हैं। जरूरत है समाज को बदलने की जो स्त्रियों की इस वेदना को समझ सके। तो यद्यपि साहित्य स्त्री विमर्श के माध्यम से स्त्री उत्थान काफी कठोर संघर्ष की मांग करता है, यानी कि कठोर मांग करता है कि उसके हक तुरंत मिलने चाहिए, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी हिंदी साहित्य कविता, कहानी, उपन्यास और आत्मकथा के माध्यम से स्त्री विमर्श को अंकन किया गया है। जैसे हिंदी साहित्य में भी पश्चिमी साहित्य की तरह ही इसमें कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो और स्त्रियों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, ये एक बड़ा विषय है। और हिंदी साहित्य में दलित साहित्य, स्त्री साहित्य के बिना दूसरा कुछ नहीं बचा है। इसलिए जिन्हें पढ़कर स्त्रियों की वेदना को समझा जाए तथा समाज की स्त्रियों को पुरुष के समान भागीदारी दी जाए। तो इसका एक ही है कि स्त्रियों को पुरुष के समान भागीदारी जब तक नहीं मिलती है तब तक
किसी स्त्री विमर्श का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। यदि भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए तो वैदिक काल से लेकर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में हिंदी साहित्य समाहित हो जाता है। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर उससे पहले ही से ही शुरू होता है, वैदिक काल से शुरू होता है। वैदिक काल में महाराजा मनु का कहना है, देखिए, कि एक पुरुष की मानसिक स्थिति किस तरह है, नारी के ऊपर हावी होती है, यह हमें पहले से ही पता चलता है। मनु कहते हैं, पति रक्षिति कोमरे, भर्ता रक्षिति यौवन, पुत्र स्ववीर भावेना, स्त्री स्वतंत्र ही। अर्थात स्त्री की रक्षा करने वाला बचपन में पिता होता है, युवावस्था में पति होता है, और बुढ़ापे में वह पुत्र के द्वारा रक्षित की जाती है। कि नारी की रक्षा वो खुद करे, वो पुरुष के ऊपर कतई वो आधार बनकर ना रहे। लेकिन मनु कहते हैं कि ये एक षड्यंत्र था पुरुष का, कि स्त्री को किस तरह दबाया जाता है। आचार्य शंकर ने तो इतना तक कह दिया, स्त्री को नरक का द्वार कहा जाता है। नरक का द्वार स्त्री को कहा जाता है। लेकिन स्त्री के बिना ये समाज अधूरा है, ये आज तक हम जान नहीं पाए हैं। हम इस परंपरा में, इस ग्रंथों में ही उलझे रहे हैं। ऐसे समय श्री कृष्ण भक्त मीराबाई का पितृसत्तात्मक समाज को विरुद्ध जाकर अपनी निजता के अनुभव जीवन यापन करना बहुत आश्चर्य की बात है। तो देखो, समाज में इतनी गहराई तक ये कुंठी फैली हुई है, तो उसमें श्री कृष्ण भक्त मीराबाई वो खुद अपने हिसाब से जीना चाहती है, अपने हिसाब से वो परिवर्तन करना चाहती है। तो ये एक हिंदी साहित्य में पहला परिवर्तन हम मान सकते हैं। लेकिन उसी ही दौर में तुलसीदास कहते हैं कि स्त्री को पराधीन मानते हुए उन्हें पशुओं की तरह देखा गया है। तो तुलसीदास तो ये कहते हैं कि स्त्री ताड़न की अधिकारी है। तो ये क्यों कहा गया है, इसका विरोध हमें खुलकर करना होगा। वो कोई भी हो, स्त्रियों के प्रति अगर ऐसी बातें लिखता है तो उसका खुलकर ही विरोध करना पड़ेगा। तो ऐसी कोमल हृदय तथा कोमल धारणा स्त्रियों के प्रति किस अन्य कवि की रही है, ये तो मुझे पता नहीं है। जब रीतिकाल की जब आती है, रीतिकाल का जो समय है 1375 से शुरू होता है। रीतिकाल में स्त्री को केवल भोग की वस्तु माना गया है। अगर हम रीतिकाल का सारा काव्य अगर पढ़े तो स्त्री की नक्शिक वर्णन किया गया है, स्त्री के सौंदर्य का ही वर्णन किया गया है, लेकिन उसके हकों का वर्णन कहीं नहीं कहा गया है। ये भी एक हम षड्यंत्र समझते हैं। रीतिकाल में कवियों ने नारी के उद्गार वासनात्मक तो प्रकट किया ही है, साथ ही विभिन्न जातियों की नायिकाओं का वर्गीकरण भी किया है। लेकिन इस काल की ये एक प्रासंगिकता है कि इसमें नारी को ही, नारी के भी अलग अलग परिस्थितियों को लिखा गया है। जैसे दलित नारी हो, निम्न वर्ग की नारी हो, उसके हक किस तरह हमें प्रदान कर सकते हैं, इसमें एक ये बात सामने आकर ठहरी। मध्य युग में तो स्त्री पति के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी। स्त्री को रीतिकाल में आदर नहीं मिला था। स्त्रियों सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, कन्यावध जैसे कठिनाइयों से जूझती रही। तो इस काल में बहुत सारे नारी के ऊपर, जैसे मैंने कहा, बाल विवाह हो, बहुपत्नी हो, ये सभी प्रथाएं उस काल में चलती थी। लेकिन इस काल में ही नारी की प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए जैसे राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र हो, विद्यासागर हो, स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भरकस प्रयास किया है। ये रीतिकाल तक आते आते की बात है। और उसके बाद आधुनिक काल में जब आते हैं तो हम फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, अम्बेडकर, इन्होंने इनके हकों के लिए बहुत सा काम किया। जब आधुनिक काल में जब हम पदार्पण करते हैं, सन 1900 से लेकर आज तक का जो काल हम आधुनिक और उत्तर आधुनिक काल के समझते हैं। आधुनिक काल की बात की तो स्त्री शिक्षित है, शिक्षित, कामकाज अधिकारी के प्रति सजग तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, परंतु कहीं ना कहीं वह मानसिक घुटन को अपने अंदर महसूस करती है। आज के युग में अगर हम नारी के बारे में विचार करें तो उसके पास सभी है, वो शिक्षा का ग्रहण कर रही है, नौकरी कर रही है, हर जगह वो अपनी कामयाबी
पुरुषों के सामने रख रही है। लेकिन इतना होते हुए भी उसके मन में एक प्रकार की आशंका है, एक घुटन है। वह घुटन क्या है, हम आधुनिक काल के अलग अलग ग्रंथों में हम इसको देखेंगे, उपन्यास हो, कहानी हो, उसमें देखेंगे। पुरुष प्रधान समाज ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अनुगमन करने वाली स्त्री एक दिन लॉ कॉलेज चलाएगी, नारीवादी नारे लगाएगी तथा अंतरिक्ष में जाएगी। पुरुष का परंपरागत मन स्त्री के अधिकारों को स्वीकार नहीं कर पाता है। स्त्री का सजग होना उसे स्वीकार नहीं है। वह आज भी स्त्री को परंपरागत कुललक्ष्मी वाले स्वरूप को ही ढूंढता है। तो ये एक सच्चाई है आज के समाज की। अगर उसके बलबूते पे ही वो प्रगति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पुरुष समाज हो, पुरुष समाज का कतई प्रति उसका भाग मैं नहीं मानता। तो स्त्री अपने बलबूते के ही ऊपर ही आज इस स्थिति में पहुंची है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर उसके पास कितनी भी सुविधा हो, अगर वो मानसिक सुख प्राप्त नहीं कर पाती, मानसिक संदर्भ में उसकी हाल क्या है, अगर वो मानसिक स्वतंत्र में अगर जाती है तो हम इसका स्वागत करेंगे और वही सबसे नारी की प्रगति के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा। नारी विमर्श को आधुनिक काल में कविता, उपन्यास एवं कहानी के व्यापक तौर पर देखा जा सकता है। आधुनिक काल के साहित्य में स्त्री विमर्श के माध्यम से स्त्री उत्थान की संरचना काफी कठोर संघर्ष की मांग करती है। लेकिन हम आधुनिक काल के सभी साहित्य को जब देखते हैं तो इसमें एक कठोरता दिखाई देती है। एक तरफ तो वो नारी की जो उदासीनता है, उसके ऊपर किस तरह के अन्याय हो ये देखा जाता है, लेकिन दूसरी ओर वो किस तरह स्वतंत्र के प्रति अग्रसर हो सकती है, वो अपने आर्थिक स्वतंत्र में किस तरह सामने जा सकती है। ये बातें हमें साहित्य में दो धाराएं दिखती है, एक नारी का उत्पीड़न और उस उत्पीड़न से बाहर आने के रास्ते। तो इसमें एक मैं द्विवेदी जी की एक उक्ति आपके सामने रखना चाहूंगा। द्विवेदी जी ने नारी के पक्ष में समर्थन करते हुए लिखा है, पति को देवतुल्य हम माने, बच्चों को भी दासी है, सेवा सदा करे नहीं सोचे, भूखी है या प्यासी है। तो देखो और एक बार पढ़ता हूं मैं। द्विवेदी जी कहती है कि पति को देवतुल्य हम माने, बच्चों को भी दासी है, सेवा सदा करे नहीं सोचे, भूखी है या प्यासी है। हे भगवान, हम 30 भर भी उपेक्षा कैसे पाती है, शेष तुल्य ताड़न अधिकारी हम बनाई जाती। तो देखो उनके संदर्भ में द्विवेदी जी ने एक महत्वपूर्ण उक्ति लिखी है। तो वो कहते हैं कि एक स्त्री इतना करने के बाद भी ताड़न की अधिकारी कैसे बन जाती है। वो परिवार की, बच्चों की, पति की, सबकी सेवा करने के बाद भी वो ताड़न की अधिकारी बन जाती है। तो इसका उत्तर हमें मध्यकाल में तुलसीदास से मांगना चाहिए था, लेकिन अभी तो दौर बदल गया है। हम ये आज भी उनका खंडन कर सकते हैं। आधुनिक युग के कुछ कवियों ने हमें नए क्षितिज के कुछ आभास मिलते हैं। आधुनिक युग में जो आज का जो युग है, हम आधुनिक युग कहा जाता है, उसमें अलग अलग देखिए, जैसे गोपाल शरण सिंह की मानवी, राम नरेश त्रिपाठी की मिलन, पथिक आदि काव्यों में इसका संकेत मिलता है। कुमारी मधु के एक गीत की इन पंक्तियों में इस नवीन विचारधारा का समर्थन नारी की ओर से मिलता है। जो आधुनिक युग है, आधुनिक विचारों का युग भी माना जाता है। तो एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा मैं। एक तुम्हारे ही परिचय की सीमा में बांधकर रहूं, इतनी लघुता का वरदान ना आज मुझे स्वीकार है। तो नारी कह रही है कि एक तुम्हारे ही परिचय की सीमा में बांध कर रहूं, इतनी लघुता का वरदान ना आज मुझे स्वीकार है। तुमसे आज स्वीकार नहीं है। वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती है और वो अपना खुद का रास्ता ढूंढना चाहती है। तो उसको किसी परिचय का मोहताज ना समझो। मेरे पैरों में जंजीर ना बांधो तुम अपने अधिकारों से, विहंगी की उन्मुक्त गगन में उड़ने की अभिलाषा आज है। तो देखो वो किसी भी अधिकारों से जंजीरों में बंधना नहीं चाहती है। ये आधुनिक काल की स्त्री है, नारी है। तो हम देखें तो आधुनिक काल में जो उसके जो हक है वो
अधिक कठोरता के साथ पुरुषों के सामने रखती है। हाँ, फिर वास्तव में साहित्य और समाज दोनों में भी ही स्त्री की जीवन की समस्या को दर्शाया गया है। साहित्य हो या समाज हो, हर एक इसमें नारी की बात होती है। साहित्य में नारी की ममता तथा कर्तव्य निष्ठा, एक समर्पण की विभिन्न रूपों में जिस प्रकार का स्त्री विमर्श पाश्चात्य साहित्य में 60 और 70 के दशक में देखा जाता है, लगभग उसी से मिलता जुलता हिंदी साहित्य में भी दिखाई देता है। स्त्री विमर्श भारतीय साहित्य में मिलता है। भारत में सीमांतनी उपदेश नामक एक पुस्तक आई थी। भारत में एक पुस्तक, ये 125 वर्ष पूर्व ये एक पुस्तक आई थी। अज्ञात हिंदू औरत ने 125 वर्ष पूर्व ये पुस्तक लिखी थी और इसका जो अनुवाद है 1862 में धर्मवीर भारती ने संपादित किया था। इसमें स्त्री को पुरुष के विरुद्ध नहीं खड़ा किया गया, बल्कि पुरुष के सहयोग से ही स्वास्थ्य समाज का निर्माण करने की प्रेरणा दी गई है। तो ये बात सही है कि पुरुष के सहयोग के साथ ही स्त्री अपने हकों को ले सकती है। महादेवी, इसके बाद महादेवी वर्मा का ये हम कथन देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियां, जिसकी रचना 1914 में हुई थी, इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि स्त्री का केवल रमणीय भार्या ही नहीं, बल्कि उसके पत्नीत्व, मातृत्व का भी सम्मान करना पड़ेगा। मृणाल पांडे ने भी अपनी पुस्तक में ग्रामीण एवं शहरी घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के दुख दर्द को प्रभावशाली ढंग से रेखांकित तो किया ही है, साथ ही साम्यक दृष्टिकोण विकसित भी किया है। इसके ऊपर मैं एक मृणाल पांडे की इस पुस्तक में ग्रामीण जीवन की स्थिति और शहरी जीवन, शहरी स्त्री, इसके ऊपर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। क्या एक प्रश्न है, ग्रामीण स्त्री और शहरी स्त्री की समस्याएं एक ही है? तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आज राजकीय में क्या सोनिया गांधी की हो और ग्रामीण में रहती है, स्त्री की एक ही समस्या नहीं हो सकती है, इस समस्या में अंतर है। तो यही मृणाल पांडे ने इस पुस्तक के माध्यम से हमारे सामने रखा गया है। सन 1975 में क्षमा शर्मा ने स्त्री का समय पुस्तक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाया तथा कहा कि घरेलू स्त्रियों को भी एक साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी एक मैं प्रतिक्रिया रखना चाहता हूँ। जैसे 8 मार्च को महिला दिवस था, महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को सभी को गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी दी गई। क्या उसको घर में छुट्टी मिलती है? नहीं मिलती है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक उसे जो बुनियादी स्थिति है वहां जब तक उसका आदर नहीं होगा, तब तक उसकी मानसिक स्थिति दूर नहीं हो सकती। तो हिंदी के आरंभिक उपन्यास, हम जब उपन्यास की जब बातें करते हैं तो उपन्यास के जो उद्भव और विकास हुआ है वह नारी की समस्या से हुआ है। जैसे हिंदी साहित्य की पहली कहानी देवरानी जटानी की कहानी, वामा शिक्षिक, भाग्यवती आदि उपन्यासों में स्त्री चेतना की मूलधार है, यानी स्त्री चेतना का ही इसमें विषय है। 1960 के दशक में उषा प्रेमवा द्वारा लिखा गया उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका के द्वारा नारी की नई पहचान को प्रस्तुत किया गया है। उस दौर में इस उपन्यास की पात्र राधिका को समझने के लिए आम साहित्यकार को पाठक से अलग हटकर सोचना पड़ेगा कि जब तक हम पारंपरिक विचारों में जब तक रहते हैं तब तक हम नारी के प्रति खुले दिल से विचार नहीं कर सकते। इस परंपरा से हमें बाहर आना होगा, तभी हम नारी की प्रगति के लिए हम विचार कर सकते हैं। तो ऐसी नारी की कल्पना नहीं की जो स्वयं अपने लिए जीवन साथी की तलाश करे। तो इसके बाद हम जब उपन्यासों में जब आते हैं, राजी सेठी का एक उपन्यास है मैं तो जन्म ही, मैं भी उसकी नारी पात्र स्वयं को अचंभित मानती है कि उसे शादी करके अपना परिवार बसाना है, यही उसका जीवन का उद्देश्य है। तो इस उपन्यास में दिखाया गया है कि नारी का उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य घर बसाना, शादी करना, बच्चों का पालन पोषण करना, बहुत ही चातुर्य ढंग से इस उपन्यास में एक कटाक्ष किया गया है आज के समाज के ऊपर। और फिर आगे हम देखते हैं मंजुला भगत की अनारो निम्न वर्ग की मेहनत कश महिला है जो अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी कर गुजारने को तैयार है। तो आज का जो नारी है वह एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही, वह अस्मिता की लड़ाई लड़ रही, वह अस्मिता
उसे तो सब कुछ मिला है, लेकिन वो अस्मिता की ओर देख रही कि उसकी पहचान इस समाज में क्या है, और उसकी पहचान जो है उसके बलबूते पर ही मिले, या परिवार हो, या उसको उसके परिचय का मोहताज वो खुद बने, यह इस उपन्यास में दिखा गया है। अब फिर एक उपन्यास है मैत्री पुष्पी के आत्मा कबूतरी। कुछ इसी तरह के पात्र है जो अपने जीवन में अपमान सहने के बाद भी समाज में टकराने का साहस करती है। यानी कि जब आदिकाल हो, भक्ति काल हो या रीति काल में हो, नारी साहस नहीं करती थी, लेकिन जब आधुनिक जब काल आता है तो वो साहस करने लगी है, वो हर एक बंधनों को तोड़ने लगी है। या ऐसा भी एक वर्ग है, ऐसे जो बंधन को तोड़ने वाली नारी को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया है। हम देखते हैं जैसे केरल में हो, वो मंदिर की जो दशा थी, बहुत सारे नारियों को एक प्रकार से ठुकराया गया है, लेकिन ये कोई भी नहीं कहता है कि वो नारी ही सही थी, वो अपने हकों के लिए ही लड़ रही थी। उसकी जीवितांत के कारण नारी चेतना जागरूक होती दिखाई है। तो आज नारी जागरूक है और वो अपने हिस्से के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। एक स्तर पर वह विमर्श हिंदी उपन्यासों में चित्रित स्त्री के जीवन पर केंद्रित है कि स्त्री की दशा में सुधार, स्त्री सबलीकरण, स्त्री मुक्ति तथा स्त्रीवादी के रूपों में है। तो मैंने ये बात पहले ही कही है कि हिंदी साहित्य में दो प्रकार की रचनाएं हैं। एक प्रकार की रचनाओं में क्या दिखाया गया है कि स्त्री का जीवन क्या है। वो कहानी उपन्यास में तो केंद्रित होती है कि स्त्री की दशा में सुधार, स्त्री सबलीकरण, स्त्री मुक्ति तथा स्त्रीवाद के रूपों में ही उसे वो लेखन हुआ है। लेकिन दूसरी ओर आज जो आधुनिक काल का जो लेखन है उसमें स्त्री अनुभव, यानी जब हम देखते हैं कि आत्मकथाओं में स्त्री के अनुभव क्या है, तो अनुभव तो वही लिख सकती है, हम तो नहीं लिख सकते हैं इसके साथ किस प्रकार के अन्याय है। स्त्री चेतना और स्त्री स्वतंत्रता की मांग के रूप में सामने आती है। इस समय के रचनाकारों ने अपने उपन्यासों में ऐसी पात्रों को सामने रखा है जिनके द्वारा नारी चेतना जागृत होती दिखाई देती है। तो ऐसे ही उपन्यास आए हैं। इस उपन्यास में जैसे समाज में नारी निडर होकर जब सामने आ रही है, तो उपन्यासों में भी ऐसे बहुत सारे चरित्र है, वैसे वो अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुकी है। नारी सशक्तिकरण के जो प्रश्न समाज में प्रकट हो रहे हैं, उसमें स्त्रियों के जीवन यापन के ढंग भी बदल रहे हैं। लेकिन ये एक रूप हमारे सामने आ रहा है, वह एक पारंपरिक वेशभूषा से बाहर आ रही है, और उससे हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसा भी वर्ग है इसके इस रूप का विरोध करना चाह रहा है। वो कैसे जिए, वो क्या खाए, वो उसका रहन सहन कैसा हो, उसका अधिकार है के ऊपर। हाँ, हम समाज के जो ठेकेदार है उसके ऊपर ये जोर ना दे। आज साहित्य में भी महिला आंदोलन द्वारा उठाए गए मुद्दे प्रमुखता के उभर रहे हैं। ऐसे अनेक पुरुष एवं महिला कहानीकार है जिनमें राजी सेठी, ममता कालिया, SR हनवटी, इंदिरा राय, जया जदवानी, ऐसे आधुनिक काल की कहानीकार है। निमिता सिंह, सुधा अरोड़ा, सुषमा बेदी, क्षमा शर्मा, मैत्री पुष्प, सूर्यबाला, प्रभा खेतन, चित्रा मुर्दुगल, उन्होंने अपनी कहानियों के द्वारा स्त्रियों में किस तरह चेतना आ सकती है इसके ऊपर उन्होंने जोर देकर लेखन किया है। मैं नारी को केंद्र में देखकर उसके प्रति कलम चलाई है। राजी सेठी की यह कहानी नहीं नामक कहानी संग्रह में 10 कहानियां हैं जिनमें पुरुष नारी के संबंधों को सूक्ष्म चित्रण किया गया है। उसके बाद उज्जवल भट्टाचार्य ने अपनी परिवार नामक कहानी में एक परिवार का चित्रण किया है जिसमें माँ बाप, बेटी बेटा के संबंधों के माध्यम से सच्चे परिवार का उल्लेख किया गया है। तो इस कहानी के द्वारा ये दिखाया गया है कि एक परिवार किस तरह नारी की इर्द गिर्द ही उसकी प्रगति ठहरी है, वह इस कहानी के द्वारा दिखाया गया है। फिर आगे देखते हैं, कमलेश्वर की एक कहानी है विद्रोह सिन्हा में फिर भी नामक फिल्म बनाएगी। फिल्म बनाएगी, इसमें अपने स्वर्गीय पिता के स्नेह से अग्रस्त नायिका ने अपने प्रेमी को स्वीकार नहीं कर पाती और ना ही अपने माँ, मित्र तथा प्रेमी को। इस संसार में कोई पुरुष संपूर्ण नहीं होता है, पूरा सुख किसी को भी
नहीं मिलता। आधा सुख मिलता है, आधे ही कल्पना करनी पड़ती है। अगर आज की नारी आधे सुख की कल्पना भी करे ले तो यह समाज उसके लिए उसके लिए विशिष्ट को खंडित नहीं कर सकता। तो इसका कहने का अर्थ है, तो हम अगर परिपूर्ण भी स्वतंत्र ना उसको, अगर वह आधे भी स्वतंत्र उसको मिलती है तो उसका जीवन सुखमय होगा। तो ये कहने का अर्थ यह है कि उसकी जो स्वतंत्र है, उसके जो हक है, हम 50% भी आज तक उन्हें दे नहीं पाए हैं। तो उसके बाद हम रामधरी दिन सर का चोर दरवाजे कहानी का उल्लेख करेंगे। बड़की समाज सेविका के रूप में चित्रित की गई है। तो आज स्त्रियां समाज सेवा भी कर रही है। बहुत सारे ऐसे स्त्रियां हैं जो समाज के लिए अपना पूरा संघर्ष कर रही है। इनकी एक अन्य कहानी जहाँ जोर बराए दिन रात थी, कहानी में कुसुम भी सेवा परायण तथा सत्यमयी नारी के रूप में चित्रित किया गया है। तो सत्यमयी नारी सेवा परनय आदि इस कहानियों के द्वारा नारी को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। और आदर्श पति परायण सेवा परायण नारी की परोपकारिता का आदर्श प्रस्तावित करती है। जैसे लोग कहते हैं कि लड़ूंगी या गाऊंगी उसके लिए, तो ये कहने का संदर्भ यह था कि अगर हम समकालीन कथा लेखिका कृष्ण सोबती का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी कथा साहित्य में नारी के विविध अंतर्द्वंद्व, कुंठाओं, वर्जनाओं तथा पीड़ा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने अपनी कहानियों में स्त्रियों के जीवन की ऐसी प्रस्तुत किया है जैसे वह परिस्थितियों से समझौता करती है, बाद में उसे भाग्य समझकर घुटन फेंक देती है। तो ये सबसे पहला है कि अगर स्त्री यही मेरा भाग्य है समझकर अगर रह जाती है तो उसे अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा, अधिकारों से दूर रहना पड़ेगा। भाग्य उसी को ही बदलना है, भाग्य दूसरा आकर को ही बदल नहीं पाएगा। सुधा अरोड़ा कहती है कि कहानी रहोगी तुम वही कि नारी उच्च शिक्षित होकर भी वह पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था की गुलाम बनी। तो देख सुधा अरोड़ा की ये कहानी में यह दिखाया गया है कि नारी तो आज सर्वांगनी है, वो शिक्षित है, वो नौकरी करती है, लेकिन सब रहने के बाद भी पुरुष की गुलाम बनी हुई। इसके इस गुलामी से उसको बाहर आना जरूरी है। पहले जमाने में स्त्रियों के घरेलू काम थे, उल्टे आज के जमाने में स्त्रियों को और अधिक काम हो गए। इस कहानी में दिखाया गया है पहले तो स्त्रियों के ऊपर पहले भी हो आज भी हो, वो गुलामी के दायरे में भी है, लेकिन आज वो काम करते हुए, नौकरी करते हुए भी परिवार का पोषण पालन करती है, बच्चों का ट्यूशन वो खुद लेती है। तो इसके संदर्भ में इस कहानी में एक बात इस कहानी की मैं समझता, अब मुझसे उम्मीद मत करो, पति कह रहा है, अब मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं थका मौंदा लौटकर बच्चों को गणित पढ़ाने बैठूंगी। तो वो उस कहानी की नायिका कह रही है तो आज जो है वो अपने बच्चों का भी पालन पोषण करते हुए उसकी पढ़ाई में भी उसको सहभाग दे रही है। तो ये एक प्रकार से पुरुष और स्त्री दोनों ही करना चाहिए था, लेकिन स्त्री ही इसमें अग्रसरी है। एमए की गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुमसे अपने ही बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो पति कह रहा है कि तुम तो एमए की गोल्ड मेडलिस्ट हो और तुम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती हो। ये इसके ऊपर पति की प्रतिक्रिया है। तो किसी एक षड्यंत्र की तरह एक स्त्री को घरों में हो इसमें दबा कर रखा गया, इस कहानी के द्वारा हमें दिखता है। आगे बढ़ते हैं हम। स्त्री विमर्श साहित्य के रूप में देखें तो साहित्य मानव चेतना की अभिव्यक्ति करता है। महिला साहित्यकार से यह भी अपेक्षा रहती है कि वह पुरुष सत्तात्मक समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभाए। तो नारी पुरुष समाज के अपेक्षा को बदलने की अभिव्यक्ति बदलने के लिए तैयार होनी चाहिए, यानी कि वो ये पुरुष प्रधान समाज है, ये पितृसत्तात्मक है, इससे उसे बाहर आना पड़ेगा। जब तक वो इसमें बदलाव नहीं करेगी तब तक उसे हकों से वंचित ही रहना पड़ेगा। जया जदवानी की रचना संसार नारी को केंद्र में रखकर उसके इर्द गिर्द फैला हुआ है। एक ओर वो पुराने संस्कारों में लिपटी हुई है तथा दूसरी ओर आधुनिकता को स्वीकार करके स्वच्छंद तथा पूर्ण जीवन जीने वाली नारी है। तो नारी के
दो पक्ष है। एक जो पक्ष है वो परिवार हो या अपने अधिकार हो उसके अंदर ही सिमट कर रही है, और दूसरा एक पहलू है वो कि इसको स्वीकार नहीं करती है, वो आधुनिकता की ओर जाती है और स्वच्छंद पूर्ण जीवन जीना उसके लिए ही महत्वपूर्ण है। तो ये दो धाराएं हिंदी साहित्य में हमने देखी है। तो इस शोध का हम निष्कर्ष यह निकालते हैं कि वास्तव में साहित्य और समाज दोनों में ही स्त्री जीवन की समस्याओं को दर्शाया गया है। समाज हो या साहित्य हो, इसमें नारी के प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए, उसके अस्मिता के लिए, उसके पहचान के लिए ही प्रयत्न किया गया है। साहित्य में नारी की ममता तथा कर्तव्यनिष्ठ एवं समर्पण की भावना हमें दिखाई गई है। साहित्य में समर्पण हो, उसकी कर्तव्यनिष्ठता हो, यही हमें दिखाया गया है। नारी को बार बार अविश्वास की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। स्त्री सशक्तिकरण के जो प्रश्न समाज में प्रकट हो रहे हैं, स्त्रियों के जीवन यापन के ढंग भी बदल रहे हैं। यानी कि समाज में जिस तरह का सशक्तिकरण स्त्री में आ रहा है, उससे उसके रहन सहन, उसके विचार में भी बदलाव आता है। इसलिए साहित्य स्त्री विमर्श के माध्यम से ही संदेश दे रहा है। तो यह मेरा शोध प्रबंध था। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक पुरुष की मानसिक स्थिति जब तक बदल नहीं पाएगी, तब तक स्त्री को अधिकार नहीं प्राप्त हो सकेंगे। हमें इस परंपरा से, धर्म की जो बातें हैं, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और स्त्रियों को जैसे अगर उसको अधिकार चाहिए, उसको पहचान चाहिए, अस्मिता चाहिए, तो ये परंपरा के जो दायरे है, उस दायरे से हमें बाहर आना पड़ेगा। तो मैं कॉलेज के सभी कमेटी को, प्रिंसिपल सर को और कोऑर्डिनेटर सर को, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, और आपका मुझे यहाँ बुलाया और मेरी बातें सुनी गई है, इसके लिए मैं सभी कॉलेज के सभी सदस्यों को आभार प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर जी। आप बिजी शेड्यूल में से आप के वो महाविद्यालय में एग्जाम चालू है, फिर भी हमारे लिए आप टाइम दिए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से दलित साहित्य और स्त्री विमर्श जो है अच्छी तरह से हमें समझाए और बहुत ही अच्छी तरह से आप बातें रखी है। शुरुआत से लेकर ये अभी तक जो अपने साहित्य में हो रहा है वो सब है। आपकी बात बहुत अच्छी लगी है हमें सर। अभी मैं अपने सत्र के सेशन चेयरपर्सन है डॉक्टर सविता काशीराम ताइडे मैडम, मैं उनको गुजारिश करता हूं कि ये सत्र पर अपने व्यू रखे मैडम। जी सर, ओवर टू डॉक्टर सविता ताइडे मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। धन्यवाद। आवाज आ रही है सर मेरी? जी यस सर, यस मैम आ रही है। आज सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। आज के आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज ओंडे तालुका विक्रम जिला पालघर, इस कॉलेज में बहुत ही बढ़िया इस विषय का चुनाव किया है। उनके फाउंडर बीएन पाटिल सर, प्राचार्य। आपकी आवाज नहीं। हेलो, एक मिनट सर। मैम, यू आर ऑडिएबल। यस ओके, यस यू कैन कंटिन्यू। यस ओके सर। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? बनसोडे सर। यस सर। बनसोडे सर तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे फक्त। नहीं आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। विशाल सर प्लीज कोऑर्डिनेट। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, ठीक है। हाँ, फाउंडर इस आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज ओंडे तालुका विक्रम जिला पालघर के फाउंडर, इस महाविद्यालय के फाउंडर बीएन पाटिल सर, प्राचार्य विनोद सोनवणे सर और सारे डिग्नेटरीज, आज के सूत्र संचालक गोडसे सर, और जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया ऐसे डॉक्टर भीमराव बनसोडे सर, सारे पदाधिकारी
जहां उपस्थित मंच, ऑनलाइन मंच, आपके सबके प्रति मैं नमन करती हूँ। और आज के जो वक्ता रहे हैं अभी इस सत्र के, उनको मैं प्रथम साधुवाद देती हूँ कि बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। विषय ऐसा था कि 21वीं सदी में महिला आंदोलन की प्रासंगिकता। अब ये प्रासंगिकता क्यों? प्रासंगिक तो हमेशा निरंतर रहा है ये विषय, क्योंकि आंदोलन की जो भूमिका है वो मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होगी। स्वरूप भला ही उसका बदल जाएगा, पर ये खत्म कतई नहीं होगी। तो हमारे जो आज के वक्ता थे, उन्होंने बहुत ही प्रोफेसर अजय वाघमारे जी, उन्होंने बहुत ही तरीके से शुरू से लेकर अंत तक, मतलब आदिकाल से लेकर अभी तक उन्होंने जो बयान किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया, ऐसा मैं मानती हूँ। इसलिए मैं वो अवश्य धन्यवाद के भी पात्र है। उन्होंने कहा कि जो साहित्य है वह हिंदी साहित्य है, वह पाश्चात्य देशों के प्रभाव से हम चल रहे हैं। परंतु सर कहीं ना कहीं हमें यदि बहुत पीछे हम जाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध के साहित्य में या उनके समय में हमें थेरी गाथा जो है वो पढ़ने को मिलती है, और वह जो थेरी है वह अपनी जो व्यथा है उस गाथाओं में वह बताती है। तो वो हमें कहीं ना कहीं पाश्चात्य देशों का अनुकरण न करते हुए हमारे ही देश में हम देखें तो हमें पता चलेगा कि नारी आंदोलन की शुरुआत जो है वह वहीं से होती है, और भगवान बुद्ध के समय से थेरी गाथाओं से मैं मानती हूँ इसे। स्त्री की जो वेदना है, स्त्री की जो समस्या है, वह मैत्रेयी, गार्गी और इनका नाम तो हम सुनते हैं, परंतु संत साहित्य में आते आते हम पश्चिम में, दक्षिण में यदि हम देखते हैं वह अंडाल, और हम महाराष्ट्र में और पश्चिम में यहाँ पर मध्य देश में देखते हैं, राजस्थान में तो मीरा। ये दो ही नाम हमारे समक्ष आते हैं। और मीरा का जो मतलब हमें ये कहना चाहिए कि ये मृत व्यक्ति के साथ प्रेम करना, मतलब भक्ति करना, वह भी गवारा नहीं था उस समय। और मीरा ने वह एक ख्याति निर्माण की कि मैं भी भक्ति कर सकती हूँ। इसके लिए मेरा कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से है इसे दर्शाया ही है। परंतु स्त्री की जो व्यथा है कि एक मृत देवता के प्रति, पुरुष देवता के प्रति भी वह भक्ति नहीं जता सकती थी, वह आंदोलन मीरा ने किया है। और वो मैं मानती हूँ कि वो हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी आंदोलन करता है। आधुनिक काल में सर बहुत अच्छा समय हो गया कि चलो स्त्रियों के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है, बहुत सारे समाज सुधारकों ने काम किया है, इसके लिए जो है वह स्त्री अपनी बात रख है। परंतु मीरा के लिए मेरे ख्याल से वो बहुत ही कठिन बात थी और मीराबाई ने वह रखी है। इसके लिए हमारी जो हिंदी साहित्य की जो धरोहर है वो बहुत ही बेहतरीन अपनी बात रखने वाली के रूप में मैं मीरा को मानती हूँ। और सर ने भी बहुत अच्छी तरह से उसका जो बयान है वो किया है। सर ने जैसे कहा कि रीति काल में स्त्री जो सर नदारत है, आपने भी कहा और मैं भी ये मानती हूँ कि एक भी स्त्री का नाम नहीं आता है, क्योंकि ये दरबारी साहित्य था और दरबार में कोई स्त्री को जो है वो अलाउ नहीं किया गया। स्त्री को किसी भी दरबार में कवयित्री के रूप में या राजा के कोष में उसको नहीं रखा गया। खेत की बात मैं मानती हूँ कि हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा समय, 200 साल का समय हम यदि रीतिकाल को देते हैं तो एक ऐसी एक स्त्री उभर कर उसमें नहीं दिखाई देती है। ये खेत की बात है हमारे लिए। फिर भी हम हिंदी साहित्य को हम बहुत ही आधुनिक काल में यदि हम देखें तो इसकी शुरुआत जो है जैसे आपने कहा है कि राजा राम मोहन राय जैसे सत्य प्रकाश के माध्यम से हो या और कई भारतेंदु के आगे भारतेंदु जी के माध्यम से हो, स्त्री के ऊपर उन्होंने बल दिया है। थोड़ा सा कम रहा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस पर सोचा विमर्श किया है। जैसा आपने द्विवेदी जी का जिक्र किया था तो थोड़ा थोड़ा आ रहा था। देवरानी जिठानी का आपने जिक्र किया है, तो देवरानी जिठानी के हम यदि पढ़ते हैं सर तो केवल घर तक ही सीमित रखा, जैसे जिस प्रकार के देवरानी जिठानियों के घर में जो औधा होता है उसे ही दर्शाया गया है। आगे उसको मुझे नहीं लगता कि
उसे पुरुष के बराबर रखा गया है। ठीक है, वो मतलब परिवार की एक धरोहर है। जैसे रथ के पहिए होते हैं, रथ की पहियों की एक पहिया है, परिवार का एक पहिया है, परंतु उस समय में हो सकता है कि उनकी भी कुछ मजबूरियां रही हो, या उस समय का उस तरह का माहौल न मिला हो उनको। लेकिन हम आगे देखते हैं कि आधुनिक समय में सुभद्रा कुमारी चौहान और आगे के जो लोग देखते हैं, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी स्त्रियों की बात जो है वह रख पाने में वो सक्षम हुए हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और सर ने भी कहा है, सर ने एक जिक्र किया था उषा प्रेमवदा का, रूपों की नई राधिका का। तो सर इसमें बहुत अच्छा मनोविज्ञान व्यक्त किया गया है स्त्री का, क्योंकि अभी तक किसी ने भी स्त्री के मनोविज्ञान को झिंझोड़ा ही नहीं था, वहां तक गए ही नहीं थे कि स्त्री की भी कुछ आवश्यकताएं होती है, स्त्री भी इस प्रकार का सोचती है, स्त्री भी समाज के रूप में ऐसे भी वो उभर सकती है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था जो उषा प्रेमवदा जी ने सोचा है। और आपने भी उसके ऊपर बहुत बेहतरीन प्रकाश डाला है। रूपों की नई राधिका मुझे लगता है इस वेबिनार के माध्यम से हर किसी ने पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री का वो मनोगत है, और स्त्री किस प्रकार से वो सोचती है और किस प्रकार के वो सारी स्त्रियों के लिए एक जमीन बनाती है, वह उसमें दिखाई देता है। तो आधुनिक काल में उषा प्रेमवदा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा की सर ने बात की है, मन्नू भंडारी की बात की है, अन्नपूर्णा देवी, रमणिका गुप्ता शायद सर छूट गई आपसे, क्योंकि रमणिका गुप्ता जैसी स्त्री ने बहुत ही अच्छी तरह से एक दलित नारी की और एक आदिवासी नारी की जो बात रखी है। बहुजिता, यदि हम उनका कहानी संग्रह पढ़ते हैं तो आज भी कैसे स्त्री जो है वो उत्पीड़न का शिकार है, वो हमें दिखाई देता है। मधु कांकरिया का जिक्र जो है वह आता है कि उन्होंने आज भी जो है वह बड़े औहदे की जो स्त्रियां है वो किस प्रकार सोचती है और कैसे उनको साध्वी बनाया जाता है, उनकी इच्छा के विरोध में जाकर किस प्रकार की साध्वी बनाया जाता है, क्योंकि ये स्त्री विमर्श की ही बात है। और मधु कांकरिया उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डालती है। निरुपमा शेट्टी, आपने कृष्णा सुप्ती की बात की, अनारो की आपने बात की, बहुत बढ़िया सर। और मैत्री पुष्पा, आपने आधुनिक अभी तक की जो जया जगवानी की भी बात की आपने। प्रभा खेतान का यदि सर आप चरित्र उपन्यास पढ़ते हो, उनका आत्मचरित्र पढ़ते हो, तो बहुत ही स्त्रियों की जो स्थिति है आज की वह हमें दिखाई देती है। नारी समर्थता के लिए जिस प्रकार स्त्रियों ने काम किया है उसी प्रकार पुरुषों ने भी काम किया है, आप जानते हैं। और मुझे लगता है कि यदि महात्मा फुले न होते तो सावित्रीबाई फुले भी न होती। महात्मा फुले ने जिस प्रकार सोचा है स्त्रियों के लिए और अपने ही पत्नी को उन्होंने चेताया, सजग किया कि आप एक जो मशाल बन सकती हो सावित्री तुम समस्त स्त्रियों के लिए, तो ये भी बहुत बेहतरीन काम हुआ है सर। और इसके लिए मैं कुछ पुरुष के नाम भी स्त्री आंदोलन में लेना चाहती हूँ आज के इस वेबिनार के माध्यम से। महात्मा क्रांति ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, अभी एक महानुभाव ने जिक्र किया था, महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी, उसी SNDT चर्चगेट में महर्षि जी धोंडो केशव कर्वे जी ने जो शुरू किया था, आज वो विद्यापीठ बना है, विश्वविद्यालय बना है। और वह बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसे विश्वविद्यालय में काम करती हूँ कि जो भारत देश का प्रथम महिला विद्यापीठ है, विश्वविद्यालय, उसी में मैं काम करती हूँ। तो उनका नाम लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी स्त्रियों की एक धरोहर है कि जिन्होंने आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत प्रयास किया है। और कौन नहीं जानता कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो स्त्रियों के प्रति काम किया है, और आज हमें सारे जो अधिकार मिले हैं, जितने पुरुष के बराबरी का अधिकार, एक हमारे संविधान ने हमें पुरुष के बराबर लाके रख दिया है, तो इसका सारा श्रेय संविधान करता है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है, ऐसा मैं मानती हूँ। हिंदी साहित्य जगत की बात आपने सर की है, उसमें आपने बहुत सारे साहित्यकारों के नाम लिए हैं। जयशंकर प्रसाद जी, जैसे ही श्रद्धा का नाम आता है, कामायनी की श्रद्धा, जिन्होंने एक बहुत नारी को जो है वो सहनशीला वगैरह वगैरह बताया है। पता नहीं, मुझे उनकी एक मजबूरी लगी होगी, लेकिन उन्होंने एक स्त्री को किस प्रकार होना चाहिए वहीं पर वो बुद्धि की भी बात करते हैं, वहीं पर वह हृदय की भी बात करते हैं। और मुझे लगता है कि उनकी जो श्रद्धा है
और उनकी जो ईड़ा है वो बहुत अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टर उन्होंने रखे हैं, क्योंकि वही जानते हैं, वही मानते हैं कि एक शासनकर्त्री भी हो सकती है स्त्री, और एक जो है वो पुरुष की अर्धांगिनी भी श्रद्धा के रूप में उन्होंने बताया है। तो ये दो पहलू मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के एक माइलस्टोन, हम जो मील के पत्थर है वो साबित हो सकते हैं इसमें, और हुए ही है। मैथिली शरण गुप्त की जो बात करें तो उन्होंने जो है वह आंचल में जो दूध वाला जो बात की है उन्होंने, तो वह उनकी ये रही है, उसका तो हम खेद मानते हैं कि इस प्रकार की बात यदि वो न करते और स्त्री को यदि निर्भर बनाते तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन इसके हमेशा कहते हैं ना कि आंचल में दूध और आंखों में पानी वाली जो बात उन्होंने कही है, तो मुझे लगता है कि शब्दों के पीछे भी हमें कभी कभी पढ़ना चाहिए, तो वो शब्द की पीछे वाली बात मैं इसमें मानती हूँ। और आधुनिक युग में हम आते हैं तो प्रेमचंद, और प्रेमचंद ने सर बहुत बेहतरीन स्त्रियों के बारे में, चाहे वो सेवा सदन हो, यथार्थ स्थिति रखने में कामयाब हुए है, गोदाम की उनकी पत्नी हो, या मतलब बहुत सारे ऐसे जो चरित्र है, निर्मला हो, उन्होंने बहुत सारे ऐसे चरित्र है एज इट इज रख दिए है। यथार्थवादी दृष्टिकोण से नारी का जो एक नया दृष्टिकोण उन्होंने दिया है, क्योंकि साहित्यकार में वो ताकत होती है कि आप जो है वो 5 साल बाद का 5 साल बाद का यदि आप इतिहास रचेंगे तब भी उनकी जो स्थिति है वो कायम रखेगी। प्रासंगिक होते हैं ये ऐसे महापुरुष, इसीलिए हम कबीर को भी पढ़ते हैं, हम तुलसीदास को भी पढ़ते हैं, कि इनकी जो प्रासंगिकता है वह कायम बनी रहती है, और इसके लिए साहित्यकार का जो औधा है या साहित्यकार जिस प्रकार से सोचता है उसकी सोच ही कुछ अलग होती है। और सर ने कहा एक जगह कि अधिकारों के बंधन में स्त्री नहीं बंधना चाहती, अरे बहुत सही बात कही है आपने, क्योंकि स्त्रियों के बहुत मुलम्मा दिया जाता है कि आपको तो माँ का औहदा है, आपको तो आप एक अर्धांगिनी हो, आप एक पत्नी हो, आप पता बहन हो, माता हो, वगैरह वगैरह। कहती हूँ कि एक बहन, माता ये तो है, क्योंकि क्यों नहीं स्त्री को एक व्यक्ति माना जाए। जिस प्रकार ठीक है कि स्त्री को माता का औहदा दिया है, लेकिन आज इस स्थिति में सर बहुत ही दोहरा अभिशाप, यदि कौशल्या बैसंत्री का आप पढ़ते हो तो दोहरा अभिशाप में स्त्री की जो दोहरी भूमिका है, दोहरी भूमिका इस मायने में, क्योंकि आज वो ऑफिस में भी खट रही है और घर में भी खट रही है। ऑफिस में एक तो वो बहुत बड़े ओहदे पर महिला है, IAS अधिकारी है, उसकी भी आगे है, राज्य करता है, शासन करता है, लेकिन यदि वह घर में पहले आती है, पुरुष के पहले आती है, तो सर चौका बर्तन उसको ही संभालना पड़ता है। और इस स्थिति से मैं क्या चाहते 1% बदला होगा, अभी 99% बदलने की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता यदि पुरुष समझे तो स्त्री एक व्यक्ति के रूप में स्थापित हो सकती है। वो माँ और वो तो है ही, अर्धांगिनी है ही, पर एक व्यक्ति के रूप में उसको साबित करना, उसको स्थापित करना बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानती हूँ। और इसके लिए पुरुष ने अथक परिश्रम मुझे लगता है करना चाहिए, और जो मानसिकता है वह यदि नहीं बदलती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितना भी हम साहित्य पढ़े, हम साहित्य लिखे या हम और कुछ करें, मानसिकता केवल हम बदले ही नहीं, उसको परिवर्तन करके हमारे बर्ताव में, रोज के बर्ताव में उसे लाए, तभी कुछ हो सकता है। और इसके लिए सर अदृश्य बंधन में कहीं ना कहीं नारी को जकड़ा ही दिया है आपने मतलब पुरुष प्रधान संस्कृति ने, चाहे वो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत हो, बेटे के लिए व्रत हो, या और कहीं सर व्रत हो, मतलब ऐसे व्रतों के लिए तो मतलब वो स्त्री को भी सोचने की आवश्यकता है कि ये क्या सही है। ज्ञानवादी युग में हम जन्मे हैं, तो हम जो है वह उस बंधन से थोड़ा थोड़ा आगे आए, और पुरुष में भी उस बंधन से उसको थोड़ा सा मतलब रिहा कर देना चाहिए कि भाई ये नहीं है सही, तो 7 जन्म में मैं ही पति रहूंगा, परंतु आपको व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भी 7 जन्म में यही पत्नी चाहिए। तो यदि ऐसे भी पुरुष यदि उसको शाश्वत करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 7 जन्म में तुम्हारा ही पति बनते रहूंगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदलाव की जो आशंका है वो हमें नजर आएगी। और
ये तो सर सर्वविदित है, ये कहने की बात नहीं है। मैं बहुत कम शब्दों में सर समाप्त कर रही हूँ, मुझे पता है समय हो गया है। ये सच है कि देखिए, स्त्री को हम प्रधानमंत्री बनाया, स्त्री को हमने कितने ओहदे दिए हैं सर, लेकिन एक स्त्री इंदिरा गांधी जब मीनाक्षी मंदिर में गई थी तो पूरा मंदिर धुलवाया था। मतलब आज भी वो प्रधानमंत्री थी, आम स्त्री की तो बात ही कुछ और है सर। आज भी बेचारी वो देसाई कितना लड़ रही है वो सबरीमाला में प्रवेश पाने के लिए। देश के पंतप्रधान उस मंदिर में जाती है, वो पूरा मंदिर की धुलाई होती है, बाद में किसी को प्रवेश दिया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से इस आजाद देश में हमें विचारणीय बात है। बढ़िया बढ़िया एक मैडम। प्रश्न उठाती हूँ सर कि मंदिर की कोई भी मंदिर की जो पुजारी है वो स्त्री नहीं है, और मैं केवल हिंदू की नहीं बात कर रही हूँ, गिरिजा घर में भी कोई एक स्त्री नहीं है। वेटिकन सिटी में जो बैठे हुए हैं वो भी पुरुष ही है, वहां पर भी कोई स्त्री की मतलब उनको नहीं आवश्यकता समझी कि एक स्त्री को होना चाहिए। तो ये सर मेरा एक प्रश्न है। और मस्जिद में भी वही हाल है जी, गिरजाघर में भी वही हाल है, और हमारे मठों में भी वही हाल है, कोई वहां पर स्त्री नहीं है। और जब तक ये नहीं बदला जाता तब तक मुझे लगता है हम जो है वह स्त्री को अपवित्र, और मुझे लगता है कि जो देव है देवताएं हैं वो इसी स्त्री के जो है वह योनि से पैदा हुए हैं, तो क्यों हम स्त्री को अपवित्र माने, कुछ समय के लिए क्यों अपवित्र होती है, और इसी से वो निर्माती है, और उसने निर्मित किया है आपको। और इसके लिए मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है सर, और ये प्रश्न चिन्ह जब तक नहीं हटता है तब तक स्त्री जो है वह स्त्री की आजादी, स्त्री का आंदोलन है वो चलता रहेगा, जारी रहेगा। और हम आशावादी है ही, समस्त स्त्रीगण जो है वो आशावादी है। पुरुष बदल रहे हैं पर बहुत मतलब कछुआ गति से बदल रहे हैं, उनको थोड़ी सी गति देने की आवश्यकता है। और यहाँ पर बहुत सार्थक ये संगोष्ठी हुई है, बहुत ही अच्छा ये वेबिनार हुआ है ऐसा मैं मानती हूँ। और अंत में मैं कहना चाहूंगी समस्त स्त्रीगण को या जो बदलाव लाना चाहते हैं उनको कि कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता, कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी टीम का जो IQAC कमेटी हो, जो राज्य शास्त्र विभाग हो, मराठी विभाग हो, हिंदी विभाग हो, अंग्रेजी विभाग हो, समस्त टीम का मैं यहाँ पर धन्यवाद अदा करती हूँ और उनको बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ उनका कि ऐसा विषय चुना। और डॉक्टर भीमराव बनसोडे सर का मैं विशेष धन्यवाद अदा करती हूँ। और यहाँ पर मैं कम शब्दों में अपनी बातें रखी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी आयोजकों का, इस वेबिनार में जुड़े समस्त लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही बढ़िया बात रखी है मैडम हमारे यहाँ संगोष्ठी में। I don't have words to express my feelings right now because both of you have spoken very well on this topic. Now it is our duty and privilege to express a deep sense of gratitude towards you both of you, ma'am. So may I request Professor Dhamone sir to propose a vote of thanks of this plenary session 1. Over to Dhamone sir. Thank you, Professor Bansode sir. I am audible, yes, sir? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Good afternoon, all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their presence. I am also very much thankful to all Program Advisory Committee members and the invited speakers. Words are not enough to thank their constant guidance and support to shape the conference. I, on behalf of the Arts, Commerce and Science College, Onde, convey deep regards and heartily thanks to our Honorable President, Sri Vijay Patil Sahib, for his blessing and motivation. Sir, you are our source of motivation and energy.
I am also thankful to our chief guest, the Joint Director, Higher Education, Konkan Region, Panvel, Dr. Sanjay Jagtap sir, and former Pro Vice Chancellor, University of Mumbai, Dr. A.D. Sawant sir. They help us in obtaining the necessary administrative approval for organizing the event in our college. My sincere thanks to Dr. Yunus Sonone sir, Principal Arts, Commerce and Science College, Konde, and Dr. Chetna Patil Madam, Vice Principal Arts, Commerce and Science College, Konde, for his help and support at various stages. They supported in all possible manner to organize this conference. A big thank you to plenary session first resource person, Mr. Ajay Wagmare sir, Assistant Professor, Department of Hindi, Government Degree College, Nirmal, Telangana State, for his efforts towards National Conference on the relevance of the feminism movement in the 21st century. Today's our speaker told us about the status of women in society by giving some references in Hindi literature in details. Special thanks to plenary session first session chairperson Dr. Savita K. Tayade Madam, Assistant Professor, Department of Hindi, SNDT College of Arts, SCB College of Commerce and Science, for giving her valuable time. I also thankful to Professor Sunil Godse sir, giving such a nice introduction of our plenary session first speaker. I would like to place my heartily thanks to all the volunteers and participants, because of whom we made this plenary session first possible. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, sir. Yes, thank you, sir. Dear participants, with the permission of the principal of our college, we will start the plenary session 1, otherwise as per his guidelines and direction. Thank you, Taidi ma'am and Wagmare sir, for once again for joining with us, and yes, for your deliberations. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Please, Thank you very much, ma'am. Please say to everyone that keep on the video so that we can take a photo of gallery view. Okay. Ma'am, Taidi ma'am. For all the participants. Yeah. 1 minute. Sir, I request all the participants and delegates and resource persons, please start your video for taking the photo from the virtual platform, please. Vishal sir, make me able to start my video. Wait. I am in good range now. Yes, sir. It's not working. Sir, now you can start. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. Dr. Pandave sir, please on your. I request all the participants, please start your video. Sir, next session शुरू करा. Wait. Please start. 1 minute, sir. Yes. Okay. Pandagai sir, please start your video so that we can take picture. Photo काढूयात sir आपण. Okay, good. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. I love you. Yes, thank you, Wagmare sir and Taidi ma'am, once again. Thank you, sir. Sir, thank you very much for inviting me. No, it's our pleasure, ma'am, to invite you. Actually, I would like to invite you in person in my college, if time permits, sir. in future also. Okay, sir. Thank you. Yes, thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Yeah. Sir, thank you, all the Wagmare best, sir. and it was very good. Thank you so much. Well organized program, really well organized. Oh yeah. Thank you for your sweet words, ma'am. Thanks. Yeah. Dear participants, we are going to start plenary session 2 of this national conference. Vishal sir,
Yes, sir. Please confirm whether Dr. Guy Chavan sir has joined with us and Dr. Sandesh Wag sir joined with us. Please. Chandrakant Chavan sir, I think they had joined. Yes, sir. Chandrakant Chavan sir present. Okay, sir is with us. Wag sir, I think. Sonun sir, 1 minute. We will call sir. Hello. Yes, sir. वाक्सर जॉईन आहेत सर. जॉईन आहे ना? ओके. नाही वाक्सर जॉईन नाही. पण मी कॉल करतो, आपण सेशन सुरू करूया. हा कॉल करा सर. हा सेशन सुरू करून घ्या. हा येस सर. Yes, sir. I welcome the resource person of this session 2, Honorable Dr. Chandrakant Chavan sir from Walchand College of Arts and Science, Solapur. I welcome the session chairperson of this session, Honorable Dr. Sandesh Wag from the Department of History, University of Mumbai. And all the participants, once again, on behalf of the organizing committee of our college. At the very beginning of this session, may I request Professor Sutar sir, the head of the Department of Zoology, to introduce the resource person of this session. Over to Sutar sir. Thank you, Bansode sir. Yes, Good sir. afternoon. Welcome, sir. Proceed. Good afternoon to all. I would like to first thanks to National Conference team for giving me such a beautiful opportunity. I am very happy to introduce today's guest, Dr. Chandrakant Sandipan Chavan, MA, B.Ed, PhD set in history. Currently, he is working as a professor in Walchand College of Arts and Science, Solapur. His teaching experience 23 years, near about 12 students completed PhD under the guidance of Dr. C.S. Chavan sir. He is working in various committees such as History BOS Chairman in Solapur University, NSS BOS Chairman in Solapur University, LIC committee, and many other committees. He has got many awards for his works. He is working as a member of various academic and professional bodies. He has published 21 books and book chapters. He is completed research project funded by UGC. He is appointed as a Vice President of Akhil Maharashtra Itihas Parishad. He has published 25 research papers in national and international journals and 40 papers at national and international conferences and seminars. He worked as a chairperson in technical session at national and international conferences and seminars. This is a very brief introduction of Dr. C.S. Chavan sir. So over to Bansode sir. Yes, thank you. Thank you very much, sir, for the introduction of the resource person of this session. I take the opportunity to introduce the chairperson of this session, Honorable Dr. Sandesh Wag, sir, from the Department of History, University of Mumbai.
He is like Chavan sir. He is also a renowned person. Both the dynamic personalities we have in this session. Sir's education is MA, BEd, PhD set in history. Sir has worked on various committees, like he is chairman of Board of Studies in History, Archaeology, University of Mumbai. Member of Board of Studies, Ambedkar Thought, Rashtrasanta Tukadoji Maharaj, Nagpur University. Member of Board of Studies, Pali and Buddhist Studies, Dr. Babasaheb Ambedkar University, Marathwada University, Aurangabad. Member of Board of Studies, Jai Hind College for EFC University of Mumbai. Member of Board of Studies, Pratap College for History, Ambedkar, NM University, Jalgaon. And former member secretary, Maharashtra SC/ST Commission. Additional charge was given to Dr. Sandesh Waksa. Former members, a member contingency plan committee, Government of Maharashtra. He worked as a member of Intercaste Marriage Act Drafting Committee, Government of Maharashtra. He worked as a member of Mahatma Phule Writing Publication Committee, Government of Maharashtra. Former coordinator, ICHR, Western Region of India, Goa, Gujarat, and Maharashtra, HRD Ministry, Government of India. Former principal investigator, case study of atrocities on SC and ST in Maharashtra for ICSSR, HRD Ministry, Government of India. He has published near about 47 books on various topics so far. And sir was also awarded many awards, he was awarded the Government of Maharashtra Dakshin Merit Fellowship for 3 years, a state award as Best NSS Volunteer of University of Mumbai. He is the recipient of historian BC Berde Gold Medal for PhD thesis of Savitribai Phule, Pune University. He is the member of Academic Council, University of Mumbai, and he worked on booklet of Dr. Babasaheb Ambedkar, translated by Government of Maharashtra and distributed in Koyasan University in Japan. Apart from this, near about 30 PhD and MPhil research students have been awarded degree under the supervision of Honorable Dr. Sandesh Waksa. This kind of dynamic personality we have in this session as the chairperson of the session. Now, may I request Honorable Dr. Chandrakant Chavan sir from Walchand College of Arts and Science, Solapur, to deliver his address over here. And Dr. Chandrakant Chavan sir is going to talk on the topic History of Women Power in the Medieval India. Over to Honorable Dr. Chandrakant Chavan sir. Chavan sir. कला विज्ञान आणि यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये मध्ययुगीन कालखंडातील महिलांचं योगदान आणि विशेषतः मराठा कालखंडातील महिलांच्या संदर्भामध्ये इथे माझे विचार मांडण्याकरता मी उपस्थित आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सोनवणे सर, या सेशनचे अध्यक्ष माझे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर संदेश वाघ सर, इतर सर्व सहभागी पार्टिसिपंट. खर तर 12 वाजता हे सेशन सुरू व्हायला हवं होतं, परंतु 1:30 वाजून गेले. आपले सगळे लोक हे जेवणासाठी वगैरे ताटकळले असतील असं दिसतंय. तरी माझा विषय थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न मी आपल्या पुढे करतो आहे. मध्ययुगीन कालखंडाचा विचार करत असताना तत्कालीन स्त्री जीवन कोणत्या पद्धतीचं होतं आणि त्या घडून आलेला आहे. हा बदल कशा पद्धतीने घडून आला या संबंधीचा विचार आपण मांडणार. खर तर मध्ययुगीन कालखंडामध्ये मुस्लिम आणि हिंदू अशा दोन्ही बाबतीमध्ये स्त्रियांचं जीवन जर आपण बघितलं, तुलनेनं हिंदू स्त्रीपेक्षा मुस्लिम स्त्रीचं जीवन काहीसं सुखकर असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे आपल्या वडिलाच्या
मालमत्तेमध्ये वाटा मिळविण्याचा अधिकार तिला होता. इस्लाममध्ये विवाह हा एक करार मानलेला असल्या कारणामुळे स्त्रीला घटस्फोटाचा आणि पुनर्विवाह करण्याचा देखील अधिकार असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. परंतु पडदा पद्धती, 4 विवाह करण्यास दिलेली धर्माने मान्यता आणि या सगळ्या कारणांच्यामुळे स्त्रीचं असणारं मात्र अत्यंत दुय्यम अशा पद्धतीचं तिथेही असलेलं आपल्याला दिसून येतं. काही अधिकार मात्र हिंदू स्त्रीच्या पेक्षा अधिक असलेले एवढे दिसतात. स्त्रियांच्या मध्ये हिंदू स्त्रीच्या जीवनाचा विचार केला तर बालविवाहाची असणारी पद्धत, बहुविवाहाची असणारी पद्धत, त्यानंतर धर्माने सांगितलेल्या विधवा स्त्रीच्या बाबतीमध्ये वर्तनाच्या बाबतीमध्ये असणारी पद्धत, या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम जर आपण पाहिला तर स्त्रीचं जीवन अत्यंत खडतर अशा पद्धतीचं असलेलं आपल्याला पाहायला. त्यातच पुन्हा भारतामध्ये असणारी सती पद्धती जी आहे ती पद्धती आणि राजस्थान सारख्या राजपुतांमध्ये असणारे जोहार सारखी पद्धती, अशा ज्या काही पद्धती होत्या त्या मानवतेला कलंक असलेल्या आणि त्यामुळे स्त्रीचं जीवन अत्यंत खडतर बनलेलं होतं असं आपल्याला पाहायला मिळतं. किंबहुना चूल आणि मूल यापुढे स्त्रीला कर्तृत्वाला स्थान नसलेलं आपल्याला आढळतं. असं असताना देखील त्या कालखंडामध्ये काही स्त्रियांनी प्रत्यक्ष भाग घेऊन तर काहींनी अप्रत्यक्षरित्या राजकारणावर, समाजकारणावर, तत्कालीन जीवनावर प्रभाव पाडलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. खरं तर स्त्रियांची स्थिती दयनीय होण्याची जी अनेक कारणं आहेत त्याच्यामध्ये धर्माने लादलेली बंधनं, स्मृती ग्रंथांनी त्यांच्यावर लादलेली बंधनं हे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण. एका बाजूला मनु असं म्हणतो की यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, म्हणजे जिथे नारीची पूजा होते त्याच ठिकाणी देवता वास करतात, असं तो म्हणत असताना स्त्रियांना एकदम आदर्शाचं स्थान, उच्च स्थान देतो आहे. तर त्याच वेळेला तो असं म्हणतो न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हती, म्हणजे स्त्रीला स्वातंत्र्य नाही. स्त्री कधीच स्वतंत्र असत नाही. ती जन्मल्यानंतर आपल्या पित्याच्या नियंत्रणाखाली, ती मोठी झाल्यानंतर विवाहानंतर आपल्या पतीच्या नियंत्रणाखाली आणि नंतरच्या काळामध्ये आपल्या मुलांच्या नियंत्रणाखाली असते. तिला स्वातंत्र्य कधीही असत नाही. अशा प्रकारची भूमिका ही मनु घेताना आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे एका बाजूला देवी ठरवायचं, एका बाजूला उच्च स्थान द्यायचं आणि दुसऱ्या बाजूला स्वातंत्र्य हिरावून घ्यायचं, ही पद्धती इथे असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्यामुळे एकूणच स्त्रियांचं स्थान हे मध्ययुगामध्ये अत्यंत दयनीय बनलेलं होतं. सतीची अतिशय नृशंस अशा प्रकारची मानवतेला कलंक असलेली प्रथा इथे प्रचलित होती. स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता, स्त्रियांना मोक्षाचा अधिकार नव्हता. असं सगळं असताना देखील त्या काळातील काही स्त्रियांनी आपलं कर्तृत्व हे गाजविलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आता मुस्लिम स्त्रियांच्या बाबतीमध्ये ज्या वेळेला आपण विचार करतो त्यावेळेला आपल्याला दिसून येतं की अकबराची ताई जी होती माहम अनघा नावाची, तिचा अकबरावर प्रचंड प्रभाव हा राहिलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. किंवा नंतरच्या काळामध्ये व्यसनाधीन झालेल्या जहांगीराची पत्नी नूरजहां, या बेगम नूरजहांने 11 वर्ष अत्यंत कार्यक्षमतेने मोगल सत्तेचा राज्यकारभार हा चालविलेला आपल्याला दिसून येतो. किंवा मुमताज महल तिचा शहाजहानवर असलेला प्रभाव हा देखील आपल्याला चांगलाच परिचित आहे. औरंगजेबाच्या ज्या 2 कन्या होत्या झैबुन्निसा आणि झैनुत्तिन्निसा, या दोघींचाही मोठा प्रभाव औरंगजेबावर होता. आणि त्यामुळेच आपण पाहतो की ज्या वेळेला महाराणी येसूबाई आणि बालशाहू हे त्यांच्या कैदेमध्ये गेले औरंगजेबाच्या, त्यावेळेला त्यांना जे सन्मान्य जीवन प्राप्त झालं त्यामध्ये या मुलींचा वाटा हा मोठा असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. तत्कालीन बंगालचा सुभेदार असलेल्या अलीवर्दी खानावर देखील त्याच्या पत्नीचा मोठा प्रभाव होता. अहमदनगरचा हुसेन निजाम शहा जो होता त्याची मुलगी चांद बीबी आणि संघर्ष करून निजामशाही ही वाचविण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या कर्तृत्वाच्या दाखले आपल्याला इतिहासामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर मिळतात. जसे रजिया सुलतान हिने देखील दिल्लीची गादी चालवून दाखवलेली होती.
त्याचप्रमाणे हिंदू धर्मामध्ये देखील हिंदू स्त्रियांनी देखील मोठं कर्तृत्व गाजविलेलं होतं. विजयनगरच्या राज्यामध्ये स्त्रियांकडे संरक्षणापासून प्रशासनापासून अनेक प्रकारची कामं ही सोपविली गेलेली होती. विजयनगरचा राजा कंपनाची पत्नी तिने मधुरा विजयम व वीरकंपाय चरितम असे 2 ग्रंथ लिहिलेले होते. त्याचप्रमाणे विजयनगरच्या विठ्ठल मंदिरामध्ये संस्कृत आलेखाची रचना त्या विठ्ठल मंदिरातील ती वधूवती रुमल्लक्का या स्त्रीने केलेली होती. असंच आपल्याला मराठेशाहीच्या काळात ज्या वेळेला आपण येतो त्यावर कर्तृत्व गाजविलेलं पाहायला मिळतं. मग त्याच्यामध्ये राजमाता जिजाबाई असतील, ज्यांनी एकूणच सर्वत्र इस्लामी सत्तांची राजवट असताना त्या कालखंडामध्ये आपल्या पुत्राला आपलं सर्वस्व मानून त्याच्या हातून स्वराज्य स्थापनेचं प्रचंड मोठं कार्य हे घडवून घेतलं. आणि म्हणून शिवचरित्रावर जिजाऊंच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रचंड प्रभाव आपल्याला जागोजागी पाहायला मिळतो. किंबहुना शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये दिसणारं जे वेगळेपण आहे, स्त्री दाक्षिण्यासारखं असेल, किंबहुना शिवाजी महाराज हे आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्या मातेला संरक्षक देवता, मार्गदर्शक देवता मानत असत. इतकं महत्वाचं स्थान जिजाऊंचं होतं. आणि म्हणूनच शहाजीराजांच्या मृत्यूनंतर जिजाऊ सती जायला निघालेले असताना जिजाऊंना सती जाण्यापासून स्वराज्याची शपथ घालून शिवरायांनी परावृत्त केलेलं होतं. आणि सती जाणं टाळून स्वराज्य निर्मिती होण्याचं पाहण्याचं भाग्य हे जिजाऊंना लाभलेलं. म्हणजे जिजाऊंनी जे प्रचंड मोठं काम या बाबतीमध्ये केलं ते जर आपण बघितलं तर स्वराज्य स्थापनेच्या या कार्यामध्ये जिजाऊ नसत्या तर शिवबाच्या हातून हे कार्य घडलं असतं का, असाही काहींचा संदेह आपल्या मनामध्ये येऊ शकेल. इतकं प्रचंड मोठं काम जिजाऊंनी स्वराज्य निर्मितीच्या या कार्यामध्ये केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच पद्धतीने पुढे जाऊन शंभूराजांची पत्नी येसूबाई, महाराणी येसूबाई, हिने मराठी राज्याच्या एकूणच कार्यामध्ये प्रचंड मोठं योगदान दिले. तर येसूबाईंचं कार्य आणि कर्तृत्व तेवढं फारसं अभ्यासलं जात नाही किंवा त्याच्याविषयी फारसं बोललं जात नाही. ज्यावेळेला शिवाजी महाराजांचा देहांत झालेला आहे आणि शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण सैन्याचा प्रचंड लवाजमा घेऊन औरंगजेब बादशहा दक्षिणेत उतरतोय आणि दक्षिणेत उतरल्यानंतर सातत्याने युद्ध करावी लागतायत. आणि युद्ध करत असताना संभाजी राजांना रायगडावर राजधानीच्या ठिकाणी थांबून चालत नाही, सतत फिरतीवर राहावं लागतं आहे, या गडावरून त्या गडावर, आणि सातत्याने युद्ध करावे लागतायत. त्यावेळेला रायगडावर राज्यकारभार पूर्णतः पाहण्याचं काम जर कोणी केलेलं असेल तर ते येसूबाईंनी केलेलं आहे. आणि हे करत असताना येसूबाईंनी योग्य त्याप्रमाणे राजाला सल्ला देण्याचं काम आवश्यक त्यावेळी केलेलं आहे. आणि तो सल्ला संभाजीराजांनी मांडलेला देखील आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे ज्या वेळेला प्रधानांनी संभाजी राजांच्या विरोधामध्ये कटकारस्थान केलं, राजाराम महाराजांना गादीवर बसविलं, त्यावेळेला हा जो काही गृहकलह होता त्याच्यामध्ये रचलेलं कटकारस्थान होतं ते उधळून लावण्यामध्ये संभाजीराजे यशस्वी ठरले. परंतु संभाजी महाराज यशस्वी ठरल्यानंतर संभाजी महाराजांनी त्या प्रधानांना, मग अण्णाजी दत्तो असेल, निराजीरावजी असेल, बाळाजी आवजी असेल, हिरोजी फर्जंद असेल, प्रधान मंडळातील प्रधान आणि हिरोजी फर्जंद सारखा आपल्या कुटुंबातील भोसले कुळातील व्यक्ती या सगळ्यांना कैदेत टाकल्यानंतर या कारस्थानी प्रधानांना माफ करून त्यांना पुन्हा प्रतिष्ठित करण्याचा सल्ला हा इथे येसूबाईंनी दिलेला होता. आणि तो सल्ला देऊन तो प्रत्यक्षामध्ये आणून पुन्हा एकदा ही राज्याची घडी बसविण्याचा प्रयत्न हा त्यांनी केलेला आपल्याला पाहायला. इतकंच नाही तर संभाजी महाराजांना सांगून बाळाजी आवजीचा पुत्र खंडो बल्लाळ याला सेवेत घेण्याला देखील त्यांनी सांगितलेलं होतं. आणि या कालखंडामध्ये येसूबाईंच्या हाती राज्यकारभार होता. आणि हा राज्यकारभार सांभाळत असताना त्यांनी जी काही पत्र तत्कालीन वेगवेगळ्या
लोकांना दिलेली आहेत, वतनदारांना दिलेली असतील, मंदिराच्या संबंधाने काही अभयपत्र दिलेली होती. तर त्याच्यामध्ये सखी श्री सखी राज्ञी जयती हा त्यांचा शिक्का असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि हा शिक्का वापरून त्यांनी अनेक पत्र ही दिलेली आहेत आणि राज्यकारभार चालविलेला आहे. आणि त्या पलीकडे जाऊन एक राजाची पत्नी होणं आणि राज्य संकटात सापडलेलं असताना या राज्याला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी जो असीम अशा प्रकारचा त्याग येसूबाईंनी केला त्याला इतिहासामध्ये तोड नाही. म्हणजे संभाजी महाराज पकडले गेलेले आहेत आणि संभाजी महाराज पकडले गेले त्यावेळेला येसूबाईंचं वय होतं किती हो? अवघं 30 वर्ष वय आहे. आणि संभाजी महाराज पकडले गेले, त्यांची सुटका होईल याची शक्यता नाही आणि पुढे जाऊन हाल हाल करून संभाजी महाराजांना मारण्यात येतं. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये कुटुंबाची प्रमुख या नात्याने येसूबाई आपल्या मुलाला गादीवर बसविण्याचा मोह न धरता मराठा मंडळामध्ये संघर्ष निर्माण होईल अशी परिस्थिती येणार नाही आणि सर्व मराठा मंडळ एकत्रित येऊन मराठी सरदार आलेल्या संकटाला तोंड द्यायला एकत्रित येतील या पद्धतीने वागतात. आणि त्यासाठी म्हणून त्या स्वतः प्रचंड मोठा त्याग करतात. राजाराम महाराजांना सिंहासनावर बसवतात, त्यांचा राज्याभिषेक घडवून आणतात आणि इतकंच नाही तर रायगड स्वतः लढवून राजाराम महाराजांना कर्नाटकामध्ये जायला लावतात. आता राजाराम महाराज कर्नाटकामध्ये जाऊन हा संघर्ष पुढे चालवतात. हे सगळं जरी असलं तरी प्रत्यक्षामध्ये मात्र हे करत असताना जो निस्वार्थपणा त्यांनी दाखवलेला आहे, यादवी टाळण्याचं जे मोठं काम त्यांनी केलेलं आहे, निस्पृहपणे संकटामध्ये अचल राहून अविचल राहून त्यांनी जो निर्णय घेतलेला आहे तो अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. आणि त्यानंतर मग रायगड ज्या वेळेला मोगलांच्या ताब्यामध्ये जातो तेव्हा ते प्रत्यक्ष औरंगजेबाच्या कैदेमध्ये जातात आणि मग त्यावेळेला शाहू महाराजांना म्हणजे त्यांच्या मुलाला सप्तहजारी मनसबदारी ज्या वेळेला औरंगजेब देतो त्यावेळेला या सप्तहजारी मनसबीचा जहागिरीचा कारभार देखील येसूबाई पाहतात. आणि तो जहागिरीचा कारभार पाहत असताना त्यांनी जो कागदपत्रांवर आपला शिक्का उमटवलेला आहे, येसूबाई वालिद ए शाहू राजह म्हणून हा कारभार सगळा त्यांनी पाहिलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. किती असीम अशा प्रकारचा त्याग, किती मोठा अशा प्रकारचा त्याग येसूबाईंनी केलेला आहे. म्हणजे राजघराण्यामध्ये ज्या कालखंडामध्ये किंवा ज्या काळाचा आपण विचार करतो त्या काळामध्ये जेव्हा पुरुषी सत्ता आणि पुरुषांच्याच कार्याला महत्व असताना स्त्रिया देखील राजकारणामध्ये सहभागी होत असताना कधी प्रत्यक्षरित्या कधी अप्रत्यक्षरित्या सहभागी होत असताना आपल्या कार्याचा ठसा कशा उमटवीत होत्या हे आपल्याला येसूबाईच्या या प्रकरणावरून दिसून येतं. म्हणजे पहा, रायगड पडल्यानंतर पुढील 40 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष नाही, पुढील 40 वर्ष येसूबाई या मोगलांच्या कैदेमध्ये राहिलेल्या आहेत. आणि त्यातील 12 वर्ष महाराष्ट्राच्या बाहेर दूरदेशी दिल्लीमध्ये त्यांनी काढलेली आहे. आणि इतका मोठा त्याग हा येसूबाईंनी केलेला आहे ज्याच्याविषयी फारसं बोललं जात नाही किंवा चर्चा फारशी होत नाही असं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि मग त्याही पलीकडे जाऊन ज्या वेळेला बाळाजी विश्वनाथ उत्तरेत जातात, चौथ आणि सरदेशमुखीची संधा घेतात, त्यावेळेला त्यांची सुटका होते आणि सुटका होऊन त्या स्वराज्यामध्ये ज्या वेळेला परततात त्यावेळेला स्वराज्यामध्ये परतल्यानंतर इथे सुरू असलेलं सातारा आणि कोल्हापूर या 2 गाद्यांच्या मध्ये म्हणजे धाकटी पाती आणि मोठी पाती यांच्यामध्ये जे काही संघर्ष चालू होता हा संघर्ष थांबविण्याचं काम म्हणजे कोल्हापूरचे संभाजी महाराज आणि शाहू महाराज यांच्यामध्ये समेट घडवून आणून 2 सत्तांच्या मध्ये जो चाललेला मराठ्यांच्याच सत्तांच्या मध्ये भावकीचा चाललेला हा जो काही संघर्ष होता हा संघर्ष थांबविण्याचं काम देखील येसूबाई करतात. मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये येसूबाईंनी दिलेलं हे योगदान किती महत्वपूर्ण आहे हे आपण लक्षात घेऊ शकतो. त्यानंतर महाराणी ताराबाईंनी दिलेलं जे योगदान आहे ते योगदान देखील तितकंच महत्वपूर्ण आहे. किंबहुना राजसत्ता आपल्या ताब्यामध्ये घेऊन राजाराम महाराजांचा मृत्यू झाल्यानंतर 7 वर्ष जवळजवळ औरंगजेबाच्या बरोबर मोगलांच्या बरोबर जो प्रचंड संघर्ष
ताराबाईंनी केलेलं आहे. औरंगजेबाला असं वाटलेलं होतं राजाराम महाराजांचं निधन झालं. आता काय, आता ही सत्ता चालविण्यासाठी कोणीही नाही आणि राजारामाचा पुत्र तर अतिशय वयाने लहान आहे, तेव्हा ताराबाई काय करू शकणार? आपण सहजपणे हे मराठ्यांचं राज्य जिंकून घेऊ अशी भूमिका, असा विचार करून तो उतरलेला युद्धामध्ये असताना, आपली सर्व ताकद पणाला लावत असताना, महाराणी ताराबाई मात्र या औरंगजेबाला पुरून उरतात. तत्कालीन कवी देवदत्त याने ताराबाईंच्या कर्तृत्वाचं जे वर्णन केलेलं आहे, तो असं म्हणतो ताराबाईंच्या कर्तृत्वाचं वर्णन करत असताना, दिल्ली झाली दीनवाणी, दिल्लीशाचे गेले पाणी, ताराबाई रामराणी भद्रकाली कोपली. रामराणी भद्रकाली रणरंगी क्रुद्ध झाली, प्रलयाची वेळ आली, मुघल हो सांभाळा. म्हणजे रणांगणी क्रुद्ध होऊन उतरलेल्या या रामराणीने जणू भद्रकालीचं स्वरूप धारण केलेलं आहे आणि ते रणरंगी क्रुद्ध होऊन तिने प्रलयच आणलेला आहे. मुघलांनो सांभाळा असं तो म्हणतो आहे. आणि दिल्लीचं पाणी, दिल्लीशाचं पाणी, दिल्लींद्राचं पाणी सिंहासनाचं त्याने घालवलेलं आहे, असं वर्णन तो ताराबाईंचं करतो आहे. म्हणजे पहा, सगळ्या सरदारांना एकत्रित आणून, त्या सरदारांना एकत्रित आणून त्या साह्याने, त्यांच्या साह्याने एका वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करून, म्हणजे गनिमी काव्याचा वापर करत असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जो गनिमी कावा वापरला, तोच गनिमी कावा आणखी तीव्रतर पद्धतीने वापरत ताराबाईंनी युद्ध चालविलं. शत्रूच्या प्रदेशामध्ये आपले मराठी सैनिक धाडले, शत्रूच्या प्रदेशात प्रचंड गोंधळ धुमाकूळ माजवून दिला आणि हे सगळं करत असताना किल्ले हेच मराठ्यांचं शक्तिस्थान होतं. मग या शक्तिस्थानाचा अचूक वापर, एवढी वर्ष लढाई करायची म्हणजे लढाई करणं काही सोपं काम नव्हतं. ही लढाई करत असताना लागणारा लढाईसाठीचा जो पैसा आहे तो उभा करणं ही जिकिरीची गोष्ट होती, अवघड अशा प्रकारची गोष्ट होती. ती गोष्ट साध्य करत असताना त्यांनी काय केलं, तर किल्ले हे लढवत राहायचं. पावसाळा जवळ यायला लागला की मोगलांच्या सरदाराकडून खंडण्या घ्यायच्या, पैसे घ्यायचे आणि पैसे घेऊन किल्ले त्यांच्या स्वाधीन करायचे. मोगल सैनिकांना कोकणातील डोंगर दऱ्यांमध्ये असणाऱ्या या किल्ल्यांवर, कोकणात प्रचंड पाऊस पडतो, हत्तीच्या सोंडेने कोकणात पाऊस पडतो असं म्हणतात. अशा या काळामध्ये सह्याद्रीमध्ये पडणारा प्रचंड पाऊस, त्या पावसाच्या काळात किल्ल्यावर तग धरून राहणं हे त्यांना शक्य होत नसे. आणि मग या सगळ्या परिस्थितीमध्ये ते पावसाळ्यामध्ये किल्ले सोडून मैदानी प्रदेशात येत आणि मग मोगली सैनिक मैदानी प्रदेशात आलं की मराठे जाऊन पुन्हा किल्ल्याचा ताबा घेत असत. असं करून लढवत किल्ले ठेवून किल्ले मोगलांच्या स्वाधीन करून पैसे घ्यायचे आणि पुन्हा पावसाळ्याच्या काळामध्ये किल्ले आपल्या हाती घ्यायचे. अशा वेगळ्या मार्गाचा वापर करून त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर हा संघर्ष सातत्याने चालू ठेवला आणि हा संघर्ष इतका त्यांनी तीव्रतर असा चालवला की औरंगजेब बादशहाला इथेच आपला देह ठेवायला त्यांनी भाग पाडला. दुर्दैवाने त्यानंतर पुढे ज्या काही घटनाक्रम घडून आला, त्या घटनाक्रमामध्ये शाहू महाराजांची झालेली सुटका आणि शाहू महाराजांच्या सुटकेनंतर मोठ्या प्रमाणावर एक गोष्ट आपल्याला आढळून येते ती अशी की या सुटकेनंतर मग मराठ्यांच्या सत्तेसाठी, गादीसाठीचा संघर्ष सुरू झाला. मग ताराराणींनी कोल्हापूरला स्वतंत्र गादीची स्थापना केली आणि शाहूराजांनी मग साताऱ्याला आपली गादी निर्माण केली आणि अशा पद्धतीने 2 गाद्या या मराठ्यांच्या सत्तेच्या निर्माण झाल्या. ज्येष्ठ पुत्र संभाजीराजांच्या पुत्राने इकडे साताऱ्याला, तर राजारामाच्या पुत्राने इकडे कोल्हापूरला, अशी 2 सत्ता केंद्र चालविलेली आपणास पाहावयास मिळतात. त्यांच्यातील पुढील संघर्ष सतत चालू राहिलेला तो महाराणी येसूबाईंनी पुढे संपविलेला आपल्याला दिसून येतो. मग इतकंच नाही तर याच्या बरोबरच मराठी कालखंडामध्ये इतर अनेक स्त्रियांनी खूप मोठं योगदान हे दिलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. मग त्याच्यामध्ये पेशवाईच्या काळामध्ये जर आपण बघायला गेलो तर नानासाहेब पेशव्यांची पत्नी आनंदीबाई हिचाही नानासाहेबांवर आणि
पेशवाईच्या राज्यकारभारावर प्रचंड मोठा प्रभाव हा असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. रघुनाथराव पेशव्यांच्या पत्नी आपल्याला धचा मा करणाऱ्या म्हणून ज्या सुपरिचित आहेत त्या आनंदीबाई, त्यांनी देखील मोठ्या प्रमाणावर राजकारणामध्ये आपला प्रभाव हा पाडलेला आपल्याला दिसून येतो. करवीर छत्रपती दुसरे संभाजीराजे यांच्या पत्नी म्हणजे कोल्हापूरच्या संभाजीराजांच्या दुसऱ्या संभाजीराजांच्या पत्नी जिजाबाई यांनी देखील राजकारणामध्ये मोठं योगदान दिलेलं होतं. किंबहुना आपल्या बुद्धी कौशल्याने करवीरची गादी चालविण्याचं काम त्यांनी केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. याशिवाय होळकर घराण्यातील प्रामुख्याने खंडेराव होळकरांच्या पत्नी आणि मल्हाररावांच्या सूनबाई अहिल्याबाई होळकर यांनी दिलेलं योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण अशा प्रकारचं. आणि तसंच शिंदे घराण्यामधील महाजी शिंदेच्या पत्नी लक्ष्मीबाई आणि त्यानंतर त्यांच्याच घराण्यामध्ये होऊन गेलेल्या लक्ष्मीबाई, यमुनाबाई या स्त्रियांनी देखील मोठं योगदान हे दिलेले आपल्याला दिसून येते. नागपूरकर भोसले घराण्यातील दर्याबाई, चिमाबाई, आनंदीबाई यांनी देखील असंच राजकारणामध्ये योगदान दिलं. कधी कधी आपल्या शेजारील राज्यकर्त्यांच्या बरोबरचा संघर्ष आहे, कधी पेशव्यांच्या बरोबरचा संघर्ष आहे, तर कधी वारस नेमत असताना निर्माण झालेल्या वादामध्ये त्यांनी निभावलेली भूमिका, अशा एकूण वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी महत्वपूर्ण अशा प्रकारचं योगदान हे दिलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याप्रमाणेच कुलाबाच्या आंग्रे घराण्यातील मथुराबाई, लक्ष्मीबाई, आनंदीबाई, सकवारबाई, तापशीकर घोरपडे घराण्यातील द्वारकाबाई, सातारचे प्रतिनिधी घराण्यातील काशीबाई, ताई तेलीण, तंजावरच्या भोसले घराण्यातील जयंतीबाई, दीपाबाई, सुजाणबाई, अपरूपाबाई आणि त्याबरोबरच शाहू महाराजांच्या निधनानंतर, थोरल्या शाहू महाराजांच्या निधनानंतर रामराजा हा जो सत्तेवर आला, जो ताराबाईंचा नातू होता आणि या ताराबाईंच्या नातूची बहीण असणारी दर्याबाई निंबाळकर यांचं देखील नाव एक महत्वपूर्ण अशा प्रकारचं म्हणून तत्कालीन राजकारणामध्ये आपल्याला घ्यावं लागतं. इचलकरंजीच्या घोरपडे घराण्यातील अनुबाई, येसुबाई सचिव यांचंही योगदान त्या बाबतीमध्ये महत्वपूर्ण आहे. आता आपल्याला माहित असलेल्या स्त्रियांच्या मध्ये अहिल्याबाई होळकरांचं योगदान तर आपण सर्वांना परिचित आहे. अहिल्याबाईंनी जे योगदान दिलं त्याच्यामध्ये महत्वपूर्ण राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण, धर्मकारण या सर्वच क्षेत्रामध्ये अहिल्याबाईंनी मोठं योगदान दिलेलं आहे. खरं तर त्यांच्या आयुष्यामध्ये अनेक प्रसंग हे दुःखाचे निर्माण झाले, परंतु या दुःखाच्या प्रसंगांवर त्यांनी मात केली. म्हणजे आपल्या पतीचं निधन असेल, आपल्या पुत्राचं निधन असेल, आपल्या मुलाच्या निधनानंतर तरुण असणाऱ्या सुनांचं सती जाणं असेल, किंवा आपल्या जावयाच्या निधनानंतर आपल्या मुलीचं सती जाणं असेल, हे सगळं अतिशय दुर्दैवी त्यांच्या आयुष्यामध्ये घडून आलेले प्रसंग. आणि या सर्व प्रसंगांवर मात करून राजकारण करत असताना अतिशय जनकल्याणकारी अशा प्रकारचा राज्यकारभार अहिल्याबाईंनी केला. त्याकरता अनेक ठिकाणी घाट बांधण्यापासून, पशु पक्ष्यांना चारा देण्यापासून, त्याचबरोबर धर्मशाळा, अन्नछत्र, मंदिरांचा जीर्णोद्धार, अनेक ठिकाणी त्यांनी केलेली ही जी कामं आहेत त्याची साक्ष देशभरामध्ये आजही आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी पाहायला मिळते. परंतु त्या धर्मपरायण असताना देखील त्यांनी आपल्या राज्याचा राज्यकारभार करत असताना ज्या वेळेला त्यांच्या पतीच्या निधनानंतर हे राज्य आपल्या घशात घालावं म्हणून राघोबा हा होळकरांच्या इंदौर राज्यावर चाल करून आला, त्यावेळेला त्यांनी राघोबांना दिलेलं जे उत्तर आहे ते अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. म्हणजे एक स्त्री किती मजबूत असू शकते, राज्याचा कारभार पाहत असताना कितीही मोठ्या अधिकारी पुरुषाच्या बरोबर समोर उभं राहत असताना काय हिमतीने उभं राहू शकते याचं त्या उदाहरण आहे. बाई माणूस समजून असं हे करू नका. ते असं म्हणतात की तुम्ही मला जर बाई समजून माझ्या राज्यावर चाल करून येत असाल तर आपण खूप मोठी चूक करत असतात. हे असं राघोबाला म्हणतात.
थोडा दूरदृष्टीने विचार करा. हलक्या लोकांच्या नादी लागून आमच्याशी वैर धरू नका. परिणाम वाईट होतील. बाईबरोबर लढण्यात कसली आले आहे बहादुरी. या लढाईत मी हरले तर लोक म्हणतील बाईच आहे. पण तुम्ही जर पराभूत झालात तर तुमची छितू होईल. असा निरोप ते पाठवतात आणि तुकोजी होळकराला सांगून युद्धाची पूर्ण तयारी करतात. आणि राघोबाच्या हे लक्षात येते की अरे हो, तुकोजीच्या बरोबर आपण लढायला गेलो आणि जर आपला पराभव झाला तर पुन्हा आपल्याला कुठे तोंड दाखवायला देखील जागा राहणार नाही. आणि मग तो राघोबा लगेच आपण सांत्वन करण्यासाठी तुमचं येत आहोत. तुमच्या मुलाचं निधन झालेलं आहे म्हणून आपलं सांत्वन करावं या उद्देशाने आम्ही आलेलो आहोत असं तो म्हणतो. खर तर अहिल्याबाईने अतिशय कणखरपणे राघोबा दादा असेल, महादजी शिंदे असेल, हरिपंत तात्या फडके असेल, नाना फडणीस असेल, नारो शंकर असेल, हे सरदार जे होळकरांची संपत्ती, होळकरांची जहागीर ही बुडवू पाहत होते किंवा तिथे असणारा प्रचंड पैसा आपण गिळंकृत करावा म्हणून अहिल्याबाईंवर दबाव आणायचा प्रयत्न करत होते, तो दबाव मोडून काढण्याचं काम अहिल्याबाईंनी केलेलं आहे. म्हणजे राघोबा दादा असेल किंवा नाना फडणीस असेल किंवा महाजी शिंद्यांसारखा पराक्रमी शिंदे घराण्यातील सरदार असेल, या कोणालाही ताकास्तूर तिने लागू दिलेला नाही. म्हणजे काय कर्तृत्व एक स्त्री दाखवू शकते याचं एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण म्हणून आपण याच्याकडे बघू शकतो. रामपुरा येथे चंद्रावंतांनी केलेलं बंड असेल, मनरूप सिंग सारख्या डाकूला त्यांनी दिलेले मृत्यूदंडाची शिक्षा असेल, म्हणजे अतिशय कणखरपणे राज्यकारभार त्यांनी केला. आणि एक स्त्री कणखरही किती असू शकते, जनकल्याणकारी राज्यकारभार ही किती करू शकते, आणि त्याबरोबरच अहिल्याबाईंनी दाखविलेली मुत्सद्देगिरी ती देखील अत्यंत महत्वपूर्ण अशा प्रकारची. खुद्द पेशव्याला लिहिलेल्या पत्रामध्ये अहिल्याबाई असं म्हणतात, ब्रिटिशांशी हात मिळवणी म्हणजे अस्वलाला कवटाळण्याजोगे आहे. वाघासारखे इतर प्राणी हे शक्तीने वा युक्तीने मारता येतात, परंतु अस्वल मारणे फार कठीण असते. सरळ त्याच्या चेहऱ्यावर वार केल्यावरच ते मरते. एकदा त्याच्या मजबूत पकडीत सापडल्यानंतर तो त्याच्या शिकारीला गुदगुल्या करून ठार मारतो. इंग्रज हे त्या अस्वलासारखे आहेत आणि म्हणून इंग्रजांच्या बरोबर करार करू नये असं त्याने सांगितलं. त्याचबरोबर डोंगरांमध्ये राहणारे भिल्ल, गोंड या ज्या आदिवासी जमाती होत्या त्या जनतेला मोठ्या प्रमाणावर त्रास देत होत्या, तर त्यांच्याकडेच व्यापारातील मार्गावरील कर वसुलीचा अधिकार त्यांना देऊन, त्यातील काही रक्कम त्यांना देऊन त्यांचा जो त्रास जनतेला होत होता तो त्रास नष्ट करण्याचं काम अहिल्याबाईंनी केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे स्त्री असल्या तरी स्त्री म्हणून दुय्यमत्व न घेता त्या किती कणखरपणे वागू शकतात. आपल्या पुत्राच्या मृत्यूनंतर ही जहागीर यशवंतराव घेण्याचा प्रयत्न करतोय तर त्यालाही जागा दाखविण्याचं काम, पेशव्यांना योग्य वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्याचं काम हे अहिल्याबाईंनी केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याचप्रमाणे इतर स्त्रियांनी देखील अत्यंत कर्तृत्व दाखविलेलं आहे. त्याच्याबद्दल एका स्त्रीचा फक्त उल्लेख या ठिकाणी मी करणं उचित समज. उमाबाईंनी जे योगदान दिलेलं आहे ते अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. म्हणजे पेशवाईच्या कालखंडामध्ये दुसरा बाजीराव पेशवा, नानासाहेब पेशवा अशा दोन पेशव्यांशी सातत्याने संघर्ष करण्याचं काम उमाबाई दाभाडेंनी केलेला. म्हणजे पहा, दुसऱ्या बाजीरावाने, पहिल्या बाजीरावाने आणि त्याबरोबरच खंडेराव दाभाडेंनी उत्तरेमध्ये मोहिमा काढल्या. उत्तरेमध्ये मोहिमा काढून गुजरात जिंकून घेतला आणि गुजरात जिंकल्यानंतर त्या गुजरातचे अधिकार हे दाभाडे घराण्याकडे, सेनापती घराण्याकडे देण्यात आले. परंतु नंतर त्याच्यामध्ये काही बदल झाला आणि शाहूराजांनी नंतर काढलेल्या एका आदेशामध्ये पेशव्यांच्या बंधुराजांना त्यातील अर्धा भाग त्यांनी दिला. तेव्हा दाभाडे सरळ शाहूराजांच्याकडे गेले आणि
शाहू महाराजांना त्यांनी सांगितलं की असं करू नये, तर संपूर्ण गुजरात आमच्याकडे असावा. शाहू महाराजांनी आपला निर्णय जरी फिरवला तरी देखील पेशवे सातत्याने गुजरातचा अर्धा भाग हा आम्हाला मिळालाच पाहिजे म्हणून प्रयत्न करत राहिले आणि त्याच्यामधून खूप मोठ्या प्रमाणावर सेनापती आणि पेशवे यांच्यामध्ये संघर्ष हा नंतरच्या काळामध्ये घडून आलेला. आणि मग त्याच्यामध्ये खंडेरावांच्या एकूणच त्यांच्या मृत्यूनंतर, दाभाडेंच्या मृत्यूनंतर एक या सगळ्या गोष्टी करत असताना खंडेराव दाभाडेंचा मृत्यू झालेले मुलं लहान आहेत आणि मग आता आपण आक्रमण करून गुजरात जिंकून घेऊ शकतो असं अनेकांना वाटायला लागलं. त्याच्यामध्ये पेशवे देखील होते. परंतु या संघर्षामध्ये उमाबाई मात्र अतिशय चाणाक्षपणे वागतात, सैन्याचं नेतृत्व करताना दिसतात. त्रिंबकराव या आपल्या पुत्राला हाताशी धरून ही गादी जी आहे, हे राज्य जे आहे ते वाचवतात आणि आपल्याकडे ठेवतात. परंतु पेशव्यांच्या बरोबर डभोई या ठिकाणी झालेल्या संघर्षामध्ये त्रिंबकराव हा त्यांचा मुलगा मारला जातो आणि त्यामुळे पेशवे आणि सेनापती यांच्यातील संघर्ष पुढेही नंतरच्या काळामध्ये सातत्याने चालू राहतो. शाहू महाराजांनी जरी प्रयत्न केला की हा संघर्ष थांबला पाहिजे, कारण तो संघर्ष राजसत्तेसाठी अनुकूल नाही, प्रतिकूल आहे, परंतु त्यानंतर देखील हा संघर्ष थांबलेला आपल्याला दिसून येत नाही. पण वैधव्य प्राप्त झालेलं असताना देखील ज्या काळामध्ये विधवांना घरामध्ये कुठेतरी एका अंधाऱ्या खोलीत तिने राहायला पाहिजे, तिने कुठल्याही प्रकारच्या सण समारंभांमध्ये सहभागी होता कामा नये, तिने चांगलं वस्त्र परिधान करता कामा नये, तिने चांगलं अन्नप्राशन करता कामा नये, असं सगळं सांगितलं जात होतं. त्या काळामध्ये पेशव्यांच्या बरोबर सातत्याने संघर्ष करत सेनापती पदाची धुरा ही उमाबाई दाभाडे सारख्या एका स्त्रीने वाहिली. ही किती मोठी गोष्ट आहे. आणि इतकी मोठी गोष्ट की अहमदाबाद या ठिकाणी असलेल्या मोगली तळावर आक्रमण करून त्या युद्धामध्ये प्रत्यक्ष हत्तीच्या अंबारीमध्ये बसून उमाबाई दाभाडे लढतायत. त्या अहमदाबादवर चाल करून गेल्यानंतर तेथील जो मुस्लिम सरदार आहे तो असं म्हणतो की आम्ही मुस्लिम सरदार आहोत, मुस्लिम सैन्य तुम्हाला आटपणार नाही, तू एक विधवा स्त्री आहेस, तुझी मुले लहान आहेत, तर आमच्या पुढे तुझा टिकाव लागणार नाही, माघार घे, असं उमाबाई दाभाडेंना सांगत असताना हा आपला अपमान आहे असं समजून उमाबाई दाभाडे सैन्याचं नेतृत्व करतात. नुसतं नेतृत्व करत नाही तर पठाणांच्या सैन्याचा धुव्वा उडवतात. तेव्हा तिने गाजविलेला पराक्रम पाहून तिची 2 मुलं अल्पवयीन आहेत त्यावेळेला, तर त्या सगळ्यांना शाहू महाराज साताऱ्याला बोलावून घेतात आणि शाहू महाराज साताऱ्याला बोलावून घेऊन तिचा मोठा सत्कार करतात. सोन्याचं कड तिच्या पायामध्ये म्हणजे उमाबाई दाभाडेंच्या पायामध्ये ते घालतात. असं सोन्याचं कड पायामध्ये घालणं ही खूप मोठी अशा प्रकारची गोष्ट, गौरवाची गोष्ट मानली जात होती. एकूणच संपूर्ण मराठा कालखंडामध्ये एका स्त्रीने सेनापतित्व करणं, सैन्याचं नेतृत्व करणं आणि छत्रपतींनी तिचा गुणगौरव करून पायात सोन्याचा तोडा घालणं अशी एकमेव घटना घडली ती उमाबाई दाभाडेंच्या सोबत घडलेली आहे. आणि म्हणून उमाबाईंचं कर्तृत्व किती प्रचंड मोठं होतं हे आपल्या लक्षात येतं. असंच कर्तृत्व इतर अनेक घराण्यातील स्त्रियांनी, सरदार घराण्यातील स्त्रियांनी, पेशवे कुटुंबातील स्त्रियांनी गाजविलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. परंतु अनेकदा या सरदारांच्या पत्नी म्हणून त्यांना मार्गदर्शन करण्यापुरतं, त्यांना सल्ला देण्यापुरतं किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत कारभार पाहण्यापुरतं त्या मर्यादित राहिल्या. परंतु इथे प्रत्यक्ष ज्या वेळेला आपण पाहतो तेव्हा महाराणी ताराबाई असतील किंवा अहिल्याबाई असतील किंवा उमाबाई दाभाडे असतील, या रणमैदानावर उतरून प्रत्यक्ष युद्धाचं नेतृत्व करणाऱ्या आणि अनेक मोठमोठ्या सेनापतींच्या विरुद्ध लढा देऊन त्यांना परत पाठविणाऱ्या, विजय मिळविणाऱ्या, त्यांना पराभूत करणाऱ्या अशा सेनानी देखील त्या ठरल्या. मारवाडचा राजा त्याला देखील असं वाटत होतं की आता आपण हे दाभाड्यांचं गुजरातचं राज्य जिंकून घेऊ, परंतु आपल्या बुद्धी कौशल्याने
या मारवाडच्या राजाला देखील पराभूत करण्याचं काम हे उमाबाईंनी केलेलं होतं. दुर्दैवाने शाहू महाराज जिवंत होते तोपर्यंत गुजरातचं हे जे काही राज्य आहे हे राज्य उमाबाईंनी पेशव्यांना मिळू दिलं नाही. गुजरात राज्य आपणास मिळायला हवे असं जे पेशव्यांना वाटत होतं त्याच्या पाठीमागे एक आणखी महत्वाचा भाग असा होता की गुजरात राज्यातून माळव्यात जाणारे असेल उत्तरेत जाणारे सर्व मार्ग जे होते ते गुजरात मधून जात असल्या कारणामुळे गुजरात राज्य हे आपल्या ताब्यात असायला पाहिजे यासाठीचे खूप प्रयत्न हे सातत्याने पेशव्यांनी इतर राज्यकर्त्यांनी केलेले हे आपल्याला पाहायला मिळते. आणि मग नंतरच्या काळामध्ये दाभाडे हे निजामाच्याकडे गेलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु ज्या काळामध्ये स्त्रीला अत्यंत न्यून स्थान होतं आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये हे आपण बघायला गेलं तर मगाशीच्या रिसोर्स पर्सनने उल्लेख केला की उत्तरेमध्ये मीराबाई जसे आहेत तसं आपण महाराष्ट्राचा फक्त विचार करायचा म्हटला तर संत जनाबाई आहेत, कान्होपात्र आहेत, बहिणाबाई आहेत आणि यांनी देखील साहित्य निर्मितीचं क्षेत्र असतो, भक्तीचं क्षेत्र असतो, या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठे योगदान हे दिलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि म्हणून मध्ययुगाच्या कालखंडामध्ये साहित्याचं क्षेत्र असतो, राजकारणाचं क्षेत्र असतो किंवा त्याचबरोबर इतर क्षेत्रामध्ये देखील मोठं योगदान हे स्त्रियांनी दिलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. स्त्रियांचं कार्यकर्तृत्व आणि त्याची प्रासंगिकता आपण पाहत असताना या सर्व स्त्रिया आजच्या काळात ज्या वर्किंग वुमन आहेत म्हणजे काम करून आपलं कुटुंब चालविणाऱ्या स्त्रिया आहेत त्यांच्याकरता प्रचंड प्रेरणादायी आहे. म्हणजे राजमाता जिजाऊंचं उदाहरण जर आपण घेतलं तर आपल्या मुलाला घडविणाऱ्या शून्यातून एक स्वतंत्र विश्व निर्माण करण्याची प्रेरणा देऊन त्याच्या हातून ते कार्य प्रत्यक्ष घडवून घेणाऱ्या जिजाऊ या स्त्रियांच्यासाठी प्रचंड मोठं प्रेरणास्थान आहे. महाराणी येसूबाईंचं उदाहरण जर आपण बघितलं प्रचंड मोठी संकट आलेली असताना त्या संकटाच्या काळामध्ये पतीच्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून उभा राहणं आणि राज्यशकट हाकलणं ही एक साधी गोष्ट नाही आहे. आणि हे सगळं करत असताना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हा जो काही प्रयत्न त्यांनी केला आणि हा प्रयत्न करत असताना संकटाच्या काळामध्ये सत्सद्विवेक बुद्धीचा वापर करून योग्य तो निर्णय जो काही कारभार आहे राज्य चालवत असताना एकूणच खूप मोठ्या प्रमाणावर त्याग जो करावा लागतो प्रसंगी तो त्याग करण्याची तयारी आणि महाराणी ताराबाईंचं व्यक्तिमत्व हे सांगतं की आपल्याला बुद्धी कौशल्याच्या साह्याने कितीही मोठं संकट आलं तर त्या संकटावर मात करता येऊ शकते. अहिल्याबाईचं चरित्र तर आपल्या सगळ्यांच्या समोर प्रचंड प्रेरणादायी अशा प्रकारचं आहे. या चरित्रांच्या मधून या प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वांच्या मधून आपल्याला आपल्या जीवनातील संकटावर मात करणं, योग्य नियोजन आयुष्याचं करणं आणि मार्गक्रमण करणं याची प्रेरणा सातत्याने मिळत राहते. आजच्या या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये आपण मला बोलावलं आणि त्याबरोबरच मध्ययुगीन कालखंडातील स्त्रियांनी दिलेले जे योगदान आहे त्या योगदानाच्या संबंधी काही विचार व्यक्त करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल महाविद्यालयाचे प्राचार्य संयोजक सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच सर. तुम्ही या आभासी प्लॅटफॉर्मवरती आमच्यासोबत जोडलेले आहात आणि अतिशय सुंदर या ठिकाणी आपलं मत व्यक्त केलेले आहात. धन्यवाद. मी महाविद्यालयाच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी मी आदरणीय डॉक्टर संदेश गायकवाड सर यांना विनंती करतो की यांनी आपलं या ठिकाणी मत मांडावं आणि मनोगत व्यक्त करावं. आदरणीय डॉक्टर संदेश बाबा. At the outset, I'm thankful to you for inviting me to be the chairperson of this particular session. My friend and colleague, Mr. Chandrakant Chavan sir, chairman of the Board of Studies of History of Ahilyabai Holkar, Solapur University, has delivered his talk on the
role of women in the medieval India in the Maratha period, and he has rightly given his opinion about the various women who contributed a lot in the polity and in the society to a larger extent. And I do agree that the women have their own role for the empowerment of the women at that particular juncture of time. But being the chairperson of the sessions, I'm being invited to give my personal opinions about these particular points, and I do take this opportunity to talk about the topic which is given to all of us. Basically, the theme is of the national conferences of the relevance of the feminist movement in the 21st century. So when you're trying to talk about the relevance of the feminist movement in the 21st century, I have some observations of my own, which I'll be just stating it right now before all the August gathering. Let us understand that in the 21st century, when you are trying to understand who is the father of the women's emancipation movement or the feminism in India or the women's empowerment, is Dr. Babasaheb Ambedkar. Now, when you're trying to understand that the woman's status was there in the slavery, as my dear friend Chavan sir has also explained about that female infanticide, dowry, society, sati system, polygamy, Keshwapan, Devdasi, Yallamma, Murudi, Jhoktini, human trafficking, domestic violence, and many other things were there at that juncture of time. Jarata Kumar Vivaha Paddhati. They have denied, the women were denied the right of education, right to property, right to rule, and right to remarry, right to have access into the property of the ancestors, right to adopt the children. So these are the various right to divorce, right to perform the religious ceremonies with the Vedic mantras, right to Upanayana, and the various types of restrictions were there about which Dr. Chandrakant Chavan sir has already explained. That was in the Maratha polity in the society larger extent. What Dr. Babasaheb Ambedkar did was that he has opposed the inhuman religious texts to a larger extent. And what he did so is a matter of importance to understand that 25th December 1927, Dr. Babasaheb Ambedkar vehemently burned the Manusmriti in the conference pandal at the hands of Sahasrabuddha and the auspicious sadhus. The reason behind burning this Manusmriti, about that Dr. Ambedkar has says that Dr. Ambedkar has explained about that to a larger extent, that it is the nature of a woman to seduce a man. For this reason, a wives are never unguarded in the company of the females. One should not sit in lonely with the women. So such kind of an inhuman and such kind of an suspicious treatment was being given to the women by Manu, and day and night a woman must be kept in the dependence by males, their families, and if they attach themselves to the sensual enjoyment, they must be kept under one's control. She has to be protected by father in the childhood. Her husband protects in the youth, and her son protects her in the old age. So never a woman was there independent in the Indian society, about which Chandrakant Chavan sir also agrees, and he has also spoken about that. When we try to understand all these particular points, we come to know that Manusmriti and the religious texts have made with the patriarchal dominated society, and it has dominated for women for thousands and thousands of years. And women shall not perform a daily sacrifice prescribed by the Vedas has also been said by Manu, and many other things are written by them. Such Manusmriti was burned by Dr. Babasaheb Ambedkar, and here I would like to reiterate and say that the relevance of the feminist movement in the 21st century, actually in real sense, in true sense, starts with Dr. Babasaheb Ambedkar. This is my humble submission as a chairperson of this session. Now, women's participation was there in Ambedkarite movement to a larger extent. It has been said that the basically philosophers have interpreted the world, but the real task is to change it. Dr. Ambedkar has theorized the concept of the feminist women in India, and also given the practical outlook for the same. How he has theorized, let us understand. The Rise and Fall of Hindu Women has been written by Dr. Babasaheb Ambedkar, which was published on the 21st January 1950. And here Dr. Ambedkar hails the Vedic Hindu religion responsible for the fall of the status of the women in India. This is what we need to understand. Now, what his opinions are there? Egalitarian principles prevailed during the Buddhist period. It was a revolutionary act of part of Buddha, is been said by Dr. Babasaheb Ambedkar. But then he said that within the Hindu period, their dignity was been lost with these traditions. So here we need to understand Dr. Ambedkar traces the hegemony of the Manusmriti, and he says that there is nothing new starling in this in the law of Manus about women. They are views of the Brahminism that existed only as a matter of social theory before Manu. What Manu did was to convert what was social theory into laws of the state.
So the social theory converting into the laws of the state, and for thousands and thousands of years, women have been subjected to the humiliation is been said by Dr. Babasaheb Ambedkar, and he traces basically this particular point. Coming back to this particular angle of the theme of this conference is about the relevance of the feminist movement of the 21st century. Dr. Ambedkar talks about the feminism of Buddha in his Dhamma. His socialist ideology has been developed in that particular manner. Again, we need to understand states and minority of Dr. Ambedkar, where he talks about the fundamental rights for the women to a larger extent. This is my humble submission that I would like to make. Dr. Babasaheb Ambedkar's submission to the government regarding the protection of the human rights is been explained by a scheme of political safeguards for the protection of the depressed classes in the future constitution of India. It has been submitted by Dr. Ambedkar in the roundtable conferences that we need to understand. And there he explained our aim, he declares, is to realize the practice of one man and one hood in all walks of life, political, economic, and social. So at this juncture, we need to understand the relevance of the feminist approach of the feminist movement in 21st century comes with Dr. Babasaheb Ambedkar's scheme of with roundtable conference talking about one man, one hood in all walks of life, political, economic, and social, irrespective of the gender, is an absolutely important point. So therefore, we need to understand Dr. Ambedkar as a staunch protagonist of the human rights. As we all know that the Universal Declaration of the Human Rights was there in the 1948, and the outstanding feature of the Universal Declaration of the Human Rights was, yes, 10 minutes थांबला साहेब. हा माझं election चालू आहे. Conference मध्ये म्हणून. I also do have a project-based course, Viva, right now. So I'll just sum up my points and then I'll go back to my department for the project-based course Viva. Anyways, so here we need to understand the dignity of the woman is absolutely important. The dignity for equality and inalienable rights for all the human society is the foundation of the freedom, of the justice and the peace of the world. Has been explained by Dr. Ambedkar. So the civil rights movement, the human rights movement are absolutely important for the human franchise. And this human franchise that we find is absolutely important. My dear friends, I would like to just quote and say that Article 42 of the Constitution of India, given by Dr. Babasaheb Ambedkar, gives the maternity leave to the women with the salary. As far as America is concerned, America is not giving with pay salary to the women in the pregnancy period. So we are far a developed country because of Dr. Babasaheb Ambedkar, and women has to do nothing. It's already done by Dr. Ambedkar. So therefore, the feminist movement and its democratic socialization and the issue of the gender socialization is already been coined by Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar's role as a labor member of Viceroy's Council is absolutely important. He went 400 feet down. And then he saw that the pregnant women were also there. And then he made an announcement and he made an act that they should not be given a job 400 feet below in the mines, coal mines. So this is what we need to understand. 21st February 1946, he declared the time period for the workers and it was fixed for the 8 hours. This is also we need to understand. The constitutional safeguards passed by the various bills. This is another point. Again, going ahead with some of the few points, I would like to just quote and reiterate and say that these speeches are absolutely important. What does it say? It says that the education and knowledge are not only meant for men, but also useful for the women. It wants to develop our next generation. Then there is a need of the women's education. And again, an important point, in 1942, Dr. Ambedkar, while addressing to the Women's Conference of the All India Scheduled Caste Federation, Dalit Women's Federation, says that the society can develop only if the women are conscious about their rights. This is a point that to be taken into consideration. The another important point that I would like to make and submit is that the measurement of the development of a society can be traced by the development of a woman. So this is an important point that I would like to say. I think I have some limited time, but I would like to take only 7 minutes of you, and then I would like to end up and sum up over here. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, because this is organized by the college on the occasion of the 8th March International Women's Day. So I think this relevance point has to be discussed through and through. There should be separate and independent organization of the women. Women should not consider themselves inferior. They should not stay at equal footing. They should stay with the equal footing of the women, is being said by Dr. Ambedkar in his speeches. Again, going ahead with the resolutions regarding the women's empowerment, we have not, as a historian, look after this particular point.
Bahishkrit Bharat 1957 gives the resolutions regarding the women's emancipation of Dr. Babasaheb Ambedkar of All India Scheduled Caste Federation. As far as the Indian Constitution has been considered, Indian Constitution's Part 3 of the Constitution of India is about the fundamental rights, and it has been considered, Part 3 of the Constitution of India is considered as the Magna Carta of the Indian Magna Carta of India is Part 3 of the Constitution of India. So this Indian Constitution is a charter of the women's human right. This is an absolutely important point. I have objections to some of the historians and some of the sociologists, persons, those who consider Gandhian feminism as a feminism, but Dr. Ambedkar's feminism as not a feminism, is something where their attitude has to change and their approach has to change, because they do not understand the importance of Dr. Ambedkar. See, basically in the fundamental rights, Dr. Ambedkar says that the law in consistence with or in derogating of the fundamental rights does not exist. So all the laws of the Manusmriti, Apastambha, Dharma Sutra, Gautam Dharma Sutra, Vishnu Smriti, Narada Smriti, Vedas are been discarded by the fundamental rights by Dr. Ambedkar in Article 13 and 12. This is absolutely important. Going ahead with Article 14 of the Constitution of India, that talks about the state shall not deny any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. So this is where the gender equality is there. Article 15 directly talks about the sex. What does it say? That the state shall not discriminate against any citizens on the grounds of the religion, race, caste, sex, place of birth. So here when you talk about the sex, that means that women genders issues have been taken by Dr. Babasaheb Ambedkar through and through, and 16 talks about the equality of opportunity to the citizens in the matter relating to employment. Was there an equality of opportunity in the matter relating to employment to the women in India for thousands and thousands of years? No. Was the women had the right in respect of the conviction of the offense, the protection was given? No. That is given by the Article 20 of the Constitution of India. Protection of life and personal liberty given by the Article 21 of the Constitution of India. Now 22 talks about the protection against arrest and detention in certain cases. 25 talks about the freedom of consciousness and free profession practices and propagation of religion. Is it not the base of the feminist movement in India? That we need to understand. Article 32 talks about the right to constitutional remedies. Article 39A talks about the equal justice and free legal aid. Article 41 talks about the right to work, to education and public assistance in certain cases. 42 talks about the provision of just and human conditions of the work and maternity relief, living wages and for workers. 43. So we have to understand that the directive principle of the state policy also talks about the equal work, equal pay to the woman is absolutely in the line of the gender. This is my humble submission. Going ahead with the feminist approach is about the Hindu Code Bill. Dr. Ambedkar was one who was resigned for the same. Now let us understand what is Hindu Code Bill and what is the importance of the same. The right of property in the deceased Hindu who died in is also given to the woman. Second point is about the order of succession among the different heirs. The property of the deceased dying in state, the women are given. The law of maintenance is there. Marriage issues are there. Divorce, right to divorce is given. Right to adoption is given. Minority and guardianship is given to the woman is a contribution of Dr. Ambedkar. So women must understand, and this feminist movement must understand Dr. Ambedkar resigned for women. It is recorded in the parliament. This is a humble submission. Now the concept of the ideal society is Dr. Ambedkar has been explaining in his various speeches that we need to understand. Now coming back to conclusion, I do have a right now to go to project-based course of the Viva. I sum up right now and say that Dr. Ambedkar played a pivotal role in the women's emancipation movement. One, Dr. Ambedkar was responsible for including the provisions for the social inclusion, for affirmative policies for the progress of the women in Indian society. Dr. Ambedkar, in order to create a social order based on the values like liberty, equality, and fraternity and social justice and women's rights, played an absolutely important point. Coming back to some of the important points and summing up here right now, Dr. Ambedkar theorized the concept of the ideal society where he propagated the idea of equality of the status, which is important, where women were not given in Indian society, equality of opportunity and equality before law, and the special opportunity for socially deprived women for thousands and thousands of years, those who were deprived. Again, Dr. Ambedkar's writing and speeches are responsible for creating awareness regarding the women's emancipation and the issue of gender equality in India. Dr. Ambedkar, in his capacity of the chairman of the drafting committee of the Constitution of India, have played a decisive role in providing the constitutional safeguards for the overall development of the women. And his Hindu Code Bill is absolutely important, where the further laws are being created for the same. Now, Dr. Ambedkar's role in development of the human rights in the history of the feminism
is absolutely important. This is my humble submission in this national conference. I am absolutely thankful to Dr. Sunavne, Professor Wankade sir, and many others in the principal of the college for inviting me to be here for being the chairperson of this particular session. And I'm delighted to know the various facts about the Maratha period, women's contribution, and it was a delighted to have a wonderful talk, listening to wonderful talk of Dr. Chandrakant Sawan. He has a mastery on the Maratha period, and I do agree with his opinions. I finally submit that it's an absolutely wonderful theme taken by the college on the eve of the 8th March 2022 on the International Women's Day. That is the relevance of feminist movement in 21st century. Here, Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution is landmark and epistle. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir, for your precious presentation and precious knowledge to enrich us on this occasion. Now it's our duty and privilege to express a deep sense of gratitude towards both of you, the dynamic personalities in the field of history. May I now request Professor Lakshman Parad sir to propose a vote of thanks on this occasion. Over to Parad sir. Okay, thank you, sir. Yeah, yes, sir. Yes, sir. Good noon to one and all present over here. Honorable session chairperson of this session, Dr. Sandesh Wagh sir, Professor Department of History, University of Mumbai. Honorable resource person, Dr. Chandrakant S. Chavan sir, Professor, Walchand College of Arts and Science, Solapur. Honorable Chairman of the institution, Sri Vijay Patil sir, respected principal of the college and organizing secretary of one-day national e-conference, Dr. V.S. Sonavne sir, respected vice principal of college, Dr. C.Y. Patil ma'am, and all the participants. It is such an honor for me to get the opportunity to talk to you all the dignitaries. On behalf of organizing committee of one-day national e-conference and Arts, Commerce and Science College Onde, I would like to express my gratitude to our honorable guest speaker, resource person, Dr. Chandrakant S. Chavan sir, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you, sir, for inspiring and encouraging us with your valuable words on this special day. I extend my gratitude to the session chairperson of the session, Dr. Sandesh Wagh sir, Professor, Department of History, University of Mumbai. I also thanks to Professor Sutar sir for giving the introductory speech and all the participants for their active participations. Thank you once again. Thank you, sir. Over to Bansuri, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Chavan sir and Dr. Wagh sir once again. Dear participants, we are going to start, we are going to continue the session 3, that is paper presentation. In the paper presentation, we have 5 participants who are going to present their research papers in the session. And I welcome you all again on behalf of the college organizing committee of this national e-conference. We have the session chairperson in this session paper presentation, Honorable Dr. Priya Mittal ma'am from Hazarimal Somani College of Arts and Science, Mumbai. So at the very beginning of this session, I would like to confirm from Dr. Pandagale sir to whether the paper present. Sir, please confirm me that whether all the paper presenters are present, are joined with us. Please. Hello. Professor Aditi Yadav ma'am is there. And after that, Professor Asha Bamne, Professor Kalpana Siddewar, Dr. Sandeep Bodke is there, and Dr. Lata Hinde. These 5 participants are going to present their research paper in the 3rd session, that is paper presentation.
dear researcher and participants, please note that we are running out of time. Therefore, you have to summarize your research paper in a very brief manner. So please kindly note this one. At the beginning, Dr. Pandagale sir. Hello. Is Dr. Priya Mittal ma'am with us? Join it. Yes, thank Yes, you. sir. Good afternoon. I'm Good Dr. Priya. Very good afternoon, ma'am. Thank you very much, ma'am. At the very beginning of this session, I would like to invite my colleague, Professor Tandel Vipul, to introduce the chairperson of this session, Honorable Dr. Priya Mittal, ma'am. Over to Professor Tandel, sir. I am very happy to introduce our today's chairperson of this session, Dr. Priya Mittal. Dr. Priya Mittal is currently an associate professor and head Department of Political Science, Bhavans College, Andheri, Mumbai. After completing her master in political science from Lady Shri Ram College, University of Delhi, she earned her MPhil from University of Delhi in 1995 and PhD from the University of Mumbai in 2014. She started her professional career as a research fellow at the Indian Institute of Public Administration, New Delhi in 1996. She has also been a faculty at Miranda House, New Delhi, St. Joseph College, Bangalore, and V.G. Vaze College, Mumbai. Dr. Priya ma'am has published a number of articles and research papers in edited books and journal of repute, and has co-author of 2 books. Also, she has presented research paper at various national and international conferences. Her research interests include collaborative governance, interdisciplinary studies in governance and business practices, development administration, comparative politics, corporate ethics, environment, and sustainability. I welcome you, ma'am, as a chairperson for this session. Thank you, sir. Over to Bansodi, sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, sir, for this kind introduction. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, we are going to start the paper presentation now. I will call upon the researcher who is going to present this paper one by one. We have 3 paper presenters over here, ma'am. At the very outset, I request Professor Aditi Yadav, who is going to talk on image of women in Indian media, psychological perspective and feminism. Over to Aditi Yadav. Sir, can you please enable me to share my screen? Yes, definitely. You can share now. Yes, but it is not shown. Option is not shown. Yes, now I can see it. Just a minute. Yeah. Okay. Hope my screen is visible. Yes. Yes, ma'am. It is visible. Okay. The topic of my research is image of women in Indian media, psychological perspective and feminism. Since we have limited time, I will go very briefly. The idea is there is existence of media patriarchy in Indian media as it is in any other field, and because of media patriarchy means patriarchal system dominates the field of media, and this issue was criticized by feminists in India because it leads to strengthening gender stereotypes and negative
portrayal of the image of the woman. And at the same time, we need to understand that media is a powerful tool to empower the woman. Objectives of my studies are to study positive as well as negative effects of Indian media on image of the women, and to find out the root causes of derogation of image of women in Indian media, and to understand the capacity of media to serve as a tool to empower the woman. The statement of problem is portrayal of women in Indian media is becoming a crucial issue that affects self-concept of women, as media is dominated by patriarchal system, which strengthens the gender stereotypes in the society. And I have used analytical method of review of literature for this research article. Now there are key concepts in the paper. Issues related to negative portrayal of women in Indian media. Since the media patriarchy exists, these are the issues that we can see. First is gender stereotypes are strengthened through various advertisements and through various TV serials. Like women are represented as handling household activities, cooking, cleaning, etc. And they are caring for the family, while men are represented as taking valuable decisions involve finance, etc. Okay, so such advertisements and such TV serials strengthen the gender stereotypes in the society. Also, it leads to objectification of women. Often women are represented as sex symbols or sex objects in media through various item songs or through various advertisement related to products of the men, like men undergarments or men perfumes or deos, where there is no connection but women are shown as an object. Then media glorifies the customs and traditions that derogate dignity of women, like devdasi, child marriage, virginity test. Such concepts or such traditions are glorified in some TV serials. There is unrealistic representations of working women. Okay, whenever in TV serials or even in the cinemas, working woman is shown as multitasking, handling all the responsibilities perfectly at her household core as well as at her workplace. And media also imposes strict beauty standards, like women are expected to be thin, women are expected to be fair. Okay, so such beauty standards are imposed by media. Now, we will see how psychologically it affects the women. Okay, first of all, it leads to superwoman syndrome. Superwoman syndrome means what? Women think that they should handle each and everything perfectly. They should handle their family responsibilities as well as work responsibilities perfectly. Since models in the TV serials, okay, they are shown doing everything perfectly. So even society expects from women to be perfect at every core. This leads to superwoman syndrome, and if they do not satisfy these needs, they experience chronic worry, fatigue, burnout. Okay, after that, body image disorder. Since the media imposes strict beauty standards, like being fair, zero size figure, or being thin. Okay, such beauty standards leads to dissatisfaction with one's own body image. And this lead to various psychological disorders or eating disorders like anorexia or bulimia, means reducing 25% of one's ideal weight. Okay, still they experience dissatisfaction with their body image. It further leads to the chronic worry or depression. Depression and anxiety are the common effect, and they are the wholesome effects of all these above mentioned disorder or these above mentioned syndromes, like superwoman syndrome, yeah, body image disorder. Okay, all these finally leads to depression and anxiety. Also, media shapes the poor self-concept. Women thinks that they are vulnerable, they are dependable, and they should be submissive, and they cannot do anything valuable. Okay, so such poor self-concept is cultivated by media. Then there are feminist perspective on media influence on women.
Like liberal feminism claims that there should be equal status shown for men and women in media. So male actresses and female actresses in their TV serials or cinema, they should be given equal status. Then radical feminism, it says that there should be more number of employees in media that are females or that are women. So there should be women producer, women directors, women news reporters. Okay, the number of women employees will increase in media. It will lead to reducing the media patriarchy. And social feminism focuses on how we can use the media for empowering women in weaker sections. Yeah. After that, these are the feminist movement for change in Indian media. Basically, it deals with negative image created by Indian media of a woman. So dark is beautiful. It says that beauty has nothing to do with the skin color. Actresses like Nandita Das has participated in this movement. Then unfair and lovely is also says that fairness has no connection with the beauty. And spoiled modern Indian woman, it critically reviews the TV serials and cinemas and TV shows shown on the media, as well as it publishes the feminist poetries. So these are the feminist movements that leads to shape the media in positive way. And here are certain positive steps by media to empower women. As we have already said that media is effective in empowering women also. There is not just negative side, but a positive side. It gives publicity to women education campaigns, health and hygiene issues like menstrual hygiene and malnutrition, anemia, etc. It also creates awareness about family planning programs. It also raises the voice and of the woman regarding different concerns and also makes aware them of their own rights. It also provides platform for Indian feminists to put forward their thoughts and reach to the common people. Also, it leads to breaking stereotypes through cinemas and advertisement. For example, cinemas like Queen or cinemas like Mary Kom, they have really helpful for breaking the stereotypes. And advertisement like New Safola ad, where the husband has shown taking care of the health of his working wife's heart. Finally, the analysis, media patriarchy that leads to various issues that are harmful for the self-concept and psychological health of the Indian women. Indian media also shape unrealistic expectations from the society, and media is an effective tool for women empowerment. Finally, the conclusion, media patriarchy is harmful for the society as a whole. However, media is an effective tool for effective instrument for social change. Indian feminists can use the media effectively for women empowerment and to establish gender equity in the society. Here are references of some books and research papers that I have used. And thank you very much. Thank you, Professor Aditi Yadav. After that, I would like to invite Professor Asha Bamne, who is going to talk on ecofeminism, feminism of ecology. Over to Professor Bamne, ma'am. Yes, you're audible, ma'am. So my topic is ecofeminism. The feminism of ecofeminism is a multicultural perspective on the interconnectedness of social systems of domination and the domination of non-human nature. It recognizes the cultural and political links between ecology and feminism. Ecofeminism is a branch of feminism that sees the environmentalism and the relationship between women and nature as fundamental, as a foundational of his analysis and practice. As Mary Miller says, that ecofeminism is a movement that sees a connection between the exploitation and degradation of the natural world and the subordination and oppression of women as well as the nature. The origin of the ecofeminism. Now see, the modern ecofeminist movement is the outcome of the environmentalism and feminism.
where these two flows might be combined together to promote respect for women and the natural world, and were motivated by the notion that a long hierarchical precedent of associating women with nature and led to the oppression of both. Though the theory, ecological feminism has been around for a number of years, it emerged as a political movement in 1970s. Ecofeminism, this term was coined first by the French feminist philosopher Francois de Yuan in his book entitled Le Feminisme, la Mort in 1974. Actually, this ecofeminism, this is the outcome of the patriarchy system of social structures and practices in which men hold primary power and dominate, oppress, even exploit women. It is based on an ideology of male superiority over female as well as the nature. It views privilege masculine over feminine, reason over emotion, competition over cooperation, and force over empathy. In this patriarchal system, the subordination takes in various forms, in the form of discrimination, disregard, insult, control, exploitation, oppression, and even violence also. In the history, the situation was not like this. In the history of mankind, this scenario was this scenario was superiorism was not as it is today, because patriarchal societies, women and nature were really worshipped. They both were considered valuable as life giver, and so special place was consideration and concern was given to them. But during the last centuries, and especially after the emergence of industrial revolution, we see that there is a degradation in nature, to our nature, that has been witnessed. The degradation has occurred in many natural elements, just like air, water, soil, global warming, pollution, water contamination, unstable weather, and many dysfunctions on of our stable earth. Now we see what is the nature of this ecofeminism. Women and nature has a strong bond because they both are life giver and saver too. Women and nature both are not only creative but the sole base of the entire biological system, and especially intermingled because of their shared history of patriarchal oppression. Uh, but now the time has come to highlight the ecofeminism with more special aspects, as nowadays nature has become merely a resource to sustain an artificial environment that has remarkably replaced the original nature itself. We see that everywhere the people, they are replacing the artificial natural things in their houses also. We do not live with nature, but try to live above it, of it, I can say, and its consequences are being seen from last few decades in the form of irreparable damage of our the only earth, that is the only one habitable and most precious planet in the universe. Our so-called progress that is going to be endangered, are the progress overpowered the natural resources. Now, what is the function? What is the main object of this ecofeminism? All ecofeminists, they work toward the development of theory and action as well. They acknowledge the problems inherent in the patriarchal and the hierarchical systems. Basic insights of ecofeminism is conceptions of nature of women having linked earth as a female and female as earthy. Devaluation and abuse of nature and women have gone hand in hand. But now, finally, the object of ecofeminism is awareness. It is awareness that begins with realization that the exploitation of nature is intimately linked the man and nature as well as the human degradation. So ecofeminism put forth the idea that life in nature is meant through cooperation, mutual care, and love. The, the primary aim the primary aim of this movement is to address and eliminate all forms of dominations by recognizing and embracing the interdependence and connection human above with earth. Ecofeminists understand human beings are not being separate or above from nature, but
only the one small part of this precious nature. There are many more ecofeminist movements are there, can be seen in our society or in our world. We can say that in our India, in Uttarakhand in 1973, there was Chipko movement. That movement was to protect forest from deforestation. That was run by especially the ladies. And in Kenya in 1977, the Green Belt movement was also there, which was activated or which was initiated by the Wangari Maathai, the political activist professor, that is for rural tree plantation program, which has created definitely a green belt was there. That means the trees were there. And in the last, the ecofeminism is an ideology and movement that sees the climate change, gender equality, social injustice, more broadly related issues and tied to masculine dominance in society. Ecofeminism holds that most environmental issues can be solved by mutual love and care about the nature. There are several subordinate sub-branches of these movements also, but in the last, the ecofeminists believe that people are equal regardless of their race, citizenship, status, gender, and sexuality also. Ecofeminism calls for putting the end of hierarchy because it is the only when humanity learns oppression and domination that will stop destroying its only habitat, that is our earth. And at last, our earth can fulfill all the needs, but never the greeds. Thank you. Thank you, Professor Bamne ma'am. After that, I would like to invite Professor Kalpana Siddhiwat, who is going to talk on Strivad Samasya, Avane wa Upay. Over to Kalpana Siddhiwat. Yes, I'm audible, sir? Yes, yes, ma'am, you are audible. Okay. Can I share my screen with all of you? Yes, ma'am. Certain. Okay, फाईन. सगळ्यांना पहिल्यांदा धन्यवाद. महाविद्यालयाने आम्हाला संधी दिल्याबद्दल पेपर प्रेझेंटेशनची अशा विषयावर नुकताच जागतिक महिला दिन आपण सगळ्यांनी साजरा केला. त्या पार्श्वभूमीवर या विषयाची प्रस्तुतता ही आपण नाकारू शकत नाही. आणि परत परत हाच विषय बऱ्याचशा कॉन्फरन्सेस आणि सेमिनार मधून उच्चारला जातो किंवा त्याचा विषय असतो बेसिकली. तर या विषयावरती थोडंसं आपण माझ्या परीने मी फोकस करण्याचा प्रयत्न केला. माझा बेसिक फोकस असणार आहे तो म्हणजे कोरोना काळातल्या स्त्रियांच्या समस्या काय राहिलेल्या आहेत, वेगवेगळ्या स्त्रियांच्या वेगवेगळ्या मी मुद्दाम वापरतेय कारण देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम टू गेट इट आयडेंटिटी ॲज अ विमेन, ॲज अ ह्युमन बीइंग सेपरेटली. So that is my point. So there is a one question I will ask all of you. स्त्रीवादांची समस्या, आव्हाने आणि उपाय पाहत असताना मला सगळ्यांना तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे आणि तो म्हणजे हु इज अ मॅन, हु इज अ वुमन, आर वी नॉट वन ॲज अ ह्युमन? आणि हे जोपर्यंत रेकॉग्नाइज होत नाही किंवा ऍक्सेप्ट होत नाही ॲज अ ह्युमन, सो हा एक सवाल सगळ्याच परिषदांमधनं, सगळ्याच कॉन्फरन्सेस, सेमिनार मधनं आपल्याला चर्चेला घ्यावा लागणार आहे आणि त्याच्यावरती काही उपायही आपल्याला करावा लागणार आहे. तर फेमिनिझमचा अर्थ आपल्या सकाळपासून मी सगळं हे ऐकत आहे ऑनलाईन पद्धतीने असल्यामुळे त्याचा एक खूप मोठा फायदा की आपण ऑनलाईन पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी ग्रास्प करू शकतो आणि त्याच्यावरती आपण आपलेही मुद्दे कनेक्ट करू शकतो. तर बेसिकली फेमिनिझमचा अर्थ कुठलीही मुवमेंट किंवा कुठलीही विचारधारा ही जेव्हा आपण म्हणतो की ती उदयाला येणं, ह्याच्या मागे जे रिझन्स असतं ते मेजर रिझन म्हणजे शोषण. पहिलं बेसिक कारण म्हणजे शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, डॉमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, या सगळ्या कंटेक्स्ट मध्ये आपल्याला शोषणाचे हे सगळे फॉर्म्स दिसतात. आणि स्त्रियांच्या शोषणाचा तर सगळा इतिहास सगळ्या डिग्निटरीजनी मांडलेला आहे. मी म्हणलं तसं सकाळपासून मी हे सगळं ऐकत आहे, त्यामुळे मला इतिहास, लिटरेचर किंवा तत्संबंधित सगळ्या आयामांनी आणि ते आता मॉडर्न एजेस मध्ये फेमिनिझमचा नवा जो आस्पेक्ट इकॉलॉजिकल फेमिनिझम पण मॅडम आता बोलल्या, मीडिया मधला फेमिनिझम पण बोलून झालेला आहे, इतिहास आणि लिटरेचर मधला फेमिनिझम बोलून झालेला आहे. म्हणजे एकंदरीत शोषणाच्या ह्या सगळ्या व्यवस्थांमध्ये स्त्री हा घटक कसा सफर करतो याबद्दलची अनेक उदाहरणं
आपल्याला सकाळपासून वेगवेगळ्या डिग्निटीज मी सांगितलेली आहेत. तर एकंदरीत शोषणाच्या संदर्भात वंचिततेमधील समता अधोरेखित करतात. सगळ्याच मुवमेंट्स बद्दल मी हा थोडासा सर्वसाधारण जाणारा अर्थ घेतलेला आहे. आणि ज्याला आपण म्हणतो की चळवळीची दुसरी जी बाजू असते ती म्हणजे वंचित वर्गातील माणसे व लाभधारक वर्गातील माणसे ही माणूस म्हणून समानच आहेत, हे सुद्धा चळवळी किंवा विचारधारा ह्या ठणकावून सांगत असतात. आणि मग या चळवळी कोण करतं, तर ज्यांना शोषणाचे जे घटक बळी ठरलेले असतात आणि त्यातही महिला वर्ग हा मोठ्या प्रमाणावर शोषणाचा बळी ठरलेला आहे. आणि म्हणून या महिला वर्गामध्ये आलेलं आत्मभान आणि त्यासाठी फेमिनिझम कशाला काउंटर करतो, तर ही जी फ्रेमवर्क मी उचललेली आहे गुगलवरून की ट्रेडिशनल जेंडर स्टिरिओटाइप्स हे जे आहे की फेमिनिटी म्हणजे काय आणि मास्क्युलिनिटी म्हणजे काय, ह्या ज्या हा जो वेगळेपणा समाज रचित ज्याला आपण म्हणतो, आणि कारण ह्या बेसिसवर जेंडर स्ट्रक्चर जे काही आपण केलेलं आहे त्या बेसिसवर ही मोमेंट्स किंवा ही विचारधारा पुढे आलेली आहे. म्हणून जस्ट मी हे हायलाइट करू इच्छित होते की का फेमिनिझम येतो किंवा का स्त्रीवादी चळवळी उदयाला आलेल्या आहेत वेस्टर्न कम्युनिटीमध्ये आणि आता आपण म्हणू शकतो की आधुनिक किंवा विकसनशील देशामध्ये सुद्धा. तर त्याचं हे कारण मला तरी वाटतं, म्हणून मी ते जस्ट विथ द डायग्राम आणि ह्या पद्धतीने ते आणायचा प्रयत्न केलेला आहे. फेमिनिझमच्या वेगवेगळ्या वेव्स आपण ऐकत आहोत. तर ह्या सगळ्या वेव्स सुद्धा फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड आणि फोर्थ वेव्ह जी आपल्याला या काळापर्यंत आणून सोडते 2005 पर्यंत, आणि त्यांच्या डिमांड्स काय आहेत त्या डिमांड्सला आपण फोकस करणार आहे. एक छोटेखानी टेबल आपल्या पुढे मांडू मी इच्छिते, त्याच्यावर तुम्ही नजर टाका की बेसिकली म्हणजे स्त्रीवादांच्या मागण्या काय राहिलेल्या आहेत काळाच्या बदलत्या काळानुषंगाने आणि त्या कितपत फुलफिल करण्यात राज्य नावाची संस्था ही यशस्वी ठरली का अयशस्वी ठरली याबद्दल सुद्धा आपल्याला त्याचा विचार करावा लागणार आहे. आणि ह्या परिषदेचं तेच उद्दिष्ट असे आहे की आपल्याला ते शोधायचं, यश आणि अपयश राज्य संस्थेचंच नाही तर इतर सुद्धा ज्याच्यामध्ये आपण अनेक आत्ताच्या घडीला बोलतो आहोत की एनजीओज म्हणा किंवा तत्सम या सगळ्या गोष्टी आहेत. तर बेसिकली वेगवेगळ्या वेव्स आणि त्याच्या मागण्या आणि त्याचं फीचर काय, वैशिष्ट्य काय त्या काळातल्या स्त्रीवादी चळवळीचं आणि त्याला लीड करणारे कुठले एजंट्स आपल्याला वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये आणि आपल्या इकडे पण जेव्हा आपण म्हणतो की नवोदित राष्ट्रांच्या मध्ये विकसनशील राष्ट्रांच्या मध्ये सुद्धा. तर ह्या वेव्स नंतर मी जस्ट एक फोकस करू इच्छिते की सामाजिक स्त्रीवादी चळवळ ही बेसिकली नवसामाजिक चळवळ म्हणून ओळखली जाते. आणि आपण हेही गृहीत धरून चाललो, आपण इतिहास बघितलेला आहे, एका डिग्निटरीने तेही मांडलेलं आहे की बेसिकली इतिहासापासूनच स्त्रीवादाच्या भूमिकांना एक स्पष्टता यायला सुरुवात झाली. पण माझं एक म्हणणं होतं, लिटरेचरवर एक आपले डिग्निटरी बोलत होते त्याच्याबद्दल मला असं म्हणायचं होतं की सगळा म्हणजे साहित्याचा सगळा आवाकाच मुळामध्ये पुरुष रचित आहे. आणि आता त्या वेव्स मध्ये जेव्हा आपण बघतो तेव्हा स्त्रिया स्वतःचं लेखन करायला लागलेल्या आहेत किंवा त्यांच्या व्यथावेदनांची मांडणी करायला लागलेल्या आहेत. म्हणून साहित्याचा नवा बाज ज्याला आपण म्हणतो जो बाज स्त्रीवादी आहे बेसिकली. म्हणून मला म्हणायचं की 60च्या दशकानंतर जेव्हा नवसामाजिक चळवळी याला येऊ लागल्या आणि त्याचं महत्वाचं वैशिष्ट्य नवसामाजिक चळवळीचं काय राहिलेलं आहे ते मी इथं दाखवण्याचा त्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते म्हणजे सत्तेच्या अधिकाधिक लोकशाहीकरणाची मागणी, लोकशाहीची तत्वे पारदर्शी आणि उत्तरदायी असणाऱ्या खुल्या स्वरूपाच्या संरचनांवरती चळवळींचा भर दिसतो, ज्याच्यामध्ये दलित चळवळ येते, ज्याच्यामध्ये पर्यावरण हक्काची चळवळ येते, ज्याच्यामध्ये स्त्री चळवळ येते आणि ज्याच्यामध्ये विद्यार्थी चळवळ येते, कामगार चळवळ येते. आणि त्या अनुषंगाने आता आपण ज्याला म्हणालो की म्हणजे मानवी हक्क आणि पर्यावरणवादी चळवळी सुद्धा यामध्ये येतात की ज्यांचं म्हणणं आहे की त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की सत्तेच्या अधिकाधिक लोकशाहीकरणाची मागणी म्हणजे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशनचा भाग आहेच, पण एक माणूस म्हणून रिकॉग्निशन मिळणं, मान्यता मिळणं सामाजिक परिघामध्ये किंवा आर्थिक परिघामध्ये किंवा तत्सम सगळ्याच परिघावरती जेव्हा माणसाला डेव्हलप व्हायचं असतं तेव्हा तिला तो अवकाश प्राप्त करून देणं हे जी कमिटमेंट आहे व्यवस्थेची, ती जर का फ्लेक्झिबल किंवा ती जर का उताराच्याच बाजूने जात असेल तर मात्र या समाज घटकांना मग त्यामध्ये स्त्रिया सुद्धा अपवाद नाहीत. तर त्या स्त्रीवादी चळवळी किंवा स्त्रीवाद हा सामाजिक विचारधारेचा किंवा चळवळीचाच एक आविष्कार आहे असं आपण म्हणालो तरी ते वावगं ठरणार नाही असं मला वाटतं. एकाच वेळी स्त्रीवाद दोन पद्धतीने भूमिका करतो की ज्याच्यामध्ये तो म्हणतो की शासन व्यवहारातील ज्या उणिवा आहेत आणि त्याच्यावरती पोट ठेवणं, मग कायद्याच्या चौकटीत, धोरणांच्या चौकटीमध्ये
संधींच्या चौकटीमध्ये हा सगळ्या ज्या शासन व्यवहारातल्या उणीवांवरती बोट ठेवतात, तर दुसऱ्या बाजूला व्यवस्थांच्या शोषणाला विरोध करत असतात. मग ह्या व्यवस्था कल्चरल आहेत, या व्यवस्था इकॉनॉमिकल आहेत, एज्युकेशनल आहेत आणि रिलिजियस सुद्धा आहेत असं मी म्हणेन. आणि त्याच्या पुढे मग जाऊन आपण जेव्हा बघतो थोडीशी व्याख्या आपण बघूया. द फेमिनिस्ट मुवमेंट काय आहे. जस्ट फेमिनिस्ट मुवमेंट फर्स्ट ह्या सगळ्यांना अधोरेखित करते. सेकंड वेव्ह इक्वल पे आणि पेट्रियार्कीला थर्ड वेव्ह अपोज करते. तर ह्याच्यामध्ये पुरुषसत्ताक नावाची संकल्पना अधोरेखित केल्याशिवाय स्त्रीवादाचा म्हणजे अर्थ किंवा लावता येत नाही किंवा स्त्रीवादाची भूमिका स्पष्ट करता येत नाही. आणि हा पेट्रियार्कल सोसायटीचं जे मॉडेल आहे त्याला खूप स्ट्रॉंग बेस आहेत. आणि ते बेस जे आहेत ते म्हणजे रिलिजन, कल्चर, प्रॅक्टिसेस. रिलिजियस आणि कल्चरल प्रॅक्टिसेस हा त्याचा बेस आहे. आणि त्यातल्या त्यात अजून सोशल पॅरामीटर म्हणून कास्ट ही सुद्धा त्यामध्ये अधोरेखित करावी लागते. आणि या बेसिसवर आम्हाला हे समजून घ्यावं लागतं की स्त्रीवाद एकाच वेळी कोणकोणत्या काउंटर पार्ट म्हणजे कुठल्या कुठल्या घटकाला काउंटर करू इच्छितो किंवा करण्याचा प्रयत्न करतो, ज्याच्यासाठी मग इक्वल पे हवा असेल किंवा इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी हवी असेल तर पेट्रियार्कलच्या कुठल्या स्ट्रक्चरला छेद देण्याचा प्रयत्न फेमिनिझम करतो याबद्दलही आम्हाला बोलावं लागेल. आता मी माझ्या कोर पार्टवर येते, ज्याच्यामध्ये मी काही हायलाईट दिलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये मी असं म्हणते की पितृसत्ताक व धर्मसत्ताक व्यवस्थेने निर्माण केलेले जे साचे आहेत ज्याला म्हणतो फेमिनिझम ही सोशल स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थेला काउंटर करणारी आयडिया. त्यामुळे फेमिनिझम बद्दल बोलत असताना आम्हाला समाज रचित साचे काय आहेत बेसिकली हे आम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि हे साचे कुठल्या प्रकारचं शोषण स्त्रियांचं करतात हेही आम्हाला बघितलं गेलं पाहिजे. आणि मग त्या साच्यांना विरोध आणि कुठल्या निकषांच्या आधारे करतात. कारण आमचे पॅरामीटर्स पण आहेत की जात हे पॅरामीटर आहे, धर्म हे पॅरामीटर आहे, संस्कृती हे पॅरामीटर आहेत, निकष आहेत. त्या निकषांच्या आधारावरती स्त्रियांचं वेगवेगळ्या पद्धतीने शोषण करण्याची सवय ही पितृसत्ताक व्यवस्थेला लागलेली आहे. आणि ते सवय मोडणं हा उपायामध्ये आपण बोलूच या. जस्ट मी ह्याच्यावरती कोरोना काळातल्या ह्याच्यावरती बोलेन. स्त्रियांना बेसिकली फेमिनिझम असल्यामुळे मी स्त्रिया हा एक वर्किंग क्लास म्हणून इथं बघितला, तर ज्याच्यामध्ये वर्क फ्रॉम होम विथ वर्क फॉर होम अशी सगळ्याच महिलांची स्थिती इन्क्लुडिंग मी, तर हे चित्र मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळालं. आणि यामुळे काय होतं की तिचा जो अवकाश आहे, तिचा भावनिक, शारीरिक, मानसिक किंवा सोशल अवकाश, सामाजिक अवकाश, आर्थिक अवकाश हा सगळा अवकाशच मर्यादित झाला. आणि ह्यामुळे तिच्या कर्तृत्वाला, तिच्या उंचीला, ज्याला म्हणून आपण एक मर्यादा आलेली दिसते. म्हणजे वर्क फ्रॉम होम विथ वर्क फॉर होम. पुरुषांच्या वाट्याला काय आलेलं हे सगळे तुम्ही पुरुष सुद्धा ऍग्री असाल या माझ्या मताशी, अशी मी आशा करते. तुम्ही सुद्धा सगळेजण वर्क फ्रॉम होम करत होता, पण तुमची स्थिती वेगळी होती पुरुष म्हणून. हे तुम्ही एक्सपिरियन्शियली तुम्ही हे स्वतःलाच काही प्रश्न विचारा. सो यू विल गेट इट माय पॉइंट. दिस वर्क फ्रॉम होम हे पुरुषांसाठी अगदी सोयीचं होतं, पण बायकांसाठी, महिलांसाठी कोरोना काळामध्ये वर्क फ्रॉम होम करता करता तिच्या वाट्याला आलेलं विथ वर्क फॉर होम ही जी ऍडिशनल गोष्ट आहे ही तिची कुचंबना करणारी होती. आणि ज्या अपेक्षा वर्क फ्रॉम होमच्या सगळ्या फेज मध्ये झालेल्या लोकांच्या वाटलेल्या होत्या, घरातल्या आणि बाहेरच्या सुद्धा, तर त्या अपेक्षांना पुरता महिलांची खूप वाताहत झालेली दिसते. आणि त्याचे काही सर्वे सुद्धा आलेले आहेत. त्याचबरोबर वर्क फॉर होम करताना अजून एक महत्वाचं अधोरेखित मला करावं असं वाटतं कोरोना काळातल्या स्त्रीवादाच्या अनुषंगाने काय मुद्दे, तर ते म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. आणि बेसिकली कोरोनाच्या काळामध्ये ह्यामध्ये आपल्याला लक्षात येतं की सगळ्यांच्या अपेक्षांना पूर्ण हे कुठल्याही माणसाला शक्य नाही. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचारात वाढ ही वेगवेगळ्या पद्धतीने झाली. म्हणजे स्त्रियांचं मानसिक शोषण, भावनिक शोषण, शारीरिक शोषण या सगळ्या फ्रंटवर कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये वाढ झालेली आपल्याला दिसून येते. आणि याचबरोबर तिसरा मुद्दा मी इथं हायलाइट करू इच्छिते की घटस्फोटाच्या प्रमाणातही वाढ झाली. आता दोन व्यक्ती तेव्हा दोन्हीही वर्किंग असतात, मेन अँड विमेन, दे शुड हॅव टू अंडरस्टँड इच अदर. आणि म्हणून घटस्फोटाच्या प्रमाणात वाढ का झाली? कारण महिला आहे म्हणून गृहीत धरणं हे जे पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचं
हे गृहीत धरणं कुठेतरी कोरोनाच्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलं. आणि गृहीत धरलेली महिला ही जर का त्यांच्या अपेक्षेला उतरत नसेल तर मात्र तू हे करत नाहीस किंवा तू हे वागत नाहीस, तू बायको म्हणून हे केलं पाहिजेस, तू आई म्हणून हे केलं पाहिजे, तू सून म्हणून हे केलं पाहिजेस, किंवा ह्या आणि अशा अनेक अपेक्षा पूर्ण करताना जर का तिथे कमी पडायला लागलं किंवा आणि स्त्रियांना आता वर्किंग वुमन बद्दल आपण बेसिकली हे बोलूयात की वर्किंग वुमेनच्या अनुषंगाने काम करणाऱ्या महिला वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये तर त्यांच्या ज्या अस्मिता आहेत, त्यांची जी आयडेंटिटी आहे ही कुठेतरी अंडर एस्टिमेट होत होती आणि त्यामुळे एक स्वतःचं अस्तित्व राखून ठेवण्याच्या भूमिकेमध्ये स्त्रियांनी सुद्धा घटस्फोटाच्या बाजूने कौल दिलेला दिसतो. कारण एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून जे समाजामध्ये त्यांच्या त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह क्षेत्रामध्ये जी आयडेंटिटी तिला मिळाली असते ती जपण्याचं काम, तिला संसारही जपायचा असतो. असं मी म्हणत नाही की बाईला संसार जपायचा नसतो, पण बाईलाही जपायचा असतो आणि पुरुषांनाही जपायचा असतो. पण हे कुठेतरी अंडरस्टँडिंग कॉन्ट्रावर्शियल लेवलवर गेल्या कारणाने मोठ्या प्रमाणामध्ये घटस्फोटाचं प्रमाण देखील इथल्या समाजामध्ये आपल्या वाढलेलं दिसतं. नंतर मुलींच्या बाबतीत बालविवाहाचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे. कोरोना म्हणजे राजकीय व्यवस्थेने एक एवढी मोठी सोय करून ठेवलेली आहे असं मी म्हणेन कोरोनाच्या काळामध्ये की गावोगावी तुमच्या आमच्या गावात तुमच्या आमच्या नातेवाईकामध्ये सुद्धा अनेक मुलींचे बालविवाह अक्षरशः उरकण्यात आले असं मी म्हणेन. कारण का कोरोनाच्या काळात जमावबंदीला विरोध होता, जमावबंदी निश्चित केला गेली होती, नियम आले होते आणि त्यामुळे जोपर्यंत लोकांना बोलवण्याची गरज नाही हा जो शासकीय नियम हा या विवाह संस्थेने सुद्धा स्वतःला लागू केला आणि बेसिकली कमीत कमी लोकांमध्ये आता त्याचं कारण असं होतं की कोरोनाचा प्रसार होऊ नये हे कारण होतं राज्य संस्थेकडून. पण या बाबतीत कल्चरल, रिलिजियस आणि सोशल स्ट्रक्चरने त्याचा फायदा कसा घेतला? कोणाचे बालविवाह जास्त झाले? मुलींचे झाले. मुलांचे बालविवाह होण्याचं प्रमाण कदाचित खूप अत्यल्प असेल किंवा नसेल सुद्धा, पण मुलींच्या बालविवाहाचं प्रमाण वाढल्या कारणाने अल्पवयात मुलींना म्हणजे बालमाता आणि बाल माता संगोपनाची जबाबदारी म्हणा किंवा बालमातांचा मृत्यू म्हणा, बालकांचा मृत्यू म्हणा आणि त्या बालविवाह झाल्या कारणाने तिच्यावर होणारे शारीरिक अत्याचार म्हणा किंवा त्या संबंधित मानसिक भावनिक कुठलीच वाढ न झालेल्या अगदी 15 ते आता तर सरकारनेच वय 21 केलेलं आहे. Sorry to interrupt, ma'am. Please follow the time limit. Yes, sir. Only 2 minutes I will take it. Okay. कामगारांच्या स्थलांतराबद्दलचा पण इथे पण महिला सफर झालेल्या आहेत. असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांच्या महिलाबद्दल बोलताना मी माझ्या पेपरमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे की कागद काच पत्रा विकणाऱ्या महिला, साफसफाई करणाऱ्या महिला किंवा इटसेल्फ आरोग्य क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या नर्सेस यांचं पण म्हणजे ते असंघटित नाहीये, संघटित क्षेत्रातले आहेत, पण मी दोन्ही क्षेत्रातील महिलांच्या परिस्थितीबद्दल माझ्या रिसर्च पेपरमध्ये मांडलेला आहे. त्याबरोबर विद्यार्थिनी ज्या आहेत, मुली ज्या शिक्षणासाठी शहरी भागामध्ये आलेल्या दिसतात पण त्यांना पेंडेमिकच्या काळामध्ये परत एकदा पेट्रियार्कल सेट्स मध्ये सोसायटी स्ट्रक्चर मध्ये जावं लागलं, त्यामुळे त्यांना वेगळ्या अर्थाने आपण हे म्हणू शकतो की त्यांना सफर व्हावं लागलं. नंतर LGBTQIA2S हा पण एक खूप मोठा सेक्शन ऑफ द पार्ट आहे, सोसायटी आहे, तर याच्याकडेही आपल्याला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आणि वेश्या व्यवसायात काम करणाऱ्या स्त्रियांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर सफर व्हावं लागलेलं आहे. त्यामुळे हे माझे कोर पॉइंट होते की कोरोना महामारीच्या काळामध्ये फेमिनिझमनी या सगळ्या प्रश्नांवरती याची कशी दखल घेतली पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने just I will come with conclusion part. So there will be a 1 second. Yes, men and women have their own background and culture. The community has paraded the notion of the two genders. Most of the world community assume that men as a superior and women as inferior. So feminist theory is a tool for women to fight for their rights for freedom in the world of politics, social, economic and literature as well. So there is a some conclusion regarding this to understand it and to make a changes into the mindsets of the common people, basically male. So that will be changes will happen into the institutional at the institutional level as well as other part of the society. So इथे समाजातील शोषणाधिष्ठित सामाजिक संस्थांच्या पुनर्मूल्यांकनाची आज गरज आहे आणि स्त्रीवाद पर्यायी व्यवस्थांची मागणी करतो
तर ते पर्यायी व्यवस्था ज्या आहेत त्या आमच्याकडे निर्माण करणं ही तुमची आमची ऍज अ अकॅडमिशियन, ऍज अ पार्ट ऑफ सोसायटी म्हणून एक जबाबदारी निश्चित आहे. सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. सो थँक्स अ लॉट. Yes, thank you, Kalpana ma'am. After that, now may I invite Dr. Sandeep Bodke. He is going to talk on a study of social relationship skill of female student teachers. Over to Dr. Sandeep Bodke. Good evening, present everyone for this national conference. Honorable Chairperson of this session, myself, Professor Dr. Sandeep Bodke from Gokhale Education Society's College of Education and Research, Parel, Mumbai 12. Today I am going to present a research paper on a study of social relationship skill of female student teachers. As I am working in B.Ed college, so we have student female teachers. They are in more numbers always every year. Out of 50 students, we are having 40 to 45 girl student teachers. So I was interested in knowing their social relationship skills, how much skill they have. So the present paper deals with the social relationship skills of female student teachers. I tried to adopt a descriptive survey method. The researcher collected data through a 3-point rating scale was prepared by me, and it was circulated in 32 female student teachers of B.Ed course enrolled under University of Mumbai. A very simple statistic, that is percentage, I have used to analyze the data. The collected data presented in the form of graphs as well as the narration, brief narration of each graph has been given below my paper that you can see in the conference proceedings. So my objectives, only one objective I kept, that was to study opinion of female student teachers about the social relationship, how much social relationship they have. My first question was, I negotiate with others very well. Second was, I connect with other people very well. And likewise, there were 10 questions, and out of that 10 questions, I prepared a Google form circulated among 32 female student teachers, and the data which I have got, the findings are female student teachers frequently negotiate with others, right? Though female teachers or the students, they live in Mumbai, which we call as a modern city, advanced city, right? Which gives lots of freedom, right, of thought as well as decisions. And first finding is female student teachers frequently negotiate with others. So they have a negotiation skill. They always negotiate with others. Female student teachers frequently connect with other people very well. That could be the exposure they have with that lots of social media, the mobile phones they have, they are using internets, Facebook, Instagram, right? And they are highly educated. Mumbai city girls or student teachers, they are more exposed to the external world. And that's why they frequently connect with other people very well. They are not only connecting with people, but they are connecting people in an effective manner due to education and exposure to social media. Female student teachers can sometimes persuade others to do what they want. See, sometimes they can persuade, not always. So it shows still we male-dominated society, or still women or student teachers are not successful in persuading their family members, their parents to their opinions, right? So sometimes they persuade others to what they want. Still, they are not 100% successful in telling or persuading their parents or friends about what they want in their lives. Female student teachers frequently are aware of social problems, as I mentioned earlier also, right? Due to social media and
as compared to village student teachers, female student teachers. They are more exposed to social media as well as internet, television, various broadcasting channels. So they are aware about different social problems of the society, of the nation, of the world. Female student teachers frequently are ready for cooperation and interaction with others. It is a gift to the females given by God, by nature, that is, they are kind-hearted, they are love-hearted, right? They have a sympathetic attitude. They are always cooperative in nature. They are always ready for cooperation as well as interacting with others. This finding also could be they are future teachers or they are undergoing teachers training program. Female student teachers frequently work with group of neighbors to do teamwork, right? Instead of doing any task or completing any task in an isolation, they are always ready to to work in group to achieve their task or assign work. Female student teachers sometimes are in touch with organizations and community groups. There are n number of NGOs, community groups, or social organizations, but still they are not 100% connected with social groups or organizations or community groups. Still, they should increase their participation in social organizations or different community groups. Female student teachers frequently have their own position among peers, right? They are competent enough to showcase their position among their peers. They can confidently present their opinions, right? And create their own position in front of others, in front of their peers, among peers. Female student teachers sometimes establish sessions to solve the problems of others, right? One of my student teachers, she is taking an initiative in creating awareness among girls about their use of sanitary pads, about their health and hygiene, right? So female student teachers sometimes establish sessions. They can establish sessions to solve the problem of others. It means as we have the history of female leaders to our nation, to the world, still it is continuing in upcoming future. The society definitely will be led by females. Female student teachers frequently have social trust and acceptance. Female student teachers are showing trust on others, on their parents, on society, and as well as they are accepting the new innovations, new traditions, right? New customs that is coming due to upgradation of knowledge, modernization, development, right? They are very much accepting in nature. They are accepting new values of modern world, right? They are assimilating new culture. So they trust on others frequently as well as they have acceptance in their nature. So from the above study, we can conclude that the female student teachers are frequently likes to negotiate. They can connect with people, persuade others. They are aware of social problems. They are always ready to cooperate. They are willing to do teamwork and have trust on others. Sometimes they can persuade, in touch with community and solve other problems. Female teachers need to work on skills of persuasion, mix up with the community, and try to know how to solve problems of others. There should be a separate curriculum, a suggestion from this short paper or research, that there should be a separate curriculum to develop social relationship skills in teacher education, so that female teachers can be more competent in maintaining relationships, and there will be less problems in the society with respect to maintaining healthy relationships. Thank you very much for giving me an opportunity to present my paper, a brief conclusion or finding I have presented. Thank you very much for the organizers, Pandagle sir, and all whole team. Thank you. Thank you, Dr. Sandeep Borke, sir, for your presentation over here. Now I invite Dr. Lata Dhinde. She is going to speak on the empowerment of women in India, role of Dr. Babasaheb Ambedkar.
Lata Dhinde, ma'am. Good afternoon, sir. Yeah, yes, good afternoon, ma'am. Proceed. There is my PPT. I want to share it. Yes, ma'am. You can share. Yes. Okay, thank you, sir. Dear participant, time constraint is there, and therefore follow the time limit, please. Yes, sir. Good afternoon, all. I'm Dr. Lata Dhinde. Title of my research is The Empowerment of Women in India, Role of Dr. Babasaheb Ambedkar. This is statement by Dr. B.R. Ambedkar that I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. This statement of Baba Sahib shows that the need and importance of empowerment is crucial today. To understand the view of Dr. B.R. Ambedkar on women empowerment, I have studied some areas in my research paper. For that, I have kept 3 objectives. First objective is to study concept of women empowerment. Second objective is to study the analysis of Dr. B.R. Ambedkar on women backwardness in Indian society. And third objective, that is to study the role and contribution of Dr. Ambedkar for women empowerment in India. So, what is need of women empowerment in our country? I go through some text and I read that in our Dharma Sutra, there are certain, what we can say, the people like Manu, Tulsidas, etc. Those are there who are talked about the status of women in the society. Ma'am, are you shared your screen, your PPT? Yes, sir. Okay, it is not visible. Please stop sharing and share once. Okay, no problem, sir. काही टेक्निकल प्रॉब्लेम असेल तर सुरू राहू दे मॅडम, काय अडचण नाही. सर पॉवर पॉइंट मी शेअर करते मी. हा नाही, काही तुमच्याकडे अडचण असेल तर काय अडचण नाही, म्हटलं सुरू राहू द्या. तुमचं जे बोलणं आहे ना सुरू द्या. प्रॉब्लेम वाटतो मला. हा ठीक आहे काय अडचण नाही. कंटिन्यू. Okay, sir. So, Manu has said that a woman must never seek to live independently. And Tulsidas is saying, Dhol, Gawar, Shudra, Pashu, Nari, ye sab tadan ke adhikari. So these statements by the lawgivers said that Indian social system that is based on the orthodox religion, which provides for the background for the backwardness of women in our country, and it shows that in our society there is no status to the woman, and here the lower caste women, they are facing dual discrimination based on the caste and the gender. So over 90 years ago, Dr. B.R. Ambedkar, he has burned Manu Smriti on December 21st, 1927, and that day is known as Manu Smriti Dahan Divas. So this he has done to protest against the religious ideals and the ideas which advocate untouchability and which gives lower status to the woman. So here, what is women empowerment? That question comes while doing study. I understood that women empowerment, it is very complex and multidimensional concept, and it has some background. So women empowerment, it involves building up society
and the political environment where women can breathe without the fear of discrimination, exploitation, and the general feeling of harassment. So women empowerment, it could be defined in the 5 separate ways like social empowerment, educational empowerment, political, social, economic and psychological empowerment. There's 5 aspects of empowerment that supports ability to manage the risk and the improve the woman well-being in the society. It can enhance the quality of women as a human resource which is available for the development of society. So here, other than this 5 aspects, if you see, there are 3 L's of women empowerment, which is defined by Christian Lagarde, who is president of European Central Bank. She has said that 3 L's, that is learning, labor, and leadership. Among that, learning, it helps women to get limitless knowledge, it expands her thoughts. Labor, it gives earning source to her and make her economically empowered. Leadership in the politics and social movements are also important for the woman empowerment. Here, labor and leadership can be easily achieved by learning, and that's why learning is the foremost and important L in the woman empowerment, according to her. In my research paper, I try to find out the status of women in different periods, because today, though we see that status of women is improving in India, historically, women have faced discrimination on the various grounds. So I try to take review of it, and I found that in the Vedic period, in general, there was no gender division in the hunting, warfare, defense, political activities, etc. So men and women both were doing these activities, and woman was figure of profound respect in the Vedic period, as well as she has freedom in different activities. She has enjoyed glorious womanhood in that period. Related to education, we can say that to women there was freedom to take education, and highly skilled and learned women were there. Like you can find Gargi, Kosha, Aka, Lopamudra, Maitreyi, etc. were the women. In that period, freedom in terms of choosing their matrimonial partner was also there. So through Swayamvara, marriages was fixed. So there was freedom in the case of marriages to the woman in the period of Veda. But after in the post-Vedic period, it is found that basically status of woman in that period that has deteriorated, and Sati system, Johar system, child marriage, Devdasi, Rajdasi, etc. That ill system has started in that period, which has made the life of woman very, very miserable. In the British period, some radical changes took place through the social reforms in that period, and I found that the Western principles like liberty, equality were introduced in this period, and women were participated in the freedom struggle also. So under the leadership of Mahatma Gandhi, they have participated in the freedom struggle. Other than this, Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, they have fought for the rights of women, and the effects what this struggle was that the abolition of child system, sati system was there, and widow marriages that was permitted by law in this period. Now, I turn to the analysis of Dr. B.R. Ambedkar, the case of lower status of women in our society. So Dr. B.R. Ambedkar, after the study of Hinduism, various Dharma Shastras and book related to the Hinduism, he has concluded that there are 3 pillars of patriarchy in Hinduism. Those are Shastras, endogamy, and caste that are responsible for the discriminatory practices against the woman in the society and degradation of her social status in the society. He has taken the review of thoughts of Manu related to the woman, and he found that Manu has damaged the status of woman in the society by denying women rights of education and the rights to keeping property, that was also denied. He has taken doubt on the chastity of the woman and not permitted intercaste marriages. Even he has prohibited divorce and remarriage system for the woman, and he said that woman is never fit for the independence. Her only duty is she can as housewife. So
Manu, Smriti, and Dharma Shastra totally denied the freedom of women. Now, after the study of status of women, Dr. B.R. Ambedkar, he has tried to contribute for the development of women in our society. So, he has मॅम थोडक्यात प्लीज. Yes, yes. In the social movement, he has included women's. So in Satyagraha, like Kalaram temple entry, Mahad Satyagraha, he has tried to the woman. After that, his idea was reconstruction of Hindu society. For that, he has introduced Hindu Code Bill, but that bill was dropped due to too much opposition. And here you can find that he was the only person or he was the only minister who has resigned for the Hindu Code Bill. But after 3 years, that code bill has been passed. Other than this, he has tried to include the women rights in the constitution. So with the help of various articles, he has tried to include her rights in the constitution. Like this, we can say Dr. Ambedkar's contribution is great contribution in the feminist movement in our country. And here, so that women like us can stand firmly and fight against the exploitation. I would like to thank Honorable Principal of CS College Onde as well as organizer for giving me an opportunity to present research paper. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Dende ma'am. Now I invite Dr. Vinay Kumar Gupta, who is going to talk on महिला सशक्तिकरण में पंचायत राज की भूमिका, झारखंड राज्य एक अध्ययन. सर ते नाही तर मॅडमचं घ्या आता. Okay, yes. Vinay Kumar Gupta is not over here. Now I request session chairperson, Honorable Dr. Priya S. Mittal ma'am, Associate Professor, Head Department of Political Science, Hazarimal Somani College of Arts and Science, Hello. Mumbai. Hello. Yes. Hello. हाँ सर, myself VK Gupta, विनय कुमार. अच्छा हाँ गुप्ता सर है सर, है गुप्ता सर का ले लो. Okay. सर. हाँ सर मैं तैयार हूँ सर. मेरा थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम है. Yes sir. Present your. हाँ ओके सर, थैंक यू सर. सबसे पहले तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आप लोगों ने अवसर दिया 2 मिनट के लिए. आप सभी जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार और बधाई सर. मैं प्रोफेसर विनय कुमार गुप्ता, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, LBSM कॉलेज जमशेदपुर, झारखंड से हूँ. मेरा सर टॉपिक है महिला सशक्तिकरण में पंचायत राज की भूमिका, झारखंड राज्य का एक अध्ययन. स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पुरुष और नारी गरुड़ रूपी पंछी के 2 पंख के समान हैं. एक पंख से गगन रूपी संसार में उड़ान नहीं भर सकते. इसलिए नारी को सशक्त एवं जागरूक बनाकर ही समाज को हम सशक्त बना सकते हैं. किसी भी समाज की वास्तविक पहचान उस समाज में महिलाओं की स्थिति से ही प्राप्त होता है. उनके अधिकार, उनकी शैक्षणिक दशा, उनकी मूलभूत संसाधनों तक पहुंच और उनकी राजनीतिक सहभागिता की स्थिति से ही किसी समाज की वास्तविकता का पता चलता है. महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण विषय है. महिला सशक्तिकरण क्या है? वास्तव में इसका अर्थ है महिला को शक्ति संपन्न बनाना, निर्बल को सबल बनाने का प्रयास करना, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना. परंतु व्यापकता में इसका अर्थ और भी कुछ है. सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं एवं रिक्तताओं से निपटने के रूप में भी देखा जा सकता है. इसमें जागरूकता, अधिकार एवं हकों को जानने, सहभागिता, निर्णयन जैसे घटकों को भी लिया जा सकता है. महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करते हुए पैलिनी थुराई ने कहा था कि महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर
मान्यता दी जाती है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास होना। अधिक कोई महिला अपने अधिकारों के संबंध में सजग है, आत्मनिर्भर है, तो उसके आत्मसम्मान में अवश्य वृद्धि हुई है, जिससे वह सशक्त हुई है। विश्व पटल पर महिला सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है। 18 दिसंबर 1979 को महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया, जो 3 सितंबर 1981 से प्रभावित हुआ। उसके बाद 1985 में नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पहली बार महिला सशक्तिकरण शब्द का प्रयोग हुआ। 1993 में चीन के बीजिंग शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके आरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए समय समय पर हमेशा प्रयास होते रहे। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई प्रकार के कानूनों का प्रावधान किया गया है, जिसका जिक्र करना ज्यादा जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को चलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात संविधान एवं सरकारी प्रयास से भारत में महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हो रहा है। समाज में महिलाओं की भूमिकाओं में बहुत तरह से बदलाव दिखाई देने लगे। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति न दर्ज कराई हो। महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए और महिला राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक एवं संस्थानिक स्तर पर बदलाव आया है और महिला राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से महिला सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था मील का पत्थर साबित हो रही है। कई विद्वान इसे नारीवादी क्रांति का नाम देते हैं, क्योंकि इसका परिप्रेक्ष्य बहुत ही व्यापक है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं सम समाज की स्थापना करना है, क्योंकि लैंगिक समानता सुशासन की एक कुंजी है। सभी समस्याओं की जड़ असमानता में अंतर्निहित है एवं समाज अपने स्वभाव एवं प्रकृति में पितृसत्तात्मक है। सिमोन दी बुआ ने अपनी किताब द सेकंड सेक्स में लिखा है कि अब तक औरतों के बारे में पुरुषों ने जो कुछ भी लिखा है उस पर शक किया जाना चाहिए, क्योंकि लिखने वाला न्यायाधीश और अपराधी दोनों है। इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार में समानता और देश के विकास में उसकी पूरी सहभागिता के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटक है, जिसे समझने के लिए हमें अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं पारिवारिक ढांचे सहित उसके बहुआयामी प्रभाव पर चिंतन करना होगा, जिसमें असमानता गहरे रूप में विद्यमान है। जहां तक राजनीतिक संरचना का प्रश्न है, महिलाएं आज विश्व मतदाताओं का आधा हिस्सा बनने के बावजूद उनकी सहभागिता विश्व स्तर पर संसद और विधानसभा में लगभग 18% है। अमेरिकी देशों में 21%, यूरोपीय देशों में 19%, अफ्रीकी देशों में 17%, अरब देशों में 9.5%, भारत देश में 11.8% है। अधिकतर राज्यों में यह आंकड़ा और भी कम। भारत के 38 विधानसभाओं के 4153 सीटों में लगभग 9% महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, जो संतोषजनक नहीं है। झारखंड विधानसभा के दूसरे चुनाव में 4, तीसरे चुनाव में 8, चौथे चुनाव में 9 तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 महिला झारखंड से लोकसभा पहुंच पाई। 67 साल के सफर में महिला सांसदों की संख्या 20 से 78 तक हो पाई है, जो चिंताजनक है। 1952 से लेकर अब तक महिलाओं को लोकसभा का टिकट देने में संकोच हो रहा है। आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कम से कम 33% जरूर होना चाहिए। पंचायती राज के माध्यम से इसकी भरपाई करने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकारें महिलाओं को 33% से लेकर 50% तक आरक्षण प्रदान किए हैं, जिससे एक नवीन संस्कृति का उद्भव हुआ है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 और उसके बाद पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, जिसे हम पेशा अधिनियम 1996 कहते हैं, उसके आधार पर झारखंड पंचायत राज विधेयक
30 मार्च 2001 को झारखंड विधानसभा में पारित किया गया। 22 अप्रैल 2001 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद 10 मई 2001 को झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी की। झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 में 17 अध्याय और 163 धाराएं हैं, जिसमें कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। अध्याय 1 में उनका संक्षिप्त नाम और परिभाषा है, जिसमें मुख्य रूप से यह कहा गया है कि यह अधिनियम झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2000 कहा जाएगा तथा इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पटना नगर निगम अधिनियम 1951, बिहार एवं उड़ीसा म्यूनिसिपल अधिनियम 1992 या कंटोनमेंट अधिनियम 1924 उपबंध लागू है, वहां पर होगा। अधिनियम 2 शॉर्ट में ले लो। जी सर जी। अधिनियम 2 में धारा में 42 शब्दों को परिभाषित किया है। कंक्लूजन कर रहे हैं सर, कंक्लूजन कर रहे हैं। झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत यहाँ ग्राम सभा की बैठकों का मुखिया ही संचालन करते हैं और यहाँ की जो गणपूर्ति है वह 1/10 होती है, जिसमें 1/3 भाग महिलाओं का होना आवश्यक है। परंतु अनुसूचित क्षेत्रों में किसी बैठक की गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों की 1/3 भाग एवं महिला संख्या का वहां पर होना आवश्यक होता है। ग्राम सभा में वे सारे अधिकार और शक्तियां दी गई हैं जो राज्य हमेशा देते रहते हैं, उसके अनुसार से वहां की सभा काम करती है। अंतिम शब्द है सर, अंतिम पैराग्राफ है। पंचायत का गठन यहाँ पर त्रिस्तरीय है, जहाँ पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, तीनों स्तर पर महिलाओं को 50% आरक्षण चक्रानुक्रम में आवंटित किए गए हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख और जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष है। सभी पदों के लिए योग्यताएं अयोग्यताएं निर्धारित है। झारखंड में अब तक 2 पंचायत चुनाव संपन्न हुए। 32 वर्षों के बाद झारखंड में पहला बार चुनाव हुआ, वह नवंबर-दिसंबर 2010 में हुआ, और उसके पहले 1977 में जब बिहार एकीकृत हुआ था। झारखंड के प्रथम पंचायत चुनाव 2010 में हुए, उसमें 24 जिलों के 259 प्रखंडों से संबंधित 4423 पंचायतों में मतदान हुए सर, जिसमें 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें महिलाओं का नामांकन पुरुषों से ज्यादा हुआ और 48% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। पंचायत के तीनों स्तर पर महिलाओं की जो भागीदारी थी वह औसतन 55% थी। इस चुनाव परिणाम से महिला के राजनीतिक सशक्तिकरण दिखाई दिए सर। दूसरा पंचायत चुनाव जो 2015 में हुआ, उसमें 24 जिलों में लगभग 263 प्रखंडों में संपन्न हुए, उसमें भी महिलाओं की संख्या जो है वह लगभग 54% रही। पंचायत राज के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण संभव हो पाया है। अब महिलाएं अपने घरों की चार दीवारी से बाहर निकलकर सामाजिक राजनीतिक कार्यों में अपनी भूमिका को निभा रही है और निकल रही है, लेकिन उसके सामने कुछ चुनौतियां हैं सर, और वह चुनौतियां हैं यहाँ की संस्कृति में धर्म, परंपरा, रूढ़िवादी मान्यताएं, आस्था एवं विश्वास व्यक्ति के जीवन में जो घुले मिले हैं। इस व्यवस्था में नारी पुरुष के जीवन में अनेक प्रकार की लक्ष्मण रेखाएं, दोनों के लालन पालन कर्तव्य क्षेत्र में भिन्नताएं, भारतीय मूलतः पितृसत्तात्मक है, जिसकी पहले भी चर्चा हो चुकी है। झारखंड चूंकि जनजातीय बहुल क्षेत्र है सर, जिसके चलते यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 26% आबादी जनजातियों की है। यहाँ की कई कबीलाई संस्कृति है सर, जहाँ पर मातृसत्तात्मक परिवार भी हैं, लेकिन अधिकांश भाग यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक है। पंचायती राज के दौरान ऐसे परिवार से कुछ महिलाएं पुरुषों के आदेशानुसार ही चुनाव में प्रत्याशी बनते हैं और वोट करने जाते हैं। घरेलू महिलाएं पंचायत राज में कोई पद धारण करने के बावजूद पूरा समय राजनीतिक क्रियाकलापों में नहीं दे पाती। उनकी जगह उनके पति, ससुर, देवर, भाई या उनका कोई रिश्तेदार महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है, जिसे हम एक नई संस्कृति का नाम दिए हैं, सरपंच पति संस्कृति। 24 अप्रैल 2015 को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरपंच पति की संस्कृति समाप्त होनी चाहिए। इसके साथ ही दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर छेड़खानी आदि जो घटनाएं घटती हैं, वह सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी बाधा है। महिला सशक्तिकरण तब तक अधूरा है जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त न हो। गुप्ता सर, प्लीज समराइज। जी सर, जी सर। तो ये सर जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए, और जो नौकरशाही है, जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, अपने मानसिक सोच में परिवर्तन लाए, तभी महिला सशक्तिकरण संभव है सर। अंतिम कंक्लूजन यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, रोजगार, अधिकार एवं वेतन, राज्य सरकार एवं नौकरशाही की मंशा में सकारात्मक सोच, पुरुषों एवं महिलाओं के मानसिक सोच में परिवर्तन आदि से ही हम महिला सशक्तिकरण को पंचायत राज के माध्यम से और मजबूत कर सकते हैं। और अभी के समय में यह आवश्यक है कि महिलाएं सशक्त और हों,
अभी बहुत सारी महिलाएं सशक्त पहले से हैं, जिन्हें सशक्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सशक्त करने की जरूरत है, और हम सभी जब समान होंगे हमारा देश और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। Thank you, Dr. Vinay Kumar Gupta ji. Now I request the chairperson of this session, Honorable Dr. Priya Mittal ma'am, for her expert comments and views in this session, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Bansode sir, before I begin, I would just like to ask you, how much time do you think I have to make my remarks? Yeah, you have time, ma'am. Please proceed. All right. Okay. So congratulations to all the 6 paper At least presenters. 15 to 20 minutes you can take if you. Yeah. All right. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So at the outset, let me thank the principal of SGVSS Pratishthan's Arts, Commerce and Science College, Dr. Vinod Sonagne, sir, for inviting me and giving me this opportunity to chair the session on the relevance of the feminist movement in the 21st century, the National E-Conference. In my session, there have been 6 papers presented by various scholars. I would, in my remarks, like to take up one paper of at a time of each of these 6 presenters, and just place some of my observations regarding how their papers have been, have highlighted some of the important aspects related to feminism and the feminist movements. The first paper presented by Ms. Aditi Yadav, which was titled Image of Women in Indian Media, Psychological Perspectives and Feminism. This was a very interesting presentation, Aditi. And some of the highlights of your paper, which I have just jotted down, was that media has a patriarchal character, and where it is the men who dominate what is presented and projected through media, and which then ends up in the promotion of the same gender stereotypical roles for women. You also highlighted the capacity of media as a tool, which can bring about, create or reconstruct images of women in society, social, political, economic domains. So media can be used as a very powerful tool to recreate and restructure the images that have been created over time, relating to women, and defining specific traditional roles of women which need to be changed. Also, you spoke about how media has helped in strengthening the gender stereotypes, and how media has promoted objectification of women. When we talk of objectification of women, I'm reminded of Simone de Beauvoir, who has highlighted how in her work, The Second Sex, a very famous work in the feminist literature, and where she says that women have to decide what they want for themselves. There is an inner life and an outer life for women, and it is important that there is an awareness amongst women about their own existence. She's an existentialist philosopher who talks about that we are responsible for the life that we live. We are responsible for our own existence. So if we accept what the society is giving us, then that is what we actually are accepting as our existence as individuals. So she puts it on women to question all these unfair practices of treating women as objects, and treating women as the other, sidelining and marginalizing women in all social, economic, political spheres. So we need to question this, is what Simone de Beauvoir has raised. And Aditi, that was a very interesting observation in your presentation. And another one last point in your presentation, which I would like to mention, is the psychological effects that the role of media and the presentation of women through media has on women themselves, which sometimes may create a superwoman syndrome, and where women are pushed to into a situation where they have to prove that they can handle more than what is humanly possible. So that superwoman syndrome created by media is also a challenge that women have to face, and which we need to question and reconstruct.
which leads to a lot of problems such as depression and anxiety among women if women are unable to meet that superwoman syndrome or image of created by the media for them. So these are some of the observations in Aditi Yadav's paper, which was very interesting contribution. I think some of these thoughts we will definitely carry back with us, and which will keep reminding us of doing something, writing something, and sharing something more in our academic circles after this conference is over. That would be a very, I think, interesting contribution of Aditi's paper here. The second paper presenter, Ms. Thank you, madam. Yeah, most welcome and congratulations. Ms. A.P. Bamane, who spoke about ecofeminism. Her paper on ecofeminism reminds me of what Betty Friedan's The Feminine Mystique highlighted, that Betty Friedman had criticized the idea that women could only find fulfillment through the roles defined in a patriarchal society for them, like childbearing, like homemakers. So she criticized this characterization of women as being in a particular role, and their identity was this as created by men in the society, and if they could fulfill those roles only, then life had meaning for them. But in the context of Bamane's paper, she has spoken about the multicultural perspective on feminism, where she has spoken about the interrelationship between nature and women. And she also has highlighted the fact that how men tend to exploit the nature, the environment, the environmental resources, to fulfill their desires and to benefit themselves. And in the same way, ecofeminists also highlight that this is how men end up treating women. To fulfill their desires and for their own benefit, they oppress and exploit women. And that is something which needs to be questioned. And that is a point that ecofeminism highlights, which Bamane also has highlighted. She has highlighted this common oppression of environment and women through her presentation on ecofeminism. And this needs to be questioned, and this needs to be reconstructed. We need to understand how this exploitation is an unfair and unjust practice in all the various domains, social, political, and economic, cultural as well. We have many cultural practices which reaffirm and reestablish the patriarchal superiority in our social structures, which we need to think, and we need to redress these questions according to ecofeminism and a paper presented by Bamane. In the context of our third paper presenter, Ms. Kalpana Satyavad, her paper was, as I could understand, as much as I could, I have understood that she has spoken about feminism and the problems and some solutions that can be offered in the context of the problems that women face. So there are a number of problems and issues that women face across the world. There is no society anywhere in the country where anywhere in the world where women do not feel discriminated against, where women do not feel oppressed and exploited. And these kinds of discriminations and oppressions create multiple challenges for women in all the spheres that they have their existence in. And in this context, we have to she has also made a point about the problem that women face with regard to their own individual identities. How do we identify ourselves as individuals? Do we identify ourselves as daughters or wives or mothers? And is that all that we exist? Are these the whole existence that women can limit themselves to? Do we identify this as our individual identities? So that is something that has been raised in Kalpana Satyavad's presentation. She also has mentioned about the 3 waves of feminism to bring up the movement of this feminism, where in the first stage we are talking about bringing women in the political sphere, ensuring that women have political rights
and have political participation. They are given some space because politics is that domain where you can really try and make a difference, because you are then holding a position of decision maker. So in the first wave, these political rights were raised as an important issue for women, and demanding justice for women in the society. In the second wave, it was, of course, it was right to equality for women, where again this Bourgeois existentialist philosophy comes, that do we accept our existence as unequal, or do we want to question it? It depends on us. So that is another point. And the third wave talks about the group or solidarity rights, which is again, which goes beyond men, women, and the other, which talks about human beings as one, and which talks about solidarity rights, going beyond just the gender stereotypical debates and issues, and treating mankind as one, and talking about the human rights of men, women, and the others. So she raised these issues, highlighting that there are numerous problems that are outcomes of the of the various practices that are promoted in patriarchal structures and societies, and we need to address these problems that women face. We have to find solutions by constantly thinking and debating and discussing these issues, because when we are reminded of the problems, it's only then we start thinking about finding some solutions. So that is the paper of Ms. Kalpana on feminism. Our fourth paper presenter, Dr. A.S. Bodke, has spoken about a very interesting subject, I would say an innovative, where he has examined the social relationship skills of female students and teachers. And he has made, through his own primary data, made some observations that I'm going to repeat, which were very encouraging. He said that women have good negotiation skills. That is what his study proved. Women are able to frequently connect with other people more effectively because they are more exposed to social media tools. I think men are equally exposed, but what women have is that ability to connect with people more. Also, he said that women have more persuasive ability. We are able to persuade the other side, the other party, if we really think that we need to discuss any issue. So we have more persuasive abilities. We are more sensitized about society and social problems because not being biased in my thinking as a woman, but I think there are multiple studies by psychologists who say that if we talk about the EQs, the emotional quotients, women always have a higher EQ compared to men, which means that we understand emotions better, we can deal with emotions better, and that is where this ability to understand the problems and issues of society comes naturally to women. And he made the same observation that women have more awareness and are more sensitized about social problems. Another interesting observation in Dr. Bodke's paper was that women are cooperative in nature, and this characteristic of women as a human being makes them a good team worker. And we all know that all the organizations work not as individuals, but work as teams. So if we have workers or employees in organizations who have the ability to work as members of team, then I'm sure, I think that is a success, that is going to definitely be a contributing factor to the success of that organization. So that gives a hope that employers may look for women employees more in future, because they have this ability to work in cooperation and in collaboration with their other colleagues in the organization. He also spoke about some of the shortcomings that he observed in his research. After his research study, highlighted that women, are, in spite of all these abilities to be able to understand problems and be able to cooperate with others, actually do not come out in the public space and participate actively
through social organizations, and that is an area where the public participation of women is lacking as much as is desired, and women could increase this participation and their role in the public spaces more, because it is going to make a difference. It is going to be a meaningful participation, bringing about some positive changes that are that the society looks forward to. He made a very interesting recommendation through his study, that is of coming up with a separate curriculum which should be introduced, where the female teachers can contribute in their own innovative ways to creating greater awareness and sensitizing the students about various issues in the various domains. So having a separate, a specialized curriculum focusing on the ability of the female teachers to contribute more to creating awareness among the students is one of the remarks or recommendations of his paper. So thank you for this. And our fifth paper presenter, Dr. Lata Dhinde, has presented on the title Empowerment of Women in India, Role of Dr. B.R. Ambedkar. When we talk of empowerment of women, Dr. B.R. Ambedkar is, I think, one of the most and the foremost names that comes to our mind. Because when we talk about India as a democracy, when we talk about Indian constitution, we find that our constitution, our democracy is has been far ahead compared to, as one of our contributors in the session mentioned, we are far ahead of the Western democracies. Also, when we talk about the rights that we have granted to women, the space and the opportunities that we have granted to women, and I would say a great credit for all this in the manner of constitutional provisions can be credited to Dr. B.R. Ambedkar. In the Constitution, we all know that we have assigned equal rights, equal freedoms, irrespective of any consideration of the genders of the citizens of India. So in that sense, Dr. Ambedkar has been a very, very important contributor in empowerment of women. Constitutional rights are a clear example in front of us. And a sixth paper by Dr. Vinay Kumar Gupta spoke about empowerment of women or empowering women through Panchayati Raj. This is talking about how from the grassroots level we can think of creating a greater awareness, greater confidence about how women can actively participate in strengthening the democracy that we have. So through Panchayati Raj, we can give women an opportunity to come into the political domain, and then keep building on their capacity as political leaders, from political workers to political leaders at the local, state, and national level. Panchayati Raj can provide a great opportunity for all women who are keen in playing their roles as decision makers, in playing their roles as democratic leaders, because unless the women realize the relevance and importance of their roles in politics, I do not think that there would be much of a change that can be brought about, because it is women who can understand the issues, the problems of the women in the society better, and this better understanding of those issues would lead to making better laws and programs for empowerment of women. So Panchayati Raj definitely needs to have more women participation, and that can come about through greater sensitization and awareness among women. These are the papers. Congratulations to all the paper presenters once again, and thank you for sharing your ideas. My final remarks on this is that when we talk of feminism and when we talk of the relevance of feminism in 21st century, I think this whole movement began with the idea of promoting justice, number one, and promoting equal opportunities and equal rights, number two, for a section of the society which were exploited and oppressed and deprived of a fair treatment, what John Rawls would call as justice. So it is justice that feminism is demanding. It is not overpowering men. It is
basically empowering women, giving them the right place and the right opportunities so that they can be equal partners in development and progress of a society. A healthy society demands contribution of all the entire human resource. So whether it is a man or a woman, a healthy society demands that each of us are productive members of the society. So what it requires now is that it stays relevant. The relevance of this feminist movement, I would say, is that we are still in the process of achieving the goals of breaking those stereotypical constructs that we have of women playing a particular role in a particular manner in the society, and women being denied certain positions of power because they have never held it before. So we need to understand these issues of the gender stereotypes that have been created. And once we understand that these are stereotypes created because these have been just age-old traditions and practices, we will understand the need to deconstruct these stereotypes and reconstruct new roles and new spaces for women. That is the relevance that I would say I see in this feminist movement, till we all appreciate all human beings as equal and all human beings as equal productive members of the society. I think this movement will have still some way to carry on and go. That's all from my end. Thank you so much. Thank you, sir. Yes, ma'am, sir. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for joining with us on this. Request my colleague, Professor Mahale sir, to propose a vote of thanks of this paper presentation session. Thank you, Bansuri sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Yes, sir. Okay. Good evening, one and all. On behalf of Department of History, Political Science, Women Development Cell, and IQAC of the Arts, Commerce and Science College, Onde, Taluka Vikramgarh District, Palghar, I took this opportunity to propose vote of thanks for session 3rd of this one-day National E-Conference on the relevance of the feministic movement in the 21st century. I would like to thank our session chairperson, Dr. Priya S. Mittal Madam, for spending her valuable time with us on this occasion and putting her important views and observations in this session. Thank you, ma'am, once again. I am thankful to fellow participants who presented paper during the session. I congratulate and thankful to Mrs. Aditi Yadav ma'am. I congratulate Mrs. Asha Bamne ma'am, and also thankful. I congratulate and thankful to Mrs. Kalpana Kanke Siddeshwar ma'am. I congratulate and thankful Dr. A.S. Borke sir. I congratulate and thankful to Dr. Lata Thende madam. I also congratulate and thankful to Dr. Vinay Kumar Gupta sir. Thank you once again. I am thankful to Mr. V.M. Tandil sir for the nice introduction of the session chairperson. I am very much thankful to all the dignitaries, fellow participants, and my colleagues for making the session grand successful. Thank you one and all once again. Thank you. Over to you, Bansuri. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Dear participants, we are going to start a valedictory session function very soon. Please do not leave the group. And there is an announcement. And during the valedictory function, you will be there will be a link for feedback will be sent through the technical team. After filling in the feedback form, you will get a certificate, and please note that the soft copy of certificate will not be sent to you all, because we are going to send to you the hard copy certificate. Now, I welcome you all. Dr. Pandagale sir. Hello.
Paul sir is there? Yes, sir. Yes. Hey, sir. Hey. Yeah, yes. Thank you, sir. Honorable Chief Guest of this valedictory function, Dr. Selvin Paul from Sikkim University, Gangtok, and the Principal of the college, Honorable Dr. Vinod Sonani, sir, the Vice Principal and the Convener of this organizing committee of this National E-Conference, Honorable Dr. Chetna Patil, ma'am, the coordinator of this National E-Conference, Honorable Dr. Pandagale, sir, and my dear participants, I welcome you all from the heart of hearts on behalf of the college and the organizing committee. So, at the very beginning of this valedictory function to be started, I would like to invite my colleague, Professor Nahiri, sir, the head of the Department of Geography, to introduce the chief guest of this valedictory function, Honorable Dr. Selvin Paul. Over to Dr. Professor Nahiri, sir. Thank you so much, sir. Now we are going towards the today's last session. In this session, I once again warmly welcome to all of you. Now I would like to introduce to the today's chief guest of this session, and he is Dr. Selvin Paul. Now his educational qualification is MA, MPhil, and PhD in International Relations. He is a senior assistant professor in the Department of Peace and Conflict Studies and Management, School of Social Sciences, Sikkim University. Now, the countries of the work experience and the visits. He has visited too many countries, and he works in that countries also, especially the Tanzania, Germany, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Thailand, Bangladesh, Oman, and Malaysia. Lots of country has visited, not only visited, but he is doing as the work of the adjacent professor in that universities also, especially the Global Ministries Universities, California in America, USA, Institute of Science and Religion, Alua, it is in the Kerala, Indian Institute of the Social Sciences and Religion in New Delhi. Now his employment record is that now at present he is as a senior assistant professor in the Sikkim University, Gangtok. He also did work as the professor in the Semi-State University, Ukraine. He is the lecturer. He did lecturership in the Dodoma University, Dodoma, Tanzania, as a senior research fellow in the Indian Hua Society, IDSA, New Delhi. He is also associate faculty in the Times Business School, New Delhi. He also did the work of lecturer ad hoc in the Sri Guru Nanak Dev Khalsa College, University of Delhi. He is also visiting faculty, School of the Open Learning, Delhi, University, Delhi. Now his publications, lot of publication he has. In the Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, especially he did work, lot of work on the woman empowerment, especially the lot of papers he has written, but very few papers like the human rights of the women migrants, then women and uniform civil code in India, women migration and the remittances, then human rights of the women refugees, then women empowerment in the Indian Armed Forces, lot of work he did about the especially for the women. Also, the Palgrave Encyclopedia of the Global Security Studies. He also there write about the property rights, also about the role of the media, about the social security, about the Doctors Without the Borders, Medicine Science Frontiers. Then Encyclopedia of the Gerontology and the Population Aging. He also did work on the International Year of the Older Persons, then inheritance laws, then financial frauds and the scams. Also, he has written the chapters, Migration and the Refugees in the South Asia, Religion and the Gender Inequity in India, then Iran's Nuclear and the Missile Program, then Nuclear Terrorism and Developing Nuclear Security Architecture, then India's Foreign Policy, Ethnic Crisis, Refugees and the Migration, lot of chapters he has also written. In the journals also, he has written a lot of the articles about the social movements and the conflicts, transformation with the special reference to the Bodoland movement, analysis of insurgency and the cross-border terrorism in India's northeast. Lot of work he did. Also, in the journals also he has written a lot of the articles.
Then in the magazines and journals also, he has written a lot of articles. As a publisher also, he did work as a publisher. He has published near about 41 newsletters titled Asian Space Missile and the Nuclear Digest during the year 2009 to 2011 for the Indian Pugwa Society, which is also available on the internet also. You can see it. Then as a columnist, he has also he did also the work as a columnist also, as a publisher, as a columnist. Then project, he also did the project as a senior research fellow in the project titled Emerging Nuclear Order in the Implications to India. Also his work, then the part of the project, he also published 41 newsletters for the Indian youth. Now first rank for the Master of the Arts, MA in Politics and the International Relations in the year 2001. He got the gold medal there, first rank he secured. Then University Merit Scholarship he got for the Master of the Philosophy in the MPhil in the year 2004. Then University Grand Commission National Eligibility Test he has passed. Then Indian Council of the Social Science Research Institutional Doctoral Fellowship he got. Then recipient of the DAAD Fellowship 2014. Then General Secretary of the Sikkim University Teachers Association. Then again the President of the Sikkim University Teachers Association during the year 2019 to 2021. Then academic as well as the professional memberships. He is the associate member of the Indian Pugwa Society, then associate member of the Indian Association of the Asian and Pacific Studies since 2011. Then board of the studies member in the Peace and the Conflict Studies and Management in Sikkim University. Then board of studies in the member in the International Relations. Then again board of the studies member in the Law, Sikkim University. Then board of the studies member in the History, means not only one subject. He also did work in the history, in the law, in the international relations. Then he, again, lot of the work he did, means his biodata, it is about the 10 pages, near about 10 pages, his biodata is there. But due to the time limit, I could not read all this. So again, I am very much thankful to Bansode sir for giving me this opportunity, Pandage sir also for giving me this opportunity. And again, warmly welcomes to the Salvin Paul sir. And I request to you, sir, Dr. Salvin Paul, please guide us about in this session, sir. Over to you, sir. Salvin Paul, sir. Thank you. Good evening, professor. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Oh, thank you. Thank you. Let me share some. So before I start, may I thank the college and its principal, and also the good words spoken by Professor Nahar, and also most importantly, my friend Professor Bashweshwar Pandagala, with whom I have an association since 2013, and also the organizers and the technical supporters of this program. Thank you so much for the lot of good things that you have spoken about me. But let me, at the outset, state that I'm not going to speak very long, but pose certain questions so that our people, those who are listening, can think about what is supposed to be done or thought about women empowerment. Women empowerment, for me, is a very contested term. It's not only contested term, but also it's a politically polarized term in Indian context. For me, what is women empowerment is nothing. It is only understanding a woman's sense of self-worth.
Once she understands her self-worth in the society or self-worth about herself, then she can determine on her choices and make a lot of influence to transform the society. So that is what the women empowerment appears to me. You understand? A sense of self-worth that enable her to make choices, and that choices transforms the society. We have a lot of women empowerment schemes and programs, etc. But may I ask you a question? Why then women are not empowered? 50% of the population constituted of women. They are educated. There are lots of legal provisions, lot of programs and policies, etc., that are initiated by the governments, civil society, political parties, etc. But despite all these things, there is a serious problem with why women's empowerment is a serious question. Why women are not empowered? Why they can't fully exercise their choices? Why can't they become a transformer in the society? I'm not telling that it is absolutely void and null, but there are cases. But we have to think about the fundamental structures that govern the society. Even if women are educated, women have a lot of rules, legal provisions, women have a lot of programs, etc. She or as a child may not be able to exercise the autonomy of decision making is a serious problem. So there is, for example, there are 7-8 principles that are forwarded or placed by United Nations on gender equality, respecting and supporting non-discrimination and human rights. Lots of principles and programs, etc., has been taught. You understand? And there are famous quotes that who is supposed to be, what is supposed to be men, what is supposed to be her empowerment and her choices, etc. But largely all these things are limited in theory or in papers. Why those programs are not transforming or making her to autonomously decide her choices? Women empowerment, if you look at your own family atmosphere, how the women are remained in the four walls of the home to serve others, a sacrifice that she has been virtually trained and structured in the society, so that she is not fully exercises or understands her call as a citizen of this country. This is a serious problem not only in India but across the world. These kind of problems are happening. We have developed world, developing world, and least developed countries, etc. The position of women are not much different. If you look at the experience of women in most developed countries like United States of America or European countries, etc., in terms of experiencing domestic violence, it's a serious problem. Now, may I ask another one question is that when you think of women empowerment, are we thinking of equality? Are we thinking of equality in terms of women empowerment? The features and characteristics and the biological nature of women and men are not same. She has got feminine virtues, qualities, features, etc. So when we think about
empowerment, or when we think about her rights, or when we think about her choices as a girl, as a woman, as a grown-up, etc., in Indian society, mostly it has been lensed to father, son, husband, etc. And there comes the main problem. It is not only in particular society, in South Asia alone, these kind of features are that have been what is called given to tame the women. We don't look at, you look at our Varna system, ashramas, Upanishads, Vedas, or Manusmriti, somebody was speaking earlier, etc. All these, or even Bible or Quran or Patakas or Piligas of Buddhas, etc. Excuse me. We can't see from birth to death how a woman has to exercise her choices, her decision making, how she has to process herself is a serious problem. So, dear friends, in that context, if you look at women are denied of not only exercising her choices, but also fundamentally understanding her features and values through education. So that is where the problem comes. Many of the times we consider that women empowerment means equating with men. Men is different. The biological difference of man and woman are not same. They are different in nature. But do we have a political decision-making process to address the women's values? What values do we need to secure in our political process is a serious question that we have to look at. How are we going to empower them? There are many kinds of programs that are designed in our country. You understand, there are lots of programs that are designed in our country. You look at the constitutional provisions. Article 14, which gives equality before the law. Article 15 provides a platform that no citizen of this country should be denied anything or discriminated on the basis of religion, race, gender, customs, or caste, etc. Article 16 provides that every citizen should be equal in front of opportunity. So many programs. Also, we have penal codes on rape, sexual harassment, torture, all these, even there are provisions, etc. But now the problem I am going to ask you is this, then why women are not able to fundamentally know their own self-worth so that she can make choices that can transform the society? The three major things that are governing the Indian women. First is personal laws. Second is customs and traditions. And because of the upbringing of within the personal laws, customs and traditions, and tamed through religious values, she herself unable to understand her worth as a citizen, unable to understand the worth as a woman. And the women in India has a lot of problems in terms of exercising her choice, in terms of marriage, maintenance, property, or divorce, etc. So many provisions are given in the constitution, IPC, CRCPC, etc. But one thing is that through personal laws, they all have been taken back. So, for example, recent past we have seen about how the hijab issue is happening. We have also heard about a lot of movements that are happening regarding whether women can enter into temples. So, the reforms in personal laws of any religion
especially minority and majority, etc., is very important in the Indian context. Let me tell you one fundamental thing. If you look at minority, majority versus and the choices of women, you go and refer to 2011 census and look at the polygamy practice in India. Which community and which religion is practicing more? You will come to know some surprising answers. There are religions that can practice, have 4 wives. There are religion which scripturally endorses single lady having many husbands, etc. But in reality, when we look at this, is what we are looking at and what we are told, etc., is surprisingly different. We have tribal practices which also entail or consider as Hindu religion. We have minorities like Islam religion or Christian religion or Buddhist religions, etc. But one of the problems with us in terms of the choices of women is that all these religions, if you look at the data, are not much different. That is what. And the customs, the traditions, and the norms and values are all somehow discriminate women. Religion is about faith. I'm faithful to certain religion. But it is not about the law of the society. This is something which we have to understand. We are speaking about religion and law. How many European Union countries which are practicing what is called, many of the faithfuls are from Christian in European countries. How many of them have Christian-based rules and regulations? How many of the Middle East countries which are following Islamic traditions are having Sharia laws? Okay, some of the countries we hear about that they wear burqa, etc. But in our country, there is a serious problem. What is this? Our secularist understanding is that we give equal respect to all the religions. Very good. There is no problem. But our participation in the society should not be lensed through that religious angle. Our civil participation, our political participation in the society by citizens should be lensed through rule of law, not from the particular religious or cultural angle. You look at our culture also has been lots of politicization in our culture. I'm a Hindu by geography and civilization. And when I was in Germany, some people were telling, you are a Hindu. I was so shocked because my parents practice a particular religion, but others don't treat. But geographically and civilizationally, I'm a Hindu. Whether you accept it or not, everybody in that sense. But there is a problem now. Whether I should follow that particular principles into my religious life. Geographically, we all are Hindus. We all belong to Indus Valley civilization. We have geographically or historically, we have debate between Aryans and Dravidians. In that sense also, I come from that side. So dear friends, religion is all about faith, not about the law, which sometimes is against an individual or a society at large, which one factors that have resulted in social customs and norms that has become a way of life. The customs and traditions that govern our society has really discriminated. Indian women's problem are, they are controlled by caste, they are regulated by community, they are again tamed by gender values and religions. So, but our differences in culture, our differences in our values and norms should not be become an impediment or a hinder to exercise my choices and rights and participation as a citizen of this country.
How can a woman be denied? Both men and women are equal in front of the rule of law, equal in front of the Constitution of India. So the rights that are denied through these numerous religious and societal laws that suppress the dignity and identity of women because of the existence of this different culture, different personal laws, etc., is seriously hampering the choices of the women. So, dear friends, in that context, women as a citizen of this country, women as a autonomous individual of this country, need to be governed by a single law to exercise and enjoy the fundamental rights that are given in the Indian Constitution. That is why we need to think of uniform civil code. We should not fall into the politics of minority versus majority in this regard. The uniform civil code should be understood through the lens of the Indian Constitution, the fundamental rights, etc. Otherwise, the problem is that we will fall into the trap of cultural nationalism, regional parochial politics, etc. The concept of a uniform civil code is composed of a uniform family law. You understand that it should not be merely seeking for uniformity, but also for securing and delivering social justice to women. So in that context, dear friends, we need to think of a uniform civil code for women in India so that they understand their self-worth. They understand and they make their choices and they become transformers of society. Let me tell you, personally speaking, I am loved by my mother. She wants me to get everything in my life. You understand? And maybe your wife and you may have personal choices, but we have to understand the hormone nature of the complexity that exists between a mother-son relationship and a father-daughter relationship, etc. But we work against these relationships. We don't appreciate, we don't consider the values of these people. You understand? So the women empowerment is always going to be good for the men. Please understand this. Please don't think that they are going to take out the opportunities of men. No, the more and more the women are empowered, the society becomes egalitarian. The society becomes very beautiful. You look at Scandinavian countries, how women are exercising public places. They occupy a lot of public places. And because of that, there is less violences in that society. So with that small note of brief speech that I stop here. Once again, I thank you for all of you for listening me for this small span of time, and especially my good friend Bashweshwar Pandagala for the same. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for your wonderful session and very lucid and clear-cut elaboration on the empowerment of women through the Uniform Civil Code. Now, after that, we have online feedback from the participant, and therefore, I request Dr. Siddharth Rakshase, please share your views about this national e-conference on this occasion. Over to Dr. Siddharth Rakshase. Rakshasa sir is there? Sir is there. Siddharth Rakshasa sir. If he's not there, I request Professor Dhoni Babure to share his views on this occasion. धन्यवाद सर. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir.
संजीवनी ग्रामीण वैद्यकीय एवं सामाजिक सहायता प्रतिष्ठान संचालित कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय औंधे, तहसील विक्रमगढ़, जिला पालघर, इतिहास, राजनीति शास्त्र, महिला विकास कक्ष एवं IQAC के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में, इस समापन सत्र में मुझे इस एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिपुष्टि देने के लिए आपने समय दिया, इसलिए सर्वप्रथम मैं संयोजन समिति का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी 8 मार्च को होकर अभी दूसरा ही दिन चल रहा है और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के लिए जिस विषय का चयन किया गया, जेंडर इक्वलिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो, मुझे लगता है इसकी शुरुआत आपके महाविद्यालय के 3 विभागों के द्वारा हो चुकी है, इसका मुझे बिल्कुल विश्वास है। आज लगभग सुबह 10:15 साढ़े 10 बजे से जिन विषयों पर चर्चा चल रही है, उद्घाटन सत्र हो या फिर दोपहर सत्र चले, एक आलेख वाचकों का सत्र चला और भी समापन सत्र, मुझे एक बात की बड़ी खुशी लग रही है क्योंकि आपने उद्घाटन सत्र से लेकर समापन सत्र तक हर सत्र में आधी आबादी को आपने जरूर स्थान दिया है। उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि के साथ साथ बीज भाषक के रूप में डॉक्टर सुनीता यस सरकार मैडम थी। प्रथम सत्र में भी डॉक्टर सविता तायडे मैम थी। आलेख वाचक का जो सत्र था उसमें उस सत्र के भी प्रमुख आपने एक महिला को ही स्थान दिया और समापन सत्र में भी रिपोर्ट राइटिंग में आपके महाविद्यालय की उप प्रधानाचार्य माननीय पाटिल मैडम को भी आपने रखा। इससे एक बात तो जाहिर सी दिखती है कि भले ही आपने सुबह पांडागड़े सर ने अपनी प्रस्तावना में कहा हमारा महाविद्यालय आदिवासी बहुल क्षेत्र का है, लेकिन मुझे इस बात को आज के दिन भर के इस कार्यक्रम को देखकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि भले ही आदिवासी क्षेत्र का महाविद्यालय हो, लेकिन सही में जेंडर इक्वलिटी की बात आपके महाविद्यालय के इस कार्यक्रम के आयोजन के द्वारा आज सिद्ध हो चुकी है। थैंक यू सो मच। आलेख वाचकों की संख्या में भी जितने 6 आलेख वाचक करता थे, उसमें भी 4 महिलाओं ने अपने आलेख पढ़े और वाकई में काबिल तारीफ वो सारे आलेख थे। अभी वर्तमान में जिस समय की हम बात करते हैं, इसमें सही में जेंडर इक्वालिटी की बहुत नितांत आवश्यकता है और जब तक हम इस जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे तो संविधान में अभिप्रेत जो इक्वालिटी की बात है वो कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। और आजादी के अमृत महोत्सव के इस समय में और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के औचित्य पर आपके महिला विकास कक्ष के द्वारा हो या इतिहास राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा हो, इसकी आपने पहल की। इसलिए महाविद्यालय के संस्था के अध्यक्ष, महाविद्यालय के प्राचार्य, महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य, संयोजन समिति में काम करने वाले विभाग, महाविद्यालय के लगभग हर एक अध्यापक इसमें जुटे हुए हमें नजर आए। मैं देख रहा था सुबह के सत्र से हर एक सत्र में कोई न कोई अध्यापक अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहा था, भले वह जूलॉजी का प्राध्यापक हो या और किसी विषय का प्राध्यापक हो, लेकिन हर एक के मन में एक यह धारणा थी कि कहीं न कहीं यह लैंगिक समानता पर चलने वाली ये चर्चा, जिसकी बात बीच में एक पहले सत्र में ही तायडे मैडम ने एक बात कही थी कि 21वीं शताब्दी में इस नारीवादी आंदोलन की प्रासंगिकता कैसे, प्रासंगिकता तो हर समय में रहेगी, क्योंकि जब तक इस समाज में असमानता का यह दौर चलता रहेगा मित्रों, तब तक इस विषय की प्रासंगिकता निरंतर बनी रहेगी। और जब तक ये समानता की बात मतलब स्वीकार्य नहीं होगी या जब तक ये समाज में वास्तविक धरातल पर नहीं होगी, तब तक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी होना जरूरी होगा। और इसीलिए मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इसमें आपका महाविद्यालय, आपके महाविद्यालय के सारे संयोजन समिति के सदस्य इसमें सफल हुए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ में आपका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह के नए नए विषयों को लेकर आप चर्चाओं का आयोजन करते रहें
और उसमें बोलने की हमें समय मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जरूर जरूर हम विविध विषयों पर ऐसे परिसंवाद और संगोष्ठी जरूर रखेंगे सर। आपको भी इनवाइट करेंगे और ऐसा सुझाव देने के लिए आपका मैं कॉलेज की ओर से धन्यवाद देता हूं सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इफ देयर इज डॉक्टर सिद्धार्थ राक्षसे सर, if it's not there, Professor Kalpana Siddewat, I request you to share yes. your views on this occasion. Yes. Good evening to all. So thank you. संजीवनी ग्रामीण वैद्यकीय व सामाजिक सहाय्यता प्रतिष्ठान संचालित कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय ओंदे, ता विक्रमगड, जिल्हा पालघर आणि या महाविद्यालयातील राज्यशास्त्र, इतिहास, महिला विकास कक्ष आणि IQSC यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही जे एक दिवसीय ऑनलाईन राष्ट्रीय वेबिनार किंवा चर्चासत्र ज्याला आपण म्हणू ते आयोजित केल्याबद्दल आणि त्याची थीम स्त्रीवाद चळवळीची 21व्या शतकातील प्रासंगिकता, आजच्या या सबंध आयोजनाबद्दल, व्यवस्थापनाबद्दल मला खरंच एका गोष्टीचं खूप कौतुक आहे. कारण पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सुद्धा तांत्रिक अडचणी खूप मोठ्या प्रमाणात येतात जेव्हा आम्ही ई वेबिनार किंवा ई सेमिनार आयोजित करतो किंवा त्याचा पार्ट असतो. पण इथं मला खरंच तुमच्या ह्या सगळ्या टीमचं कौतुक वाटतं की एकाही वेळी कुठलाही तांत्रिक म्हणजे अडचणी किंवा अडथळा आपल्याला आलेला नाही. That is a big part nowadays in modern ages. So thanks a lot. आणि अजून एक महत्वाचं म्हणजे या सत्रामध्ये बोलवल्या गेलेले जे प्रमुख पाहुणे होते वेगवेगळ्या सत्राचे, पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि पेपर प्रेझेंटच्या सत्राचे, ते अतिशय अभ्यासू आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी त्यांनी त्यांच्या विषयाची केली. आणि त्यातून आम्हाला अजून एक महत्वाचं म्हणजे जी डायव्हर्सिटी आहे ती तुम्ही तुमच्या ह्या वेबिनार मध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने आणली. त्याबद्दल पण मी तुम्हाला धन्यवाद देते. कारण तेलंगणासारखं नवं जे राज्य स्थापन झालेलं आहे आणि त्या राज्यातून सुद्धा चांगले प्रोफेसर तुम्ही इथं बोलावले आणि त्यांचं आम्हाला ऐकायला मिळालं. वेगवेगळे पर्स्पेक्टिव्ह तुम्ही आम्हाला त्यांच्या अभ्यासात्मक मांडणीतून ऐकण्याची संधी दिली. त्याबद्दल पण मी तुमचे आभार आहे. त्याचबरोबर अजून एक महत्वाचं म्हणजे स्त्रीवादाच्या वेगवेगळ्या छटा ह्या असंख्य आहेत आणि सगळ्या पेपर प्रेझेंटर्सनी त्या मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि प्रचार प्रसार माध्यमामध्ये वेगवेगळ्या विषयाला हात घालण्याचं काम आपण ह्या सगळ्याच सत्रामधून केलेलं आहे. आणि प्रत्येक शोधनिबंधाचं म्हणजे सत्राच्या ज्या अध्यक्षा राहिलेल्या आहेत डॉक्टर प्रिया मित्ताल मॅडम, मला खरंच त्यांचं कौतुक वाटलं की ऍज अ चेअरपर्सन हाऊ शी डिड अ मॅक्रो लेवल ऑब्झर्वेशन ऑफ द पेपर प्रेझेंटर्स. So that is a very obvious thing. So I appreciate to her efforts and she appreciate everyone presenters also. We got an inspiration from her remark. Okay. So ते पण मला खूप छान वाटलं की या पद्धतीचे आपण बारीक आणि सूक्ष्म निरीक्षण करणारे म्हणजे प्रमुख पाहुणे बोलवले. आणि जसं आपण म्हणालो की विविध छटा आहेत फेमिनिझमला, ज्याच्यामध्ये इको फेमिनिझम आलेला आहे, मीडियातला फेमिनिझम आलेला आहे, लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स मधला फेमिनिझम आलेला आहे, ट्रेडिशनली थॉट आणि रिफॉर्मिस्टांच्या भूमिकांमधनं आलेला फेमिनिझम आम्हाला पाहायला मिळतो. आणि या आणि अशा वेगवेगळ्या पर्स्पेक्टिव्ह, कारण हा विषय ह्याला अंत नाहीये असं आपण म्हणलं तरी चालेल. कारण स्त्रियांच्या समस्या ह्या अनंत आहेत, वेगवेगळ्या फ्रंटवर आहेत. आणि त्याचबरोबर व्यवस्थापन प्रक्रियेतील सर्व सदस्यांचं मी मनापासून आभार मानते. आणि संधी दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि खरंच सगळ्यांच्या शेवटी मी फक्त 1-2 वाक्य बोलते की आपणच हे मान्य करूयात आणि नुसतं मान्य करण्यातून नव्हे तर आपल्याला त्या पद्धतीने वाटचाल करण्याच्या भूमिकेमध्ये सुद्धा एका सशक्त समाजाचं निर्माण करायचं असेल तर डोंट अंडर एस्टिमेट द विमेन पॉवर टू बिल्डिंग अ सोसायटी. यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम युअर होम. That will be help to build a nation. So globally we are going to recognize rising superpower, but we are ultimately underestimating power of women. So just I said that why we are not one as a human. So being human, we all are decide into the seminar. In the ending of this seminar, we have to decide we all are going to treat women as a equal, as a human being.
not natural construction as a male and female, but we have to treat as a human. So guys, we can see, and another one mentioned, very focused thing, one organizer will be focused upon how women should be a part of whole organization of this seminar. So that is salute to all of you, management committee and all things. So it is appreciable during the pandemic, this kind of webinar and seminar and this kind of issues you handle very successfully. So I'm really thankful to all of you. Thank you, Basveshwar Pandagale sir, our BMI classmate. So I'm really thankful to him because he inspired to me, please speak up, ma'am, please send a paper and all this thing. So support from all of you. So I'm really thankful to all of you. Thanks a lot, sir. Yes. Thank you very much, ma'am. Now, may I request the director of the institution, vice principal of the college, and especially the convener of this national e-conference, Honorable Dr. Chetna Patil, madam, for reading the report of this conference. Over to Dr. Chetna Patil, ma'am. Yes, sir. Thank you so much. Yes, ma'am. Welcome, ma'am. Good evening, everyone. We are here for the last session, and I'm here very happy to read the report of today's one-day national e-conference on the relevance of feministic movement in 21st century, organized by Department of History, Political Science, Women Development Cell, and IQAC of our college. Dear all, the day we decided to organize this conference, the management has given consent and support in all sense. We have received overwhelming response not only from Maharashtra, but also from all parts of the nation. 95 research papers were sent by the academician and scholars for this conference. We'll be publishing them in referred peer-reviewed journal. Many participants were present for the conference. We had well-known resource persons and chairpersons for different sessions like Dr. Sunita ma'am from West Bengal, Professor Ajay sir from Telangana, Dr. Chandrakant Chavan sir from Solapur, Dr. Savin Paul sir from Sikkim University, Dr. Sandesh Wagh sir from University of Mumbai, and Dr. Savita ma'am from University of Mumbai. I'll state special thanks to our President, Shri Vijay Patil sir, Joint Director, Konkan Division, Dr. Sanjay Jagtap sir, ex-pro Vice Chancellor of University of Mumbai, Dr. A.D. Sawant sir, for always guiding us in each and every step to move forward. I'm also thankful for all the speakers, participants, chairpersons, and the feedback given by Bure sir, Kalpana ma'am. I'm very thankful for your kind words. And finally, to our principal, organizing committee, teaching and non-teaching staff for making painstaking effort for making this conference a grand success. This conference is a teamwork of all my colleagues, our technician staff, and everyone who is there in front and behind of all this conference. Thank you once again. Thank you so much, sir. Over to you, Vanchi. Thank you for reading the report of the conference, ma'am. Now, this is the last but not the least part of this valedictory function. May I request the head of the Department of Political Science and the coordinator of this national e-conference, Honorable Dr. Pandagale sir, to propose a vote of thanks on this occasion. Over to Dr. Pandagale sir. Yes, sir. Yes. कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या वतीनं इतिहास, राज्यशास्त्र, महिला विकास कक्ष आणि ऐकविषयीच्या संयुक्त विद्यमानं स्त्रीवादी चळवळीची 21व्या शतकातील प्रासंगिकता या विषयावर आज दिनांक 10 मार्च 2022 रोजी
राष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं. या परिषदेला आमच्या संस्थेचे सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक, आमचे आधारवड, प्रेरणास्थान विजी पाटील साहेब हे नेहमीच आम्हाला अशा वेगवेगळ्या विषयावर कार्य करण्यासाठी प्रवृत्त करत असतात. त्यामुळे मी त्यांचं या ठिकाणी प्रथमतः धन्यवाद देतो. या महाविद्यालयासाठी सतत सकारात्मक भूमिका घेऊन महाविद्यालयाचा विकास व्हावा यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि राजस्थान विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर ए.डी. सावंत सर यांनाही मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो. यानंतर आमच्या रिजनचे शिक्षण सहसंचालक डॉक्टर संजय जगताप सर यांनाही मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर विनोद सोनावणे सर यांनी सकाळपासून ते शेवटच्या क्षणापर्यंत, कारण मला या ठिकाणी सर्व सहभागी पार्टिसिपंटला सांगावंच वाटतं की कारण आमच्या महाविद्यालयामध्ये यावर्षी सन्माननीय प्राचार्य आणि सन्माननीय उपप्राचार्य मॅडम ज्या रसायनशास्त्राच्या विभाग प्रमुख आहेत, या प्रोग्रामच्या कन्व्हेनर आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचं उपप्राचार्य पद म्हणून सांभाळत असताना एकाच वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची परिषद आणि दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय स्तरावरची परिषद या दोघांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही घेऊ शकलो याचा आम्हाला निश्चितच अभिमान आणि आनंद वाटतो आहे. खरं तर आमचं महाविद्यालय आता आदिवासी भागात सांगायलाच आहे, परंतु खऱ्या अर्थानं आत्ताच या ठिकाणी कल्पना सिद्धवाड मॅडमने सांगितलं की शहरामध्ये तांत्रिक अडचणी उभ्या राहतात, परंतु आदिवासी दुर्गम डोंगराळ भागातलं कॉलेज असताना सुद्धा कुठल्याही पद्धतीची अडचण या ठिकाणी उद्भवली नाही. म्हणून आमचं महाविद्यालय येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रात नाही तर देशपातळीवर एक नवा आदर्श घालून दिल्याशिवाय राहणार नाही, यात कुठलीही मला शंका या ठिकाणी वाटत नाही. यानंतर या कार्यक्रमासाठी नोट स्पीकर म्हणून वेस्ट बेंगॉलच्या प्राध्यापक सुनीता सरकार मॅडम यांनी अमूल्य असं मार्गदर्शन या ठिकाणी केलं. पहिल्या सत्राचं इंट्रोडक्शन स्पीच जे आहे ते आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य विनोद सोनावणे सर यांनी केलं. बेस्ट विशेष जे आहे डॉक्टर चेतना पाटील मॅडम यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलं. या पहिल्या सत्राचं इंट्रोडक्शन स्पीच नोट स्पीकरचं नामदेव महाले सर यांनी या ठिकाणी केल्या, त्याबद्दल मी त्यांचे या ठिकाणी आभार मानतो. आणि पहिल्या सत्राचं वोट ऑफ थँक्स डॉक्टर CS गायकवाड सर यांनी या सत्रामध्ये अतिशय मराठीचे प्राध्यापक असताना हिंदीमध्ये ओजस्वी भाषेमध्ये त्यांनी या सत्राचं संचलन केलं. यानंतर दुसऱ्या सत्रामध्ये मिस्टर अजय वाघमारे तेलंगणा विद्यापीठातील अतिशय ओजस्वी नारी शक्तीवर त्यांनी व्याख्यान दिलं. त्यामध्ये या सत्रामध्ये इंट्रोडक्शन जे आहे मिस्टर गोडसे यशवंत सर मराठीचे प्राध्यापक असून सुद्धा अतिशय इंग्लिशमध्ये छान अशा पद्धतीनं त्यांनी सरांचा परिचय करून दिला. यासाठी स्वागताध्यक्ष म्हणून डॉक्टर सविता तायडे मॅडम यांनी तर अत्यंत उत्कृष्ट अशा पद्धतीनं स्त्रीवाद आणि पुरुषवादाच्या संदर्भातील जे काही दरी आहेत त्या कशा कमी करता येईल याबद्दल अतिशय सुतोवाच मार्गदर्शन या ठिकाणी केलं, त्याबद्दल त्यांचाही मी या ठिकाणी आभारी आहे. या ठिकाणी वोट ऑफ थँक्स मिस्टर धामोने SS सरांनी अत्यंत ओजस्वी भाषेमध्ये या ठिकाणी केलं, त्याबद्दल मी त्यांचाही शब्दसुमनाने आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर दुसऱ्या सेशनमध्ये डॉक्टर चंद्रकांत S चव्हाण सरांनी, कारण शिवरायांच्या काळामध्ये महिलांना कशा पद्धतीचं अग्रगण्य स्थान होतं त्याचा इतिहासच जणू जाज्वल्य इतिहास या ठिकाणी आमच्या पुढे उभा केला आणि त्यासाठी मी डॉक्टर चंद्रकांत चव्हाण सर यांनाही धन्यवाद देतो. या सत्राचं सेशन चेअरपर्सन मुंबई विद्यापीठातील इतिहास विभाग प्रमुख डॉक्टर संदेश वाघ सर यांनी अत्यंत कमी वेळामध्ये अमूल्य असं मार्गदर्शन करून आम्हाला आणि आमच्या संशोधक सहभागी सहप्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी त्यांचं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. या सत्रासाठी जे इंट्रोडक्शन आहे तर सुतार सर यांनी या सत्राचं अत्यंत उत्कृष्टरित्या इंट्रोडक्शन स्पीच देऊन कार्यक्रमाला सुरुवात केली. त्यानंतर या कार्यक्रमासाठी वोट ऑफ थँक्स डॉक्टर YK पाटील आणि पराड सर यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलं, त्याबद्दल त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. त्यानंतर तिसरं जे सेशन होतं पेपर प्रेझेंटेशनचं, यामध्ये 6 पेपर प्रेझेंटेशन झालेले आहेत. त्यामध्ये कल्पना सिद्धवाड, त्यानंतर दीपाली यादव, आशा बामणे, संदीप बोडके, लता धेंडे आणि विनय कुमार गुप्ता यांनी अत्यंत उत्कृष्ट अशा पद्धतीचं
या सेशनमध्ये पेपर प्रेझेंटेशन केले आणि सर्वच पेपर वेगवेगळ्या क्षेत्रातले असे निवडून प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये देण्यात आलेले होते. त्यांनी अत्यंत उत्कृष्टरित्या या पेपरचं प्रेझेंटेशन या ठिकाणी केलेलं आहे. यासाठी आमच्या महाविद्यालयातील तांडेल सर यांनी इंट्रोडक्शन करून दिलं, डॉक्टर प्रिया मित्तल मॅडम यांचं. त्याबद्दल मी तांडेल सरांचा या ठिकाणी आभारी आहे. अत्यंत कमी वेळामध्ये डॉक्टर प्रिया मित्तल मॅडम यांनी या सत्राचं स्वागताध्यक्ष पद स्वीकारण्याची जबाबदारी घेतली, त्याबद्दल त्यांचाही मी या ठिकाणी ऋणी आहे. आणि या सत्राचं वोट ऑफ थँक्स मिस्टर NV महाले सर यांनी या ठिकाणी केलेला आहे. त्याबद्दल मी नामदेव महाले सरांचाही या ठिकाणी खूप खूप आभारी आहे. व्हॅलिडिटी फंक्शनसाठी इंट्रोडक्शन ऑफ द गेस्ट म्हणून मिस्टर नहिरे DJ यांनी अत्यंत कमी, म्हणजे सरांचा बायोडाटा खूप मोठा असताना सुद्धा अत्यंत कमी याच्यामध्ये त्यांनी आपल्या वर्णन सरांबद्दल या ठिकाणी केलं. या सत्राचे चीफ गेस्ट डॉक्टर साल्विन पॉल हे माझे सहकारी मित्र. आम्ही ओरिएंटेशन कोर्स करण्यासाठी गोवा या ठिकाणी एकत्र होतो आणि त्या काळातली मैत्री आमची आजही टिकून आहे. आणि त्यांनी अत्यंत महिला सशक्तीकरण, युनिफॉर्म आणि सिव्हिल कोड यावर उत्कृष्ट असं व्याख्यान आमच्या सहभागी प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना दिलं, त्याबद्दल त्यांचाही मी या ठिकाणी ऋणी आहे. या सत्राचं रिपोर्ट रिडिंग जे आहे आमच्या महाविद्यालयाच्या संचालिका, उपप्राचार्य, रसायनशास्त्र विभाग प्रमुख आणि या राष्ट्रीय परिषदेच्या कन्व्हेनर डॉक्टर चेतना पाटील मॅडम यांचाही मी या ठिकाणी ऋणी आहे. या सत्राचं या कार्यक्रमाचं अत्यंत सुंदर, ओजस्वी, प्रवाही अशा पद्धतीनं सूत्रसंचालन आमच्या इंग्रजी विभागाचे विभाग प्रमुख प्राध्यापक बनसोडे सर यांनी या ठिकाणी केलं, त्याबद्दल मी त्यांचा कायम ऋणी आहे. या ठिकाणी टेक्निकल सपोर्ट म्हणून आमच्या महाविद्यालयातील मराठी विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर CS गायकवाड सर, मॅथ विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर धामोने सर, त्यानंतर कॉमर्स विभागाचे प्रोफेसर तांडेल सर आणि कमी वेळामध्ये ज्यांनी अत्यंत उत्कृष्ट अशा पद्धतीचं तांत्रिक सहाय्य ज्यांनी सांभाळलं प्रोफेसर विशाल निकम सर यांचे मी या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि सन्माननीय अध्यक्षांच्या वतीनं कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं मी जाहीर करतो. ओके, थँक्यू सर. सर्व पार्टिसिपंटना सूचना आहे की आपण जे पेपर पाठवलेले आहात ते पेपर, तुमचं पेपरचं नाव, आपलं नाव आणि ऍड्रेस, पत्ता व्यवस्थित आम्ही तुमच्याकडे पाठवणार आहोत. ते व्हेरीफाय केल्याच्या नंतर तुम्ही पेपर पाठवलेले ज्या इश्यू मध्ये पेपर प्रेझेंट झालेले आहे, पब्लिश झालेले आहे, तो इश्यू आणि सर्टिफिकेट तुम्ही दिलेल्या पत्त्यावरती आम्ही पाठवणार आहोत. याची सर्व सहभागींनी नोंद घ्यावी. कृपया ही सूचना संपलेली आहे. ओव्हर टू प्राध्यापक विशाल निकम सर. यू कॅन एंड द मीटिंग with the permission of the principal. Okay. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, thank you, sir.